So welcome back for the day number 2 of this prestigious cricket tournament, Sultan Premier League 2024. Meanwhile, the first match of the day number 2 will be played between United Patur versus Friends Mysore. I request both the team, please cooperate with the organizers, and so that we can start the match. The time is exactly the 9 o'clock in the morning, and weather condition seems to be a very good condition today. And of course, some part of Mangalore, we are experiencing some rains, but today here there is no rain at all, so good condition here in Mudipu. And we are just waiting for the match number 1 of this match number 1 of the day number 2 of this prestigious cricket tournament.
Hello?
I request the two teams captain please be reported here immediately. Captain of Friends Mysore as well as captain of United Patur. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So match will going to start very quickly now. So I request both the captains please be reported here immediately for the tossing ceremony. The Friends Mysore captain won the toss and just waiting for their decision. So today's schedules, United Patur takes on Friends Mysore in their first match. Sultan Montugoli will going to take fighters Arkhana in their second match. And a third match will be played between Legend Pajir versus United Patur. Fourth match will be played between Friends Mysore versus Sultan Montugoli. Fifth match will be played between fighters Arkhana versus Legend Pajir. Sixth match will be played between United Patur versus Sultan Montugoli. Seventh match will be played between Friends Mysore versus fighters Arkhana. And eighth match will be played between Legend Pajir versus Sultan Montugoli. Ninth match will be played between United Patur versus fighters Arkhana, and 10th match will be played between Friends Mysore versus Legend Pajir. This is a schedule for the day number 2 of this prestigious Sultan Premier League 2024, as they are celebrating their 11th anniversary, and in the memory of that they are organizing this cricket tournament in association with the MCA, Mudipu Cricket Association.
So after winning the toss, captain of Friends Mysore, they elected to field first, so that opening batters came into middle for team United Patur. Altaf and Mustafa, opening batters of United Patur. And looks like a slight bit of overcast condition, cool weather condition. Compared to yesterday's condition, we are witnessing some hot condition, but today, because of some part of Mangalore experiencing some rains today morning, but here in Mudipu, Kairangala, we are, by the grace of God, we are not having any sign of rain, but we are seeing some good weather condition, and the sun is started to open up a little bit here with some brightness we can see here in the cricket ground, but the condition seems to be very cool here, and perfect condition to play cricket. One of the most beautiful cricket ground situated here in Mudipu Panchayat Cricket Stadium. Huge ground, it's a very big ground we are witnessing here, and everything is ready for the first match. So two umpires for this match, Naushad and Abu at square leg. And everything is ready for the first over of the power play. Just I want to see the field set. The fielder outside the ring for the first over. One fielder down at deep extra cover is shot, and one fielder down at long on. The two fielders outside the circle. Shot mid off, cow point, shot third man. First ball. It's going to be a warm-up delivery of the morning, bowled by the bowler Ansar. So that the first run comes up here for Team United Patur, one without loss of any wicket. Shot third man, shot fine leg. Short mid wicket, the fielder down at deep long on. Second ball nicely executed by playing that switch it down to deep third man region. Good footwork by the fielder in the deep. The man has to stop the boundary, but ample time for the batter to complete that couple of runs. This time Altaf played that twisted bat very well, getting the direction between Gully and the third man, and a very good chase here by the fielder just inside the boundary line. The man is to stop the ball from his foot, and they got ample time to complete that couple of runs. So that means Altaf, ready correction, Mustafa is off the mark with that couple of runs, and scoreboard now 3 on the board without loss of any wicket. The rain which has taken place yesterday late night, so that slight a bit of wetness in the pitch we can see, and that will maybe the encouragement for the first 3 overs for the bowlers. But here is the bowler really struggling to get his line. Ansar bowled the second wide of this over with that extra scoreboard Namuzan to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Absolutely, it's a cool breeze passing out here in this most beautiful cricket ground, and right arm over the wicket bounce. Again going for the drive, this time he misses it completely from the bat, then wicketkeeper behind the stump did the rest, and much required dotted delivery from Ansar. Score remains on 4 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Power play is on. Ansar balls went for the reverse sweep. It's going to be a one more wide. This is a wide number 3 of this over with that extra scoreboard Namuzan to 5 on the board without loss of any wicket. The third wide of this over, ball by Ansar, and then just slight a bit of struggling to get this line and length. He's just targeting outside the line of off stump, and batsman maybe is just having a slight bit of problem in the pitch. That's what I'm talking about, the wetness in the pitch, and I request the volunteers of Sultan friends, please be, yes, please go to the pitch. They need to do some kind of repair which is required for in that batting track. Looks like everything is ready here for the next delivery. After that, some
hand which is put in that area. Wide signal, one more wide, fourth wide of this over. The runs are coming in the form of extras here for Fence Patur. Scoreboard 6 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. This time driven, but I think ball will not going to travel. And the fielder there in the long on region will going to cut it off just inside the boundary line. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 7 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Right arm over the wicket bounce. This time drives, beautiful looking drive, but protection is there in the deep, so that they have to settle for the single. And both the batters are hitting the ball very well. So over number first is in progress. Is a prolonged over, and already 4 deliveries bowled as a white, so that it's going to be 10 deliveries over. 8 on the board. Again, nicely placed that one. Beautiful, absolutely perfect placement here from the batter Mustafa in the delegation. That was a really quality cricketing stroke, isn't it? Just playing that one very late and waiting for the ball to coming into his bat, and just opening the face of the bat, just getting the direction between third man and the gully, and got a very valuable couple of runs. It's 10 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. This time going to be a delivery which is well kept by the wicketkeeper behind the stump. After completion of over number first, it's a prolonged over and productive over for team Friends Patur. The United Patur collection scoreboard is 10 on the board without loss of any wicket. So next match will be played between Sultan Montugoli versus Fighters Arkhana, so that I request all the players of both the teams to complete your signatures as soon as possible. If possible, please mention your jersey number in front of your name. Rauf is the bowler, will going to bowl the second over of the innings of team United Patur. Deep extra cover, deep long on, deep mid wicket, deep cow point. Oh, that was a very good delivery. Just flighted delivery which is coming into the batter, and at that time batter couldn't manage to read the flight of the delivery, beaten by the flight and a turn, hitting his leg by call by umpire. With that extra score, but moves on to 11 on the board. Absolutely, it seems to be a good condition out here, and we can see that bright sunny morning, and the perfect condition here in Panchayat Cricket Stadium of this prestigious Sultan Premier League 2024. Again, slower one, negotiated very well by the batter Mustafa in the negation, plays it down to deep long on for a single. With that single, scoreboard moves on to 12 on the board, 12 for the without loss of any wicket. Both the batters quite watchful, and they try to get some runs on the board. Oh, lovely delivery, beautifully ball just missing in a line, which is midland leg stump, and slight a bit of leg cutter, defeating the bat of the batter Altaf, and wicketkeeper behind the stump did the rest, but no result in his favor
The batsman is safe. Good work behind the stump there from the wicket keeper. And the scoreboard remains on 12 on the board. Lovely delivery, slower one, absolutely perfect one. Altaf fails to read the slowness of the delivery, and sometime bowler using that weapon regularly in these limited over matches to get some slower one, so that batsman finding difficult to face that slower deliveries. The good bowling there from bowler so far. This time lofted, beautiful shot, absolutely magnificent struck here from Altaf. Really, I need to appreciate that cricketing stroke, because he played that one effortlessly, isn't it? The ball suddenly in the slot and he just lofted that one with the timing, perfect timing, and just ball clearing the fence. The first sixer of this day number 2 in the innings of United Patur. Altaf got that 6. Again drives that one, bowler's back drive. The now fielder there in the straighter version, the straight long on region, so that Altaf have to settle for the single. Over number 2 completed. After completion of over number 2, United Patur are really back in the game with some excellent batting performance. It's 20 on the board, 19 on the board for the loss, without loss of any wicket. Is a very good score on the board. 9.5 runs per over. The run rate progress in the morning session is definitely going to be a good total. Good morning, everyone, and this is your Satish Salyan, wishing each and every cricket lovers a very good morning, and wishing all the teams which is participating in this day number 2 all the best. Play with the true spirit of cricket. The cricket is, everybody knows that it's a gentleman game. The winning and losing is part of cricket, but everyone need to play with the true spirit of cricket. And good morning, everyone, for those who are watching live telecast of this cricket tournament from Mangalore Media, and one of the most popular YouTube channel as far as cricket is concerned. And good morning, everyone. Good morning to all officials of this cricket tournament, and good morning to all the staff members of Mangalore Media, the cameramans, technicians, and online scorer. Tanzif. Then the bowler is asked to bowl the 3rd over of the innings of Friends United Patur for Friends Mysore. Short on and a short fine leg. There is short mid wicket. The fielder down at deep long on long off and deep cow point and a deep backward point. This time loose delivery and batsman have to take. Oh my goodness, can you believe this? Even though ball which is a travel, but the fielder taken that catch out of the boundary line, and really everyone thought that is a catch for the long on fielder, but it's absolutely absence of mind here from the fielder. He thought he is standing inside the boundary line, but he is standing outside the boundary line, and it's 6. Unbelievable. Wide call by umpire. Lucky escape here for Altaf. This time again the ball is going down the far outside the line of off-stump, so going to be a punishable from umpire Naushad. White signal. With that signal, scoreboard moves on to 27 on the board. So Altaf looking so good. After that he took his own time to settle down. Then he started to open up with the 2 excellent sixes. And Tausif bowling with a short enough. Right over the wicket, bounce. This time lovely cricketing stroke. This square of the wicket, he plays it down to deep third man region. They're coming back to the second, and throw which is not really having enough power to stop the couple of runs here from Altaf. Good batting there from Altaf, getting some important runs for his team. It's 29 on the board without loss of any wicket. They laid the foundation. Both the opening batters, Altaf and Mustafa, are getting some important runs for the team. Tausif again. Right arm over the wicket balls. This time, slight a bit of ball which is going away from this outside the line of off-stump. Warning number 1 has been given for the bowler that is coming right in front of umpires. With that extra score, moves on to 30 on the board. This time off the toes, plays it straight to the Not only drops the catch, but ball went into the fence for 4 runs.
And really, the fans Mysore, they are missing some opportunities. The two opportunities in this over. What could be a easy catch there for the fielder? He takes and slide a bit of lightly and drops a catch, then is considered boundary. So Altaf really dealing with some luck here. Scoreboard moves on to 34 now. Right above the wicket bounce. Again, that ball just passing around the legs of the batter. So wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. So good progressing here for team United Pathur. The opening batters are laid the foundation and they're getting some quick runs. Again, that ball is just passing around the legs. Again, good comeback here by the bowler after one ball remaining in this over. Tausif have to bowl one delivery in this over. Over number 3 in progress. Right arm over the wicket to Altaf. Altaf again going for the expansive drive, but at last moment he's checking the stroke. Last moment again the fumble, and fielding is not really up to the mark here from my friends Mysore. A couple of runs taken, good running with the wicket after completion of over number 3, and the team of United Pathur are really cruising towards a huge total. It's 36 on the board without loss of any wicket. 2 overs remaining. Mustafa and Altaf, they laid the foundation for first wicket. 36 valuable runs they scored in just 3 overs at the rate of exactly 12 runs per over. And friends Mysore have to do something special from the bowling in the remaining 2 overs. They need to tighten up the screws. And so that they are asking their experienced campaigner Naufal to come and bowl in this 4th over. Long on and widest long off. Deep cow point. Deep mid wicket. The fielders are in the deep. Short third man and short fine leg. Very fine. First ball starts with the warm-up delivery of the morning by Naufal. White signal by umpire. Scoreboard now moves on to 37 without loss of any wicket in the over number 4 in progress. Lot of excess which is conceded. Some misfielding, some missing opportunity of catching by the fielders of friends Mysore. Oh, there's a Spectra wide. Absolutely Spectra wide. It's not a wide I call. It is a no ball as per the rules and regulation of the Melbourne Cricket Council, which is passed in this particular year, that if the ball will going to pitch outside the line of the pitch, then it's going to be a no ball. So no ball called by umpire, and one more addition. Scoreboard now moves on to 38 on the board. Again, that's going to be one more wide, the 3rd wide of this over. The bowler now for really struggling to get his line and length. Really disappointment, isn't it? So when it's a 5 overs match, if it concedes more than 10 to 15 runs as the extra means, definitely it's going to be a huge mistake. This time, at last, Naufal managed to ball one dotted delivery, fair delivery, which is just a little bit going outside the line. Black stamp batsman going for the reverse sweep, misses the line completely. Right above the wicket, what a shot, beautiful shot, just stand and delivered. My goodness, the Mustafa, just a flick of the wrist which is comes into play. That ball went into the fence, absolutely. The instrumental sound came from the bat. The moment that ball has a contact with the bat of Mustafa. Great cricketing stroke, effortless. Always it's going to be one of the most delightful stroke to watch when batsman flicking that one off his wrist and getting the distance means it's an unbelievable cricketing stroke. Scoreboard now moves on to 45. Frustration and the pressure straight away into the bowler,
And a wide signal by umpire with that extra score, but moves on to 46 on the board. So a lot of extras which is conceded by the bowlers of team of Friends Mysore. This is the line you need to bowl, isn't it? Just around the off stump, outside the line of off stump, and one of the most difficult line for the right-hander batsman to hit the ball. And Mustafa completely missed that one from his bat. Again, one more dotted delivery, and Mustafa just asking umpire to give the wide. Umpire saying that it's well within the reach of your bat. It's a fair delivery. So good comeback, and after that shackling start here from bowler. Now Fall missing his run up and is going back to his bowling mark. Right arm over the wicket to Mustafa. Again, a lovely delivery, good line indeed. Again, 3 consecutive dotted deliveries. After that, some extras. After that, 1-6. Naufal quickly is learning from the mistake and bowling some good, very strong line and length. This time high up in the air, opportunity for the long off fielder to take the catch, and the first wicket at last, which is down here. Mustafa back into pavilion after scoring a valuable runs for his team. They have lost their first wicket at the score of 46. The partnership of 46 runs which is comes to an end, and Lawful has got a very important breakthrough in that fourth over, which is comes to an end. 4 overs completed. After completion of over number 4, it's a 46 on the board. The last over remaining in their innings. The 46 valuable runs which is scored, and Mustafa scored some valuable runs for his team. Scored a 12 valuable runs, and but responsible for the partnership which is 46. The great partnership which is comes to an end. The last over remaining. Still, it's just a very cool breeze passing out here in the middle of the ground. Perfect weather condition and good number of crowds, even though it's a working day, first day of the working day, Monday. But the morning itself, we are witnessing some very good crowds are enjoying the game of cricket here in this most beautiful Panchayat Cricket Stadium, Mudipu, of this prestigious Sultan Premier League 2024. Harris will go into bowl the last over of the innings of team United Patur. 25 minutes, within 25 minutes they need to complete their 5 overs quota, so that I request the fielding team to make it fast. So already they have conceded some extras wide deliveries. Ali is the new batter in. Coming down the track, no ball called by the square leg umpire. The reason, only 3 fielders inside the ring. Only 3 fielders inside the ring. Absolutely absence of mind. Yes, it's out because the rule says that it's not more than 5. Not more than 5. If it is a 10 players, but cricket rules what you say, after the power play, not more than 5. They've got a 5 fielders outside the circle. It's not necessary that how many fielders inside the ring, but rule says that it's not more than 5. So they got a 5 fielders outside the circle. That's why umpire taking back that decision, no ball. Slight a bit of confusion there, and batsman is out. Both opening batters back into pavilion. Harris got a wicket in the first ball. The leg spinner. Oh, lovely delivery, beautiful, but wide call by umpire. Ball just missing the direction. We are not having a straight angle, isn't it? That's a problem for us to see the line of the ball, and we are in a square angle.
And it's so very difficult for us to judge the line of the ball. This time a full toss delivery, and it's not a good cricketing stroke, isn't it? Absolutely juicy full toss by Harris, and a lucky wicket for Harris there, because the full toss which the batsman couldn't manage to finish that one, and he got out. 2 wickets here for Harris in this last over. It's turning out to be a great over for team Friends Mysore in this last over. Harris got a wicket, 2 wickets in 3 deliveries. Nawaz is a new batter in. Right arm over the wicket. This time driven, beautiful shot. That will go into be rocketing towards the fence. The placement is so good in the occasion. There is a mid wicket, there is a long on, but ball went towards a wideish long on region. Almost we can say that as far as cricketing, the field is concerned, field placement is concerned, you can call that is a cow corner. That between mid wicket and a long on. Excellent placement from the batter. Score jumps into 50 on the board. This time straight to the hands of fielder. 3rd wicket in this over. Harris getting a wicket here for his team. Altogether, out of 5 deliveries, they got 4 wickets on his run out. Scoreboard is exactly 50. 4 balls, they got 4 wickets. In the middle, they got 1 wide. Altogether, 5 runs scored in this over of Harris. So timed out. As for the rules and regulation of the cricket is concerned, they need to bring one fielder inside the ring. The mid-wicket fielder is coming inside the ring now. There is a long on, long off, and wideish long on mid-wicket. And one fielder at deep backward point region. There is no fielder in the deep in the square leg. Driven, but straight to the hands of fielder. Good piece of fielding by the fielder. They will go to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 51 on the board. Good comeback in the last 2 overs. Friends, Mysore, especially Harris bowled a fantastic last over, but job which is not yet over. The new to ball one good delivery here, but a team United Pathur knows that is the last ball. They wanted to get as much run as possible. Now is sending that square leg fielder to into deep, bringing that deep backward point fielder inside the ring. Harris. This time reverse played that one quite beautifully, and no need to run for that. Very good finish for the last over and for the innings. And switch it which comes into play, and fantastic cricketing stroke came from the bat of Altaf. Ali finished the match, finished the innings in a style with the boundary. So 55, which is the total score of team United Pathur. They got a very good runs in the morning session. It's considered as one of the good score in the morning session. And 11 runs per over they scored. And this set a target of 56 to win this match for Friends Mysore. And wait and see how Mysore will going to get this total. And wait and see how well United Pathur will going to restrict the runs. We'll take a short break here in the commentary box. And after the short break, my friend Mr. Gopi, the first time today in the day number 2, will going to take over the microphone in our national language Hindi. And good morning to Gopi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं सुल्तान प्रीमियर लीग 2024 इस श्रृंखला का, इस मेगा श्रृंखला का दिन नंबर 2 का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है। और जहां तक सवाल है, इस वक्त मुकाबला इस वक्त जारी है फ्रेंड्स मैसूर और यूनाइटेड पातुर के बीच में। और पहले बल्लेबाजी करते यूनाइटेड पातुर ने 56 रन में 57 रनों का लक्ष्य इस वक्त फ्रेंड्स मैसूर के लिए उन्होंने रखा है। और तो इस बार गेंद को उछाला, पहली गेंद से कवर पर गेंद जाते हुए वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया आफ्टर फर्स्ट बाउंस। और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका। दोनों आरंभिक बल्लेबाज अंसार और रऊफ, जबकि अल्ताफ गेंदबाज यहां पर शुरू कर चुके हैं। और इस बीच सामना करने के लिए तैयार रऊफ और अल्ताफ दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, मिसफील्ड इस वक्त बैकवर्ड थर्ड सीमा रेखा गेंद और सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। सीधे गली फील्डर के हाथों में गेंद जरूर पहुंचे थे, लेकिन अंतिम क्षण में हड़बड़ाहट में उन्होंने अपनी नजर गेंद से हटा ली और गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीधे डीप बैकवर्ड थर्ड बैल सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए। तो 4 रन इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं रऊफ फील्डर की मिसफील्ड की वजह से, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद लगभग जमीन के सहारे आई थी। अंतिम क्षण में गेंद को रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार अल्ताफ गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया, कैच इस वक्त छोड़ चुके हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मौका था, लेकिन अंतिम क्षण में दोनों हाथों में गेंद को वो दबोचने में असफल। और यहाँ पर ये जीवदान प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर। और अल्ताफ एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी। इंसान तक धीमी गेंद इस वक्त फेंकी थी पिछले गेंद के मुकाबले गेंदबाज ने, और इस गेंद को इस वक्त ऑफसाइड पर उछालना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद सीधे जा टकराई लेग स्टंप पर। और आखिरकार ये विकेट गिर चुका है रऊफ का बोल्ट आउट के रूप में। पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर फ्रेंड्स मैसूर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो इंतजार है इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज का, और नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार अल्ताफ की गेंदों का। और 5 गेंदे फेंके जा चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर पीछे की ओर जाते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज और अल्ताफ अपनी ओर की अगली गेंद। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को साइड पर मोड़ना चाहता, रन के लिए 2 कदम जरूर आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ खास दिलचस्पी इस वक्त नहीं दिखाई नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने, और इस वजह से कोई रन उनके खाते में नहीं जुड़ा। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर 6 विदाउट लॉस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और शॉट फाइनल की दिशा में निशाना दागा था, लेकिन निशाना चूका और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 1+1 इनफैक्ट 2 रन आर टू द टोटल कपल ऑफ रन्स, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और एक लंबा ओवर इस वक्त प्रगति पर अल्ताफ का सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अंसार, और इस बीच अल्ताफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए
दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अल्ताफ। ये गेंद आक्रामक से खूब between mid-off and mid-on and driven that one perfectly after beating the mid-off fielder. It's crossed over the fence at long off for a boundary. Perfect struck और बेहतरीन स्ट्रोक अंसार के बल्ले से लगता है और स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 12 runs on the board, 1 wicket loss, just chasing the victory target of 57 in 5 overs. Except they lost their 1 wicket, they made a pretty good start. 12 runs they managed to score, 45 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs with a required run rate of exactly 11.25 runs per over. तो दूसरा ओवर हमसे दूर वाले छोर से यानी रोड एंड की ओर से इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुधा इस वक्त नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज तौसीफ जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज तौसीफ अपने कोटे की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद लगभग जमीन के सहारे आए थे, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए और इससे पहले कि दोबारा वो अपने दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज के पास समय था 1 रन के साथ अपना छोर बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और तौसीफ इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अंसार के लिए। अंसार के लिए स्क्वायर लेग फील्डर के इस वक्त पीछे भेज दिया गया है, ठीक सीमा रेखा के पास डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद और फील्डिंग में जमावट अभी भी चलते हुए। तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तौसीफ तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन फील्डर को थोड़ा सा दौड़ जरूर लगाना पड़ा डीप कवर पॉइंट पर। जब तक वो थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद गेंद तक पहुंचे, गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था इस वक्त और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। अंपायर इस वक्त बल्लेबाज से कहते हुए कि वो पिच के बीच ना दौड़े, पहली चेतावनी, फर्स्ट वार्निंग गिवन टू द बैट्समैन बाय अंपायर बिकॉज ऑफ रनिंग इन द पिच। और यहां तक का सवाल है इस वक्त। तो बल्लेबाज अंसार एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार और तौसीफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट अगली गेंद। ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला डीप टर्मिनल की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा 2 रन के लिए। सफल विकेट कीपर थ्रो पहुंच चुका था, थोड़ा सा वाइड थ्रो जरूर है लेकिन कलेक्ट करने में असफल रहे इस वक्त विकेट कीपर और बल्लेबाज रनआउट के मौके से यहां पर बचते हुए और 2 रन उनके खाते में यहां पर जुड़ता हुआ और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज तौसीफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद को खेलने के प्रयास में चूके अंसार और गेंद बल्लेबाज को वंचित करने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी बल्लेबाजों को फेंस मैसूर के। और ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, नॉट सो मिसिंग 2 फॉर सादी ऑफ स्टंप। और
यहाँ पर थोड़ा सा मिसजजमेंट बल्लेबाज ने किया था, गेंद को छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, सही निर्णय। यह गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, इंप्रूव। और जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे, डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर गेंद को रोक लिया गया सीमा रेखा के अंदर, काफी लंबा दौड़ लगाते हुए, और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर। 2 overs completed, 19 on the board, 1 wicket lost, and still in overall calculation it's going to be 38 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries, exactly 11.66 the required run rate for them at this situation. और देखते हैं यहाँ पर तीसरा ओवर फेंकने के लिए कौन सा गेंदबाज यहाँ पर आते हैं। काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए यूनाइटेड पातुर के खिलाड़ियों के बीच, और काफी लंबी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से। गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए, नवाज, और इस वक्त वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार सुधा, जो कि इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज नवाज की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक यहाँ पर जमावट चलते हुए, और 18 गेंदें बाकी है, 38 रन और चाहिए निस्संदेह। जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है यहाँ पर कमबैक करने के लिए बल्लेबाजों को फ्रेंड्स मैसूर के। तो नवाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रहा, और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, बेहतर स्ट्रोक इस वक्त। गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को इस वक्त खेल दिया था लॉन्ग ऑन पर, और 1 रन तोड़कर दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। नवाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अंसार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लेग स्टंप से बाहर, इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। रनों की सख्त दरकार इस वक्त बल्लेबाजों को इस मैच में कमबैक करने के लिए। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए थर्डमैन की दिशा में गेंद निकल चुकी है, और गेंद थर्डमैन सीमा रेखा के अंदर अपने पैर के जरिए रोकने में सफल फील्डर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 2+1, 3 runs now added to the total। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी, विकेट कीपर के मुंह से बाहर रहा, और जब तक गेंद को सीमा रेखा के अंदर अपने पैर के जरिए रोका जाता फील्डर द्वारा, बल्लेबाज के पास समय था 2 रन प्राप्त करने का, और 1 वाइड। कुल मिलाकर 3 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। और नवाज अगली गेंद लेकर तैयार है। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना था, just trying to play the reverse shot, not succeeded. The ball gets some extra bounce at the last moment, passed after beating his bat, it passed and stuck to his off stump, and his off stump was uprooted। और इसी के साथ अंसार की पारी पर पर्दा गिर चुका। 9 रन उन्होंने बनाए, 72 पारी उन्होंने खेली, और 24 रनों पर दूसरा विकेट यहाँ पर खो चुका है फ्रेंड्स मैसूर। It's 24 for the loss of 2 wickets। for the loss of 2 wickets। और तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर
2 गेंदे इस ओवर में फेंके जा चुके हैं, 4 गेंदे और फेंके जा रहे हैं बाकी। और इस बीच गेंदबाज तैयार, नए बल्लेबाज जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद नंबर 45 की जर्सी पहने हुए सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज नवाज अगली गेंद लेकर तैयार। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट शॉर्ट थर्ड फील्डर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगली गेंद, ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर पहुंचने से पहले गेंद को मिड विकेट पर रोक लिया गया 20 गज के दायरे के कुछ बाहर फील्डर द्वारा। और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 25 रन बन चुके हैं। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और बाएं हाथ के बल्लेबाज सुधा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नवाज इस वक्त फील्ड में कुछ हद तक जमावट करते हुए और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए। और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज नवाज फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद चिपके इस वक्त हवा में, आसान सा कैच, एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने लपका इस वक्त। और इसी के साथ बल्लेबाज सुधा की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। गेंद को उछालना चाहता, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, टॉप एज पर टकराई और एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। तो एक गेंद इस ओवर में बाकी, स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर एंड द स्कोर पोस्ट इज 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और 29 रन और चाहिए विजय के लिए, सिर्फ 13 गेंदे अब बाकी उनकी पारी में। 29 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 13 डिलीवरीज एंड स्टिल दे गॉट 7 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट। और नंबर 5 बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ और नंबर 10 की जर्सी पहने हुए नंबर 5 बल्लेबाज इस वक्त अपने बैटिंग मार्क की ओर बढ़ते हुए, बैटिंग क्रीज की ओर बढ़ते हुए और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार नवाज की गेंदों का। नवाज दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद चिप गया, गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर कहना पड़ेगा। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। 3 overs completed, 27 runs on the board and 3 wickets lost and 2 overs remaining and 29 exactly 40 runs they have to score for victory in remaining 2 overs. Sultan Montugoli ಹಾಗೂ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅರ್ಕಾನಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. I request the captains of Sultan, Montugoli and fighters Arkana please to be reported here for the toss procedures with the organizers. और चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ. The bowler starting a fresh over is 40 runs required in remaining 2 overs. In fact, it's I beg your pardon, it's 30 runs required in 2 overs. 30 runs required in 2 overs. 15 runs per over, the required run rate for them. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. फर्स्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा. 28 द स्कोर नाउ एंड 29 more runs now they have to score for victory in remaining 12 deliveries. चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त फ्रेंच मैसूर को इस मैच में कमबैक करने के लिए. ये गेंद इस बार ड्राइव किया, जगह बनाते हुए गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ पर, थोड़ा सा वाइडर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. 30 रन बन चुका है. 29 रन बन चुके हैं, माफ कीजिए. 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 28 more runs now they have to score for victory. इस बार चिप किया फील्डर वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑन पर आफ्टर फर्स्ट बाउंस ही कलेक्टेड द बॉल इनसाइड द फेंस और 1 रन का इजाफा हो चुका. 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 27 to get, 15 balls remaining in their innings. In fact, it's a 9 balls remaining in their innings. 9 balls to go.
एंड 27 रन टू गेट। इस बीच गेंद को उछालना चाहा, चूंकि एक रन मिलेगा, ओवर थ्रो, और यहाँ पर रन आउट होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर आसानी के साथ। तो एक रन जुड़ा और एक विकेट भी गिरा उनके खाते में। 31 द स्कोर, फोर्थ विकेट डाउन, 26 नीडेड एंड द बॉल इज रिमाइनिंग 9 balls left and 26 runs required. और ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಂಟುಗೋಳಿ ಹಾಗೂ ಫೈಟರ್ಸ್ ಸರ್ಕಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗಾಗಿ। तो नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद जाती है इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर और इससे पहले की गेंद को वो डीप स्क्वायर लेग पर रोके पीछे की ओर दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास समय था 2 रन के साथ अपने अपने छोर पर वापस लौट सके। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 24 रन टू गेट। बरकरार यहाँ पर फ्रेंड्स मैसूर के लिए 39 द स्कोर नाउ। तो 7 गेंदें बाकी और 18 रन चाहिए, 18 रन टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स नाउ। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद एक बार जस्ट ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग, इस बार गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आए, डॉट गेंद, और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। 39 रन ऑन द बोर्ड, 4 विकेट्स completed and 4 wickets lost, 18 runs to get in remaining last over। 18 रनों की जरूरत बचे हुए अंतिम ओवर में, और देखते हैं मैच निर्धारित ओवर फेंकने के लिए कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हैं कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से। तो गेंदबाज अजीज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए, 18 रन अंतिम ओवर में चाहिए विजय के लिए। और लेग स्पिन गेंदबाजी करने के लिए इस वक्त तैयार अजीज, और सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज एरिस। पहली गेंद अजीज लेकर तैयार, 18 runs to get from last over। Left it in the air but fell in the vacant area। 1 रन मिलेगा इस बीच। टॉप पिच पर गेंद टकराई थी लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 40 रनों पर। 40 द स्कोर नाउ, 17 runs required और 5 डिलीवरीज। रजीज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन फ्रॉम द बॉलर, और गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 4 गेंदें 17 रन चाहिए, और स्टंप से बाहर, लेकिन ज्यादा बाहर नहीं, सही गेंद घोषित। लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन, 3 sixes ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 डिलीवरीज। 6 नहीं जाएगा इस बार, गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में, और विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज। अब ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंड्स मैसूर के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है इन बचे हुए 2 गेंदों में, अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो। 17 रन चाहिए बचे हुए 2 गेंदों पर, 17 रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 2 बॉल्स। और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और अजीज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, विकेट से हटते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 41 रनों पर। बेहतरीन ओवर इस वक्त प्रगति पर अजीज का। मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार, 16 रन नीडेड फ्रॉम लास्ट डिलीवरी, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टास्क। बॉल्ड
15 runs comprehensive victory for United Patur against friends Mysore in the match number 1 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Sultan Premier League 2024, and with that 15 runs comprehensive victory, United Patur back the complete points. तो इस तरीके से आज का पहला मैच यहाँ पर समाप्त हो चुका है, जिसमें यूनाइटेड पातुर 15 रनों से विजय रहा फ्रेंड्स मैसूर के खिलाफ, और इस विजय के साथ वो परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका है. अब अगला मैच है सुल्तान मोंटुगोली विल टेक्स ओवर फ्रेंड्स अरकाना, और फ्रेंड्स अरकाना ने टॉस जीता है और देखते हैं क्या निर्धार वो लेते हैं. तो उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद मिनटों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम अंग्रेजी में सतीश के साथ उपस्थित होंगे जब यहाँ पर मैच नंबर 2 की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. ಕಮ್ಮಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾವು ನಲ್ಲ ಇದೆ ನಾವು ನಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ನಾವು ಇತರ ಬೆಲೆ ಗಾಂಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರಿ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆಲ್ಲ ಹಂಗತ್ತ ಕೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋಲು Thank you very much, Gopi. So we are coming to the match number 2 of this prestigious cricket tournament, Sultan Premier League 2023. Meanwhile, I request two teams extra players please be reported here immediately. Fighters Arkana ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಂಟಗೋಲಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So absolutely the weather condition continues here to be one of the most coolest condition out here in this most beautiful Panchayat cricket stadium here in Mudipo, Kairangala, and all set now for the match number 2. The host Sultan Montugoli, they're playing their first match of their league stage against fighters Arkana, and wait and see how well these two teams will going to start their journey in their league stage matches. And matches which is today definitely going to be a very interesting. The very good teams participating in this cricket tournament. Altogether 11 teams participating in this cricket tournament, which is distributed into 2 groups, A and B. And yesterday the A group matches played, and today we are witnessing
matches of the B group. And two opening batters out there in the middle. Ishaq and Rizwan are the two batters, and Ishaq will going to take the strike. Ali, Either Ali starts the delivery, which is a slight bit of around the legs of the batter, so that leg by call by umpire, and no contact with the bat of the batter. Ishaq is in non-striker's end. Now Rizwan is in striker's end. Rizwan will go into face Either Ali. Lovely delivery, beautifully bowled. No ball called by umpire. Maybe that overstep. The bowler crossing that line with the overstep, so that umpire called it no ball. So one more extra runs, which is added to total to 2 on the board without loss of any wicket. This time definitely there is such a interesting kind of dismissal, I want to say, because the batter Rizwan wanted to play the reverse sweep for that ball, but bowler bowling that one around the outside the line of leg stump, so that he couldn't manage to play that reverse sweep very well. Just he wanted to tap the ball on the offside region, but ball is just ballooning up in the air and short cow point fielder, making no mistake at all. Quite unusual kind of dismissal here from Rizwan. The man of the match of the previous match, which goes to the batter who really played an excellent innings for the team, Friends Patur. I request United Patur with the correction, and I request Altaf of United Patur, please come and collect your man of the match award for your fantastic batting performance in this tournament, in this particular match, the previous match. Sharif is a new batter in. Will going to face next delivery of Either Ali. Successful bowler, got a wicket. Round the wicket. Little question over the wicket, left arm. Oh, lovely delivery, beautifully bowled. Again, going for the quick single, chance of run out there. But slight a bit of overthrow, but good backup by the fielder, so that no question of extra run. Just a single in the form of bye. With that bye scored Namuzan to 3 on the board for the loss of 1 wicket. The wicket of Rizwan, which is back into pavilion. Ishaq is on strike. Again, that ball around the legs of the batter. One more good delivery there from Either. And the batter couldn't manage to take that ball to his bat. Misses is complete, and wicketkeeper behind the stump did the rest. Again, they're going to be a wide. One more extra. With that extra, scored Namuzan to 4 on the board. 4 for the loss of 1 wicket. Either again bowling with a short run up. Left arm over the wicket. Again he went for the sweep shot. Again he missed it. That wicketkeeper behind the stump did the rest. And good bowling performance continues here from Either, even though he bowled some wide deliveries, but so 4 on the board. Either again. Final time in this over. Again he went for the sweep shot. Bowled him, cleaned him up. Ball hitting the middle stump. I want to see the addition from umpire. Is gone. After completion of first over, the great start given there by Either Ali. And the team was slight a bit of struggling here. Fighters Arkhana, they lost 2 wickets for just 4 runs.
They're looking in trouble now, fighters Arkhana. New batter in is Numan, walking towards the middle after the dismissal of the both the opening batters are back into pavilion of the bowling of either Ishaq and Rizwan. The two batters are back into pavilion, so new batters out there in the middle. Sharif and Numan are the two batters. Muhammad Ali, the one more Ali brought into attack from both the side after either Ali completes the first over. The Muhammad Ali brought into attack from the far end. After that power play, the fielding restriction is over, and we are seeing some bodies, so many bodies out there in the deep, and one fielder down at deep square leg, one at mid wicket. Long on is there, long off, and extra cover, deep extra cover. So a lot of protection in front of wicket, because the wind, the direction of the wind which is flowing towards the road, so that we are having some protection in front of wicket. Sharif is on strike. This time they're going for a quick single, chance of run out there, and throwing, and definitely it's not a good end. Good piece of fielding there by the fielder, but it might be the opportunities created in the non-strikers and very nearest for that extra cover fielder, short extra cover fielder, but he wanted to return the ball to the hands of wicket keeper, so that Sharif managed to complete the single. With that single scored Namuzan to 5 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. Muhammad Ali, right arm over the wicket, lovely delivery outbound direction, but going outside the line of off time, too far, wide call by umpire. With that extra scored Namuzan to 6 on the board, without 6 on the board for the loss of 2 wicket in the over number. Umpire taking back because that bat involved, no wides. The batsman has got a contact with the bat, so that only 5 on the board. Driven that one firmly down to deep long on region for a easy single. With that single scored Namuzan to 6. Six on the board without for the loss of 2 wicket. Muhammad Ali balls again. A lovely delivery there, appeal for something, but wicketkeeper misses the ball. Then the third man fielder, short behind leg fielder, just chasing the ball, and they completed a couple of runs. We just wait for the umpire signal. It's a leg by call by umpire. With that leg by scored Namuzan to 8 on the board. So wicketkeeper behind the stump, maybe for appealing what, I don't know for what they're appealing. There is no leg before wicket, and ball misses everything. One more dotted delivery. Score remains on 8 on the board. Muhammad Ali. Bounce nicely driven down to deep extra cover region by Sharif. With that single scored Namuzan to 9 on the board. The over number 2, which is comes to and 2 overs completed after completion of over number 2. Fighters Arkhana still searching for the right track, but struggling in the middle, and got only 9 by losing 2 wickets. 3 overs remaining in their inning, and wait and see how many runs they will going to score in these 3 overs. After this match will be played between Legend Pajir versus United Pathur, so that I request Legend Pajir's players, please come here, and kindly request you to sign the official chart. ಲೆಜೆಂಡ್ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ಸ್ಪೇಗಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ the match number 3 will be played after this match, but it's slow progressing here for fighters Arkhana.
9 on the board. ಇನ್ನೊಂದು 90. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಫೈಟರ್ಸ್ ಅರ್ಖಾನ ಸುಲ್ತಾನ ಮೊಂಟಗೋಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದಿನ 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Siddiq brought into attack from the commentary box end. Sultan Montugoli, the organizing team host. They know exactly the condition of the cricket ground. So far they got a very good start from the ball. After winning the toss, selected to field first. Everything is going in their favor. Now third over going to start. Siddiq round the wicket. This time this is a one delivery which is quicker and faster one. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Absolutely the faster one from Siddiq there. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Sharif is on strike. Siddiq. This time, oh, that was just wide of the fielder. Ball running down to deep backward point boundary for 4 runs. There is a fielder almost close together, backward point and cover point, and the cover point fielder just tried to extend his hand to take the catch, but ball just missing his hand. Maybe the slow reaction coming from the fielder, and the batter Sharif played a very good quality square cut down to deep cover point, between deep cover point and backward point boundary for 4 runs. Much required boundary came here for team Fighters Arkhana. With that boundary scoreboard now moves on to 13 on the board for the loss of 2 wickets. Siddiq. This is wide outside the line of off stump and wide call by umpire. With that extra scoreboard now moves on to 14 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Siddiq slight a bit of struggling as far as their line and length is concerned. Again, they wanted to get the single. This time they managed to get the single because ball is too far away from the wicketkeeper. Wicketkeeper have to run to his friend to field the ball. Ample time for Sharif to complete the single. With that single scoreboard now moves on to 15 on the board. 15 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Siddiq. Again the wide outside the line of off stump, and again they're going for the extra run as well, and it's going to be 1+1 2 bonus run, and with that 2 bonus run scoreboard now moves on to 17. So very important runs coming out here for team Fighters Arkhana in the form of extra, and Siddiq after that he got a good start, but that boundary really makes a little bit difference in the level of confidence of the bowler, and he is not quite able to get the line and length and bowl some wide deliveries. Siddiq. This time he bowling to Sharif. This is a lovely delivery. Wicketkeeper fails to collect the ball, and it's going to be a extra run there. No signal came from umpire, means it's from the bat of the batter. With that single scoreboard now moves on to 18 on the board. 18 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. That brings Numan into strike. Again far outside the line of leg stump. So it's turning out to be a good over here for team of friends Arkhana. Runs are coming in the form of extras and 1 boundary. It's 19 on the board. 19 for the loss of 2 wicket. Siddiq. Oh, this time very interesting. This time chance of run out, and chance of run out there. Both the batsmen are in the same end, and here is the opportunity of run out there, and wait for the umpire signal. It's out. There is a out for deliberate padding. Please note that deliberate padding. The ball is in play. There will be a run out. So it's a very unfortunate. The batsman not realizing that they need to run. Of course, umpire says the deliberate, but run out is always be there.
And absolutely the batter making a mistake that. So a little bit conversation is going on here. Not a dead ball. This is a deliberate padding. Please note. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರನ್ ಔಟ್ ಉಂಟು. So yes, slight a bit of confusion because the batter thought that it might be the umpire called it a dead ball. That's why not running. So opposition team, they're ready to to continue the batters. It's shown that a very good sportsman spirit here, because that was a slight a bit of confusion, and the very good spirit is shown there by. Siddiq, final time in this over. Oh, that might be the really disappointment here from the bowler. Bowling some wide deliveries. Absolutely, what could be the good start which is given by the two opening bowlers. But here is the bowler really struggling. It's 20 on the board for the loss of 2 wickets. Siddiq again. Right arm around the wicket, nicely plays it down to deep. Cow point region protection has been given in the deep. They're looking for the second, but they're going against because of the fielder is very quick to react to that ball. So one more over completed. Prolong over. It's a big over. In fact, the friends Fighters Arcana, they got some runs in this particular over. After completion of over number 3, it's 21. They're going exactly 7 runs per over. Fighters Arcana. It's 21 on the board. 21 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 21 2 ಓವರ್ನ 2 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನೋಡೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅರ್ಖಾನಾ ಈ ಒಂದು 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. So wait and see then. Fighters Arcana will going to try for some acceleration of run rate in the remaining 2 overs.
So Nawzal, one more very talented bowler for the side of Sultan Montugoli. They brought an attack from the road end, and Numan will be the striker. We wanted to face now of the bowling of Naufal. He's a subtle batsman. The first ball. This time he lofted it straight down the ground. What a great hitting. The ball suddenly is in the slot, and Numan lofted that one very straight as an arrow, and ball which is disappearing into the roads. It's a huge six. That ball went a many miles. What a great hitting there from Numan. Scoreboard jumps into 27 now. The kind of treatment which is required in the slog overs. So all in sudden Nawzal slight a bit of under pressure situation here, as again Nawzal right arm over the wicket bounce. Again he wanted to repeat the stroke. This time slight a bit of better line there from Nawzal. So that batsman had to settle for the single. He played that one now along the ground. Numan, with that single scoreboard moves on to 28 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Nawzal has got on fielder at deep extra cover, one night long off and long on, and a mid wicket and a deep square leg, short point leg, backward point, short cow point, and short mid wicket. The fielder inside the ring saving the singles. Again the bowler Nawzal bowls to Sharif. Sharif this time plays it quite nicely down to deep long on. He's doing a right job. You know, coming back for a second. Oh my goodness! Opportunity which is missed out by the fielding team, Sultan Montugoli. The throw which is came from the deep fielder towards the wicket keepers, and that's why the batter Sharif is survived from the run out. Numan is not interested because Numan, after hitting a six, is a very confident batter. He wanted to take the strike of the bowling of Nawzal, and that's why he's not interested for the second run. But Sharif wanted a second. Fortunate for him that throw which is not really up to the mark. 28 on the board. 29 on the board. Again far outside the line of off tempo and wide call by umpire. 30 on the board. Nawzal wanted to defeat the bat of the batter Numan to bowl that one outside the line of off tempo, but ball just missing the line. This time you can't do the mistake by bowling the short pitch delivery when you are bowling against the wind and batsman playing that stroke with the wind. With the direction of the wind, Numan lofted that one. That was an absolute one of the biggest six, I want to say, of this day number 2, which is came from the bat of Numan. Almost ball is travelling into the buildings out of the road, and which is a road which is situated just in front of the cricket stadium. And what a great hitting there from Numan. Scoreboard jumps into 36 on the board. The important runs came from the bat of Numan Nawzal. This time a lovely cover drive, misfield there by the fielder, but protection down the deep cow point region. They come back for the second before the throw coming from the deep. And with that pick off left run, scoreboard moves on to 38 on the board. What a great innings played there by Numan. One more very good quality extra cover drive, and fielder slide a bit of misfield inside the ring. And 38 valuable runs on the board in the over number 4 in progress. Nawzal right arm over the wicket delivers. Again Numan wanted to go for the big shot, slower one, change of pace. Good bowling there from Nawzal. It's not from the bat, leg by call by umpire. After completion of over number 4, team fighters Arkhana, they fight back very strongly in this match. And one more expensive over which is comes to the end of Nawzal. 2-6, 39 on the board. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 39 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Fighters Arkhana are really cruising very well, especially in the last 2 overs. Numan is taking the initiative of getting some acceleration, and so far he got a success, especially in the previous over of Nawzal. 39.
So at one stage they were struggling to get the runs. They lost the 2 wickets very cheaply. In 2 overs they got only 9 runs and they lost 2 wickets. But after that got a 2 big overs. The wicket over of 12 runs and over of 18 runs, which is the previous over bowled by Nauzal, and 18 and to 30 runs, which is scored in the last 2 overs. This shows that how well Numan and Sharif has got a partnership here. So last over, Khalil brought in the attack from the commentary box end. The mid wicket, long on, long off. Deep cover point, the fielders are in the deep. Here again the bowler balls. Right arm over the wicket to the right hander batsman Numan. Left arm spinner. This time, Nasir is there in the deep cover point region. Taken an excellent catch from moving to his right, and once it looks like the Numan hits that one powerfully. I thought it might be a maximum, but fielder is making no mistake at all. Nasir quickly moving to his right hand takes a very good catch. The wicket number 3, an entertainment innings which is comes in and of Numan. Played a very good knock for his team. It's 39 for the loss of 3 wicket. The new batter in. Sachin is a new batter in. Last 5 deliveries remaining. The left arm bowler Khalil got a wicket in his first ball, even that was a short pitch delivery, but he got a wicket because of that great piece of fielding by the fielder Nasir down at deep cover point region. Nasir to Sachin, left arm over the wicket. This time it could be. Which is not going to help that cricketing stroke. So again, titillating delivery outside the line of off stump, and batsman just got an invitation from the bowler, lofted that one, but same fielder Nasir waiting for that one. This time straightforward catch there for Nasir. 2 wickets in 2 deliveries. That means Khalil is on hat-trick. (39) for the loss of 4 wickets. Khalil got 2 wickets in a 2 deliveries. The same line which is outside the line of off stump. 2 batters are going for the lofted drive, but again they are not finding the distance what is looking for. So far there is no hat-trick in this tournament, and Khalil has got opportunity. Nisar is the batter, and Khalil will go into ball for the hat-trick wicket. Oh, that was a very good delivery in this. Slight a bit of flighted delivery outside the line of off and good piece of bowling there from Khalil. So far bowled 3 good deliveries, 2 wickets and 3 delivery remaining. Score remains on 39, yet to score a run in this last over. Khalil bowling 4 times in this over. Left arm. This time lofted, but again the wicket number 3. He's really enjoying his bowling. Out of 4 deliveries, he picked up 3 wickets, but no run conceded. It's turning out to be a very good last over. So umpire says that is they crossed the time limits, so that they need to bring one fielder inside the ring. ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿದರಿಂದ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ the one fielder need to be inside the ring, not more than 4 outside the circle. So 5th time in this over Khalil. Anish is the batter. Khalil, left arm.
This time, but the ball is in the air and against the direction of the wind, they played that one. It's the first run in this over. If you believe me or not, first run which is came in this last over of Khalil, and scoreboard now moves on to 40. Now last ball remaining in their innings, and Sharif back on strike. He's a settled batsman in the middle. He wanted to get one big shot here because they didn't got runs in this over, only one run. But it is turning out to be a great over there from Khalil. Final time. Short pitch, going for the big shot. Wicket keeper misses it. Chance of run out in the second end. And he's gone. Absolutely great over there from Khalil. Just a single run he conceded and picked up 2 valuable wickets and 2 run outs. Altogether 4 wickets in that over. And what a great finish from Khalil in this particular match. But slight a bit of disappointment end here for fighters Arkhana. They got one run in this last over. And the one run means they got a 40. And they set a target of 41 to win the match for team Sultan Montugoli. And wait and see how well Sultan Montugoli will going to get this 41. They stipulated 5 overs. And wait and see how fighters Arkhana will going to restrict the runs from the opposition. We'll take a short break here. Meanwhile, I request all the players of Legend Pajir, please be reported here immediately to sign the official chart. ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ ಫಜೀರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಫೈಟರ್ಸ್ ಅರ್ಖಾನಾ ತಮ್ಮ 5 ಓವರಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ 41 ರನ್ನಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಂಟಗೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. So wait and see how Sultan Montugoli will going to get this 41. And before the next innings will going to start, time to change in commentary box as well. I would like to invite Mr. Gopi, my long time commentary partner, my best friend Gopi, to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर 41 रनों का लक्ष्य इस वक्त फाइटर्स अरकाना ने रखा है सुल्तान मोंटेगोली के लिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त 41 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का निर्धारित 5 ओवर में, तो देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाज सुल्तान मोंटेगोली के किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार है। आसिफ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, पारी की पहली गेंद लेकर तैयार।
ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर 1 बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और सादिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि आसिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए, और जहां तक सवाल इस वक्त गेंदबाजी का, तो आसिफ छोटे रनअप के जरिए 3 से 4 कदम उनका रनअप दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के। इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर सुल्तान मोंटेगोली, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 41 इन 5 ओवर्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो आसिफ इस वक्त तैयार है। ये गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन, अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 2 रन यहाँ पर मिल चुके हैं। सीधे गेंद पहुंची थी गली फील्डर के हाथों में, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद से उन्होंने अपनी नजरें हटा ली, तो गेंद उनके हाथों से छूटी हुई, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप बैक थर्ड बैन पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस बार, इस वक्त स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से, और लंबा दौड़ लगाने के बावजूद यहां पर गेंद तक पहुंचने में सफल, और गेंद डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सादिक के बल्ले से लगता हुआ, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की जरूरत इस वक्त सुल्तान मोंटुगोली, जो कि मेजबान टीम है इस श्रृंखला के, होस्ट टीम है, और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर आसिफ इस वक्त तैयार रहा। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराई, और जहां तक सवाल है रन का, तो रन इस वक्त बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में बाकी, और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर तब विकेट। ये गेंद इस बार चिप किया, और इससे पहले कि गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 10 रन बिना किसी नुकसान के, माफ कीजिए, 10 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और आसिफ एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को हल्के से पुश किया, इस वक्त रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ा, लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और इसी के साथ पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 10 without loss after completion of first over for Sultan Montugoli, chasing the victory target of 41 in 5 overs. Pretty good start for them. 10 runs without loss. They scored after completion of first over, and still in overall calculation it's going to be 31 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. And the required run rate for them is exactly 7.75 runs per over. We are just waiting for the next bowler, और हम तो दूर वाले छोर से यानी रोड एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज और नया ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ सुल्तान क्रिकेटर्स की पारी में। आसिफ के बाद आशिक गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार नासिर फील्डिंग में जब पट्टियां पर चलते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त आशिक तैयार। मैच लगभग बराबरी पर रुक चुका है और
इस बीच फील्डिंग में जमावट चलती हुई मिड विकेट फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया जा रहा है, डीप मिड विकेट पर सीमा रेखा के अंदर। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो इस वक्त नासिर के पास स्ट्राइक है और फील्डिंग इस वक्त छा चुका है। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त आशिक तैयार। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के स्टंप के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 11 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। आशिक का फिर से एक बार तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर, बेहतर स्टॉप विकेट कीपर द्वारा, डाइविंग स्टॉप, दाहिनी और डाइविंग लगाते हुए गेंद को उन्होंने रोका और रन ज्यादा नहीं मिले, 1 रन मिले वाइड के रूप में और वाइड के स्टंप के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 12 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज आशिक का फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नासिर के लिए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तलाशते हुए गेंदबाज आशिक 2 लगातार वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं और 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ पर वो प्रदान कर चुके हैं सामने वाली टीम को। और स्कोर इस एक वाइड रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। आशिक दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद टॉप है, शायद इस वक्त गेंदबाज ने ओवरस्टेप किया था, तो इस वजह से ओवरस्टेप करने की वजह से यहाँ पर नो बॉल घोषित करते हुए तो 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और नासिर जो कि अपना खाता इन 2 रनों के साथ खोल चुके हैं। तो मुकाबला इस वक्त जारी है आज के इस दूसरे दिन के दूसरे मैच में सुल्तान प्रीमियर लीग 2024 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत, और मेजबान टीम सुल्तान मोंटेगोली और फाइटर्स अरकाना के बीच में। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा हो चुका है, वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान पर। निस्संदेह अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तलाशते हुए गेंदबाज आशिक 3 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं और धीरे धीरे अपने रिदम को प्राप्त करने की वो तलाश में और तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। टीम के अन्य खिलाड़ी उन्हें कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए और कुछ सलाह मशवरा करने के बाद एक बार फिर से तैयार आशिक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को के दरमियान जो खाली क्षेत्र है उससे खाली क्षेत्र से गेंद को निकालने में सफल। हालांकि डीप मिड विकेट और फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन कुछ हद तक सीधे और लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है आसानी के साथ 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सादिक के बल्ले से लगता हुआ और इस बीच आशिक एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर नो बॉल का इशारा इस बीच अंपायर द्वारा। स्टंप्स इस वक्त अप्रूव कर चुके थे, गेंदबाजी करते समय उनका हाथ शायद टकराया था स्टंप्सों पर और स्टंप अप्रूव होकर गिरते हुए। क्रिकेट के नियम अनुसार अगर आप गेंदबाजी करते समय अगर आपका हाथ या कोई भी अंग अगर स्टंप्स पर टकराता है तो इसे नो बॉल घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर नो बॉल घोषित करते हुए और 1 रन का इजाफा 21 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 21 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। आशिक फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। सिर्फ 20 रनों की और दरकार इस वक्त सुल्तान मोंटुगोली को। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक्स्ट्रा क्विकर रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिला, 2 1+1 2 runs now added to the total।
और इन दो रनों के साथ मंजिल के और रन निकट इस वक्त हो चुका है। यहाँ पर सुल्तान मोंटुगोली 23 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। धीरे धीरे ये आरंभिक साझेदारी एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर देते हुए सुल्तान मोंटुगोली को। तो इस वक्त काफी बातचीत चलती हुई गेंदबाज और टीम के अन्य खिलाड़ियों के बीच में। तो खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। अंपायर से कुछ बातचीत इस वक्त चल रही है और कुल मिलाकर इस ओवर में सिर्फ एक गेंद अब तक इस ओवर में, एक सही गेंद सिर्फ अब तक इस ओवर में गेंदबाज आशिक ने फेंकी है। काफी लंबा ओवर उनका यहाँ पर प्रगति पर 13 रन इस ओवर में बन चुके। 13 runs already scored in this over. Just one ball gone in this over. Just one ball bowled in this over so far. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार था। हाथ अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए बेहतर। दिस टाइम राइट लाइन बोल्ड बाय द बॉलर। गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। आशिक का दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट दिल्ली के इस वक्त गेंद को खेल दिया। गेंद पहुंची इस वक्त गली पर। रिवर्स शॉट के जरिए स्ट्रोक को खेला गया था और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 24 विदाउट लॉस। दे आर हेडिंग टुवर्ड्स टू देयर टारगेट नाउ। Just gone for a big one. God is inside it. Gone. Fine. Just wide of the square leg fielder. जब तक गेंद को पीछा करके डीप बैक स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे। विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बल्ले का अंदरूनी किनारा भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद इस वक्त फाइन निकली थी स्क्वायर लेग फील्डर की बाईं ओर से और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 विदाउट लॉस। दिस इज द ओवर नंबर जस्ट अ सेकंड इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। आशिक एक लंबा ओवर उनका प्रगति पर दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद succeeded. He's got a gap between his bat and pot and the ball passed in that gap and flattered his leg stump. पहली बेहतर गेंद इस ओवर में आशिक ने फेंकी और आखिरकार फलस्वरूप विकेट प्राप्त करने में सफल बल्लेबाज का। Sadiq, the man dismissed, bowled by Ashik in a fantastic delivery, and Sultan Montugoli lose their first wicket. It's 26 for 1. New man Muhammad Ali is now comes out to the middle as the number 3 batsman. So this is going to be so interesting. और देखते हैं यहाँ पर मोहम्मद अली किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं और आशिक अंतिम गेंद इस ओवर में आशिक लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए एक्स्ट्रा क्विकर लेकिन वाइड का इशारा। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर। 27 नाउ। स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराई, विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए लेग बाई के रूप में और लेग बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 ओवर पर। 28 without loss. 18 runs scored from this over. Prolonged over came to an end from Ashik, who conceded 18 runs in this over, and after 2 overs they are looking in a commanding situation. It's 28 for none after 2 overs with just 13 to get for victory in remaining 3 overs. So, just talking about the next match, legend Pajir will take over United Pathur in the next match, and because of that I request the captains of these 2 teams to please report to the state immediately for the toss procedure. Legends Pajir ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So back to this game, 13 required in remaining 18 balls. 13 required in 18 balls. और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हैं रिजवान रोबर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ
ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन आउट देयर एट डीप मिड विकेट इज गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर 29 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट और इस वक्त रिजवान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद टॉप एज पाएंगे और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस बीच मिलेगा एक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट नाउ इन द ओवर नंबर 3 in progress. Still, they are looking in a good situation. Sultan Montugoli, just 11 more runs now they have to score for victory. और गेंदबाज रिजवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट रिवर्स शॉट इंप्रूव खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए शॉट थर्ड मैन फील्डर के दाईं ओर से गेंद को निकाल दिया रिवर्स शॉट के जरिए और गेंद इस वक्त डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त मोहम्मद अली के बल्ले से लगता है और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 34 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट एंड विद जस्ट 7 रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री और इस बीच गेंदबाज ये गेंद इस बार एक बार फिर से इम्प्रोवाइजेशन करना चाहा इस बार गेंद को छोड़ दिया फील्डर ने सीमा रेखा से बाहर जाने के लिए और एक और चौका यहां पर लग चुका है 38 द स्कोर नाउ जस्ट 3 टू गेट फॉर विक्ट्री और ऐसा कहना पड़ेगा सुल्तान मोंटुगोली अपने विजय के द्वार पर आकर इस वक्त रुक चुका है और रिजवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार 2 लगातार चौके इस वक्त झट चुके हैं मोहम्मद अली इस बीच ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए 3 लगातार चौके 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज और इन 3 लगातार चौकों की बदौलत सुल्तान मोंटुगोली इस वक्त 9 विकेटों से इस मैच को जीत चुका है फाइटर्स अरकाना के खिलाफ तो मैच नंबर 2 यहां पर समाप्त हो चुका आज का So man of the match of this match award goes to the man who bowled absolutely brilliantly, conceded just 1 run and he captured 3 wickets and because of this fantastic bowling performance he adjudged the man of the match. Khalil of Sultan Montugoli adjudged the man of the match. I request Mr. Khalil please come on to the stage and receive the man of the match award from the one of our organizers for his fantastic bowling performance. So मैच नंबर 2 हैज बीन एंडेड और तीसरा मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है इस वक्त लेजेंड पजीर और यूनाइटेड पातुर के बीच में और वो मैच यहां पर शुरू होगा चलने लंबा बाद तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यहां पर अगले मैच की शुरुआत होगी तो अब वक्त है एक ब्रेक का नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक एंड आफ्टर ब्रेक विल बी बैक विद सतीश इन इंग्लिश थैंक यू धन्यवाद
I request Legend Pajir captain, please be reported here immediately for the tossing ceremony. I request both the teams players, those who are not signed yet, please sign the official chart immediately. We are going to close that registered book exactly at 11:17. 11:17ಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಜೀರ್ takes on United Patur in their United Patur playing their second match, and Legend Pajir they playing their first match. So a lot of cricketing action is coming in this month of January and even in the February. But here is one big tournament will going to commence in the month of March. We are talking about one more big tournament in the name of KFC Trophy 2024, which is proudly organized by Konaje Friends Cricketers, and they are organizing first year day-night cricket tournament in the name of KFC Trophy 2024 at Konaje Central Stadium, and that tournament will going to commence on 2nd of March and 3rd of March. This is under floodlight, and the interested team will going to enroll their name with by paying rupees 10,000 for Mangalore pool and rupees 8,000 for local pool. And winners will going to get a huge cash prize of rupees 1,01,000 rupees with the very attractive KFC Trophy 2024, and runners will going to get 50,000 cash prize along with the attractive KFC Trophy 2024. And there will be a some attractive individual prizes in this cricket tournament, and I request all the teams please cooperate, and your cooperation is much required. I request the interested team please enroll your team's name as soon as possible for this KFC Trophy 2024. And we have a live telecast of that cricket tournament from King Sports, and we have some popular officials as well as commentators in that prestigious KFC Trophy 2024, which is proudly organized by Konaje Friends Cricketers, Konaje Mangalore.
I request the two teams captain please be reported here for the tossing ceremony. Captain of Friends, captain of Legend Pajir and United Patur. The captain, United Patur captain already here. We are just waiting for the captain of Legend Pajir. ದಯಮಾಡಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಜೀರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ the Legends Pajir won the toss. Just we are waiting for their decision. Maybe they are elected to field first, and two umpires out there in the middle.
So after winning the toss, captain of team Legend Pajir elected to field first, so that they are on the field, and opening batters also they are in the field. Mustafa and Altaf are the two opening batters for team United Patur, and in the morning match they won the match against Friends Mysore, and they are playing their second match. The successful opening pair, Altaf and Mustafa, the two opening batters out there in the middle, and they will go into face. Kiran will go into start the proceedings. Kiran is the one who really, the man behind that KFC trophy. We have just announced that tournament, which is going to commence on 2nd and 3rd of the March, under the great leadership of Kiran and Konaje Friends cricketers, Konaje. And here is the first ball. Right arm over the wicket, delivers, and starts with the delivery, which is a warm-up delivery of the morning there from Kiran. That ball just missing the direction, and wide call by umpire. The extra player ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಪಜೀರ್ ತಂಡದ extra players. Again, it's going to be a second wide, consecutive 2 wides there from bowler Kiran. There is not really getting his line because of it's the first 2 deliveries which is going far outside the line of off stump, and straight away very experienced campaigner Mansoor behind the stump having some word with Kiran that not to bowl wide deliveries and not to feel the pressure. And Mansoor, everybody knows, one of the popular name as far as underarm cricket is concerned, one of the most stylish the batter, and who represented for NM Cricketers Mangalore. Now he is behind the stump, and after getting some words, having some word with Kiran, again outside the line of off stump. 3rd wide. 3 consecutive wide deliveries. It's not a good start there from Kiran. He's still a bit struggling to get his line and land. 3 without loss of any wicket. This time lovely delivery compared to the previous 3 deliveries. This one almost targeting just a little bit outside the line of off time with the extra bounce. The batsman completely missed it. Mustafa missed it completely from his bat. 4th wide of this over. Altogether he bowled 5 deliveries, but 4 wides out of that, and only 1 fair deliveries in that over. Slight bit of struggling here, Kiran, to get his line and length. This time he locked it. This is a little bit confidence level, it is down because of that 4 wides, so that bowler only thinking about that he wanted to bowl 1 fair delivery, but he's not really thinking about that line and length. That's what happened here. He's just concentrating over that right line, but the batsman is just concentrating to how to hit the ball, because the level of confidence of the bowler is almost decreasing of that 4 wide deliveries. That was a glorious shot there from Mustafa. Lofted that one off on the slot, of course the ball, and scoreboard now moves on to double figure. This time lovely delivery indeed. That ball again, that was a little bit low full toss, tried to yoke the batter in the negation, and there is no chance at all for any run. Score remains on 10 on the board. Good comeback here by Kiran from the bowler's point of view. He's just learning from the mistake. It's very important for the bowler. After that punishment, after that extra deliveries, is back very strong. Lovely delivery. This is the one line you need to bowl. Again, that ball is getting with the very good direction of this, moving from the good land spot. And wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Score remains on 10. Without loss of any wicket in the over number first in progress. Kiran again. Right arm over the wicket. Went for the reverse sweep. It's a 5th wide of this over. 1 more extra. More than the contribution from the bat. It's a contribution from the bowlers there. Scoreboard is 11 on the board. Again the wides and extra number 6. That means he bowling a prolonged over. The over of 12 deliveries. So rightly so, Mansoor saying that take a time, take your own time. It is very important to take a long breath when you are not having a level of confidence, to take a long breath and concentrate on the line. This time Mustafa.
from the point of view United Pathur, it's an expensive over which is comes to an end. In that over, Kiran conceded 18 runs in that over. Absolutely, 2 sixes. If you see that that over, the bat, the runs which is came from the bat, which is a 12, that is a 2 sixes. Then all runs remaining 6, which is in the form of wide. That means he bowled 4 very good deliveries and bowled 2 deliveries which is in the slot. Mustafa lofted that one handsomely down to deep long on and straight deep long off. So that means team legend Pajir have to come back with some economical and wicket taking over. Very good start here for United Pathur. Their level of confidence is very high because they won their first match against the friends Mysore in their opening match, the first match of the day, number 2. Zakaria. Zakaria will go into bowl the second over after getting some more protection in the deep. You can keep not more than 5 outside the circle. Now one fielder is going back to deep for third man. Mid wicket is there. Deep long off is there. Deep cow point. Deep square flag in front of square. This time lofted high up in the air. Altaf joining the winds are really coming like a fast flowing waters of the rivers for team legends Pajir, and in just 7 balls they got 24 runs. Absolutely, both the opening batters are really getting some big shots. Altogether we can see that 3 sixes been scored, no run which is scored yet in the form of singles. Again, catch it is a call. We are talking about no singles. This is a first single. Out of that 25 runs, they got only 1 single, the first single. That shows that both the batters are dealing with the sixes, and the scoreboard now moves on to 25 now. So next match, Friends Mysore takes on Sultan Montugoli. So that I request all the players please complete the signatures as soon as possible and get ready for the next match. What a fantastic cricket tournament is in progress here. Day number 2. Again slower one, change of pace, and the batsman fails to read the slowness of the delivery. Leg by call by umpire. Good comeback here by Zakaria as he learned quickly. That is bowling quick means it's ball which is coming very nicely to the bat. So need to reduce that pace. Zakaria. This time he lofted. What a straight drive. This is a magnificent stroke. Glorious. After Mustafa hitting 2 sixes in the previous over and Altaf saying that in this end I will going to take charge of that, hitting the 6. Altogether 2 sixes came from the bat of Altaf. This is absolutely straight, as straight as an arrow. Ball which is landed out of the park many miles, and scoreboard jumps into 32 on the board. Over number 2 in progress. This time but fortunately it is a tennis ball, otherwise that will be a broken windows if it is going to be a season ball cricket. What a fantastic cricketing stroke there from Altaf there. 2 sixes and scoreboard jumps into 38. Zakaria to Altaf. Over number 2 completed. It's very expensive over indeed. Altaf hitting a hat-trick sixes. The first hat-trick of this day number 2. And the runs really flowing here. Scoreboard jumps into 44.
2 overs 44. The run rate is exactly 22 runs per over. What a fantastic batting display here from these two opening batters. Absolutely mesmerizing cricketing stroke, mesmerizing batting performance. Altaf, 3 sixes in a row. All we can see that he's standing deep in the crease, transferring his weight onto the back foot and getting some extra power behind the stroke. Absolutely, those who are watching live telecast of this cricket tournament, definitely they enjoyed all the strokes which is played. If you believe me or not, out of 42, only one single. And all we can see that the sixes. There are the raining of sixes in this ground. Outside and leg stamp again going to be a wide. Bowler Samir started with the wide. Again that ball which is little bit outside the line of off-time batsman, went for the reverse sweep, picked up a single, then with that single scored Namozan to 46 on the board. This time full toss very nicely directed by the batsman down to behind leg region. They're coming back for the second and they made it quite easily in the end. With that couple of runs scored Namozan to 48 on the board. 48 runs partnership which just came very quickly. .48 on the board. Again left arm balls nicely driven down to long off region for a easy single. With that single scored Namozan to 49. One of the explosive batting I want to say in this particular cricket tournament as far as for the first wicket is concerned by these two opening batters. This time what a shot! Ball is just went like a crazy. Particular cricket tournament in just 2.4 deliveries they completed that 50 and scoreboard jumps into 53 on the board. 53 the partnership which is really absolutely explosive batting performance from these two batters. This time he wanted to play that one down to cow point region, got a single for that. With that single scored Namozan to 54 on the board. This is really a monumental high scoring game. Just over number third is in progress. One of the highest partnership for the first wicket. Unbeaten 54 from these two batters, and both the batters are really anticipating each other very well. Mustafa got 2 sixes and a boundary. Altaf got 4 sixes so far. Now Altaf is on strike. Again that wide outside the line of off temper. Shamir still struggling to get line and length proper. With that extra score, but Namozan to 56 now. Just over number 3 in progress. Left arm around the wicket. Catch it is a call, but ball surely falling short of the fielder. Just a single there for Altaf, and with that single score, but Namozan to 56 on the board. 56 after completion of over number 3. 56, absolutely, it's a mountain of runs.
56 on the board, 22 runs, which is a run rate progressing here, unbelievable. One of the highest run rate which is maintained so far in this tournament, and it's going to be highest partnership for the first wicket which is recorded so far in this tournament. So bowling change, looks like Farooq brought into attack with the jersey number 333, one of the most popular jersey number. Universal boss wearing this number jersey, Chris Gale, and he won Universal boss of under-arm cricket. Yes, we are talking about Arshad Bajal is also wearing that jersey number 333, and he will going to now, Farooq will going to bowl round the wicket outside the line of off stump, and well within the reach of the batter, then wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. So much required needed to bowl two very good overs here for legend Fajir. Again that ball going to be a wide. This is the one area I think legend Fajir have to work a lot as far as conceding extras is concerned. They cannot do that mistakes, because extras definitely going to play a big role in the result of any matches. 57 on the board. This time he lofted. How many sixes? It's a raining. This is a huge one. Altaf, I'm watching him from this end. He's really enjoying that cricketing stroke. Whatever the strokes he played in front of wicket and straight over that of the bowler. Absolutely, it's a monumental six. It's not like that just a six which is just passing the boundary line, but all we can see that was a huge sixes. The sixes which is went many miles out of the boundary line. Great batting display here from Altaf. Again pressure now straight away into the bowler. No ball call by umpire because that ball pitched outside the pitch. So one more single. With that single, Skobar moves on to 64 on the board in the over number 4 in progress. Again, Altaf wanted to go for the big shot, not quite getting hold of that one properly, but managed to get a couple of runs. Slight a bit of misfield by the fielder. 2 more to the total. With that couple of runs, Skobar moves on to 66 on the board. 66 in the over number 4 in progress. Absolutely, it's a mountain of runs which is set there by team of United Pathur. Again going to be a white, one more extra, lot of extras which is conceded. 67. Farooq a little bit struggling to get his line and length, bowling round the wicket. One more. Oh, it is definitely for Altaf hitting a 6 mains is just having a breakfast of the morning. So easy. So easy, and whenever he hits it's very well. Clinical cricketing stroke, as clean as a whistle. Magnificent struck. 72. This time it looks like going to be one more. No, catch will be taken there because he played it on his little square of the wicket. And entertainment innings which is comes in and of Altaf. He played some enterprising cricketing stroke in this innings. He scored a 43 runs, one of the highest individual score of this tournament, and he just missed that 50, what he wanted to get. Have a look at that one, the catch of that fielder. This is I want to say that Mangalore Media getting all the sixes which is played by Altaf, and I think it's a very good thinking from the point of view of Mangalore Media, just getting the sixes, how Altaf is played that sixes. Have a look at that one. It's absolutely monumental. Every sixes we can see that ball is landing out of the park. When Altaf is in the arc, ball will going to disappear out of the park. So that's a thank you very much Bangalore Media to getting all the sixes. Again that ball going to be a punishable from the umpire, not from the batter, because ball just missing the direction. Skobar moves on to 74 on the board. This time going to be one more 6. Yes it does. Now the new batsman Jalal joining the party, saying that of course after Altaf I want to continue.
and scoreboard jumps into 80, and one of the highest team total score of this tournament in just 4 overs, and still the run rate 20. Legend Pajir, the bowling really not up to the mark. All we can see that the batters, especially Mustafa, Altaf, now Jalal came in and got a 1-6. I want to see how many sixes which is scored. 9 sixes. That means out of that 80 runs, 54 runs which is came in sixes. There is only one boundary. Yes, only one boundary. Then all we can see 9 sixes. That shows how explosive the batters of United Pathur. Razik will go into ball the last over of their innings. Long off is there, long on is there, deep extra cover is there. One fielder is going towards the mid wicket, one at a deep square leg behind the square. Leg spinner is in action, starts with the beautiful leg cutter, just a little bit movement outside the line of off stump. The wicket keeper behind the stump, Mansoor, did the rest back to bowler. Score remains on 80. Razi. Again, that going to be a wide, so many extras. 81 on the board. Razik bowls. This time left it, but I think the fielder will go to underneath it and taken that catch because he played that one against the direction of the wind. Even though Mustafa strikes that one right from the middle of the bat, but the fact that he played that one against the wind, the ball landed safely to the hands of long on. So one more good innings which is comes to an end of Mustafa. He's also scored 2 sixes from his bat and 1 boundary, and he scored 18 valuable runs and responsible for the partnership. So responsible for the highest first wicket partnership of 74 runs between Mustafa and Altaf. Again, reverse sweep comes into play. Lovely shot, good direction, going to be a boundary. Everything is going in favor of batting team. So here is again the bowler, Razi. Right arm over the wicket. Delivers. Oh, one more switch it. Oh, this has been a really, never looks like he's a right-handed batter playing that stroke. It's just like a left-handed batsman hitting the ball. So easy. Ali getting 2 consecutive boundaries. And scoreboard now moves on to 89 on the board. This is a right strategy because when leg spinner is in action, it's a very easy for the right-handed batsman to play the reverse sweep. If you're able to get the position very quickly. Now one fielder is heading back now. But still he continues that reverse sweep. Kiran this time misfielded that one and they completed a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 91. Can you believe this? 91 runs in just 4.5 deliveries. Again the repeats, again the appeal for leg before wicket, no leg before, only one single in the form of leg by. Scoreboard now 92. Over completed. So one of the highest total score of this tournament by any teams, registered by United Pathur. 92 runs they scored, and they set a target of 93 to win this match. That means Legend Pajir have to climb the mountain of runs in front of them, and wait and see how well they will going to climb this mountain of runs. The wait and see. They got some good batters, no doubt at all. Legend Pajir has got some legend batters in their side, and the batter like Mansoor, Kiran, and some good players out there. They can be very effective, but getting a 93, I don't think it's going to be so easy.
and they need to bat out of their skin if they wanted to win this match. And wait and see how well they will going to bounce back. And we'll take a short break out here, and after short break, my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone. Of course, Gopi, did you enjoy this batting performance? Because there is no rain at all here, but certainly the rain of sixes in this particular matches. 10 sixes in this match. And even rains in the form of extras as well. So many extras conceded, and that's why it looks like Legend Pazir are in trouble, because 93, I don't think it's going to be an easy task to chase down. But everybody knows the cricket is game of glorious uncertainty. But if you wanted to that kind of uncertainty, I think the batter like Mansoor and Kiran have to talk with the bat and need to get 93 runs. They need to bat out of their skin. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त बारिश तो नहीं है, लेकिन छक्कों की बारिश यहाँ पर हो चुकी है, और उसी तरीके की छक्कों की बारिश की जरूरत है इस वक्त। यहाँ पर लेजेंड्स को अगर 93 रनों के लक्ष्य तक उन्हें पहुंचना है निर्धारित 5 ओवर में 18.60 रन प्रति ओवर के औसत से सतीश यहाँ पर रन बनाने हैं 93, और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोसिव बैटिंग जिसे कहते हैं विस्फोटक बल्लेबाजी ही अब यहाँ पर लेजेंड्स को इस मैच में विजय दिला सकती है। देखते हैं उनकी पारी में यहाँ पर क्या होता है। तो उनकी पारी की यहाँ पर शुरुआत होती हुई दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए, और मंसूर और इमरान आरंभिक बल्लेबाज जो कि मैदान पर इस वक्त उतर चुके हैं, और इस वक्त गेंदबाजी संभालते हुए गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से। और जहां तक लक्ष्य का सवाल है तो मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया 93 रनों का लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो निश्चित रूप से यहाँ पर चौके और छक्कों की बौछार यहाँ पर लगानी होगी, और देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। खासकर मंसूर जो कि आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर उतर चुके हैं, और मंसूर खासकर आमतौर पर एनएम क्रिकेटर्स मैंगलोर का प्रतिनिधित्व किया करते हैं, एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, और देखना यह है कि इस मैच में वो किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अल्ताफ और मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जहां तक सवाल है फील्डिंग का, तो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, और इंतजार है इस वक्त उनकी पारी की पहली गेंद का। तो पहली गेंद लेकर तैयार, इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ मंसूर ने लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है लेजेंड्स पजीर के लिए 1 रन 90 लाख से नुकसान के, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार इमरान, जबकि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त अल्ताफ, और ओवर की अगली गेंद लेकर अल्ताफ तैयार। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। कवर पॉइंट पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, डीप कवर पॉइंट पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। 2 गेंदे उनकी पारी में फेंके जा चुके हैं, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त बन चुके 3। तीसरा मैच इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत सुल्तान प्रीमियर लीग 2024 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत दूसरे दिन का तीसरा मैच यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज इस बार तैयार। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और मंसूर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त अपने मंजिल की ओर अग्रसर होने के लिए इस वक्त लेजेंड्स पजीर के बल्लेबाजों को, और इस बीच गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट मंसूर के लिए ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ, वाइड स्लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर अब तक एक बेहतर ओवर साबित हो चुका है यहाँ पर अल्ताफ का। सिर्फ 5 रन पहले 4 गेंदों में वो प्रदान कर चुके हैं, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार।
रिवर्स शॉट, इस बार नॉट क्वाइट मिड विकेट बट ही फाइंड्स द गैप एज वेल, और कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। हालांकि मिड ऑफ द बैट गेंद नहीं टकराई थी, लेकिन 2 रन जरूर मिला, इनफील्ड को क्लियर करने में सफल, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, और अल्ताफ इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार दिस टाइम दिस कुड बी ट्रबल इफ द थ्रो वाज डायरेक्टली टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन थ्रो इस वक्त चूकता हुआ, और यहां पर सिर्फ 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 8 runs on the board, first over completed for Legends Pajir, and now it's 8 without loss. Still they have a long way to go. 85 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs, and the required run rate is now gone up to 21.25 runs per over. तो गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए तौसीफ, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, पहली गेंद इस बार चिप किया, लगन पर मौका, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को उछाला जरूर, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, और लॉन्ग पर गेंद को लपक लिया गया सीमा रेखा के अंदर, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 गिर चुका है। इमरान की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है, और 8 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है लेजेंड्स पजीर का, और इस वक्त वो काफी संकट की स्थिति में यहां पर नजर आती हुई। और जहां तक अगले मैच के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो आज का मैच नंबर 4 खेला जाएगा फ्रेंड्स मैसूर और सुल्तान मोंटुगोली के बीच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों टीमों के कप्तानों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें टॉस प्रक्रिया के लिए। रिक्वेस्ट द कैप्टन्स ऑफ फ्रेंड्स मैसूर एंड सुल्तान मोंटुगोली प्लीज टू बी रिपोर्टेड हियर फॉर द टॉस प्रोसीजर्स विद ऑर्गेनाइजर्स। और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। किरण इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। और इस बीच दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज तौसीफ ये गेंद उछालना चाहा किरण ने, लेकिन गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, तेजी के साथ रन यहां पर पूर्ण करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। रन ज्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए, और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके छक्के इस मैच में यहाँ पर लेजेंड्स पजीर को इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई, गेंद को खेलने के प्रयास में जो कि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे आते हुए, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, गेंदबाज तौसीफ दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस बार गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में, और विकेट कीपर ठीक से गेंद को इस वक्त कलेक्ट नहीं कर पाए। लगभग बल्ला कुछ हद तक अड़ाया था अंतिम क्षण में, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और किरण इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, और तौसीफ इस वक्त तैयार किरण के लिए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, दिशा से भटकती हुई गेंद थी, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार तौसीफ, ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर उछालने के प्रयास में चूके गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर। 1 रन का इजाफा, लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक कसी हुई गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए
गेंदबाज यूनाइटेड पातुर के। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 13 रन इस वक्त जोड़ चुका लेजेंड्स पजीर 92 रनों के लंबे से लक्ष्य का पीछा करते हुए। तो 79 रनों की दरकार बचे हुए 3 ओवर में। 3 overs remaining, 79 more runs now they have to score for victory. 12 the scoreboard stays at, in fact, and exactly 80 runs needed in remaining 3 overs. सीरज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ लेजेंड्स पजीर की पारी में और किरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद, फर्स्ट बॉल कम्स, और गेंदबाज सीरज इस वक्त तैयार पहली गेंद लेकर। Looked it this time, I think it's got the distance. Oh, standing catch taken by the long off fielder. अनबिलीवेबल। और निस्संदेह ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि गेंद सीमा रेखा को निश्चित रूप से पार करेगी, लेकिन अंतिम क्षण में अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को उन्होंने बेहतरीन तरीके से लपका। और जब वो कैच को लपकते समय एक हाथ से जब उन्होंने कैच को लपका तो उनका संपूर्ण शरीर हवा में था। इस बॉडी वाज कंप्लीटली इन द एयर व्हेन ही जस्ट ट्राइंग टू टेक अ कैच। और इस बीच इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है। दैट वाज इन अ सर्टेन सिक्स, बट एट लास्ट ब्रिलियंटली taken just inside the fence with one hand by the long off fielder, and because of that fantastic catch Altaf the fielder। और यहां पर इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये किरण का विकेट यहां पर गिर चुका है। तो 12 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 17 गेंदें बाकी और रन से चाहिए इस वक्त ठीक 80। 80 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 17 बॉल्स। और सीरज जिस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद कहीं ऑफ साइड पर डीप थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा। इट्स ऑफ द बैट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर। 13 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो मंसूर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और रिवर्स शॉट, डेलिकेट इम्प्रोवाइजेशन एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल। और 4 रन यहां पर प्राप्त करते हुए विद रिवर्स शॉट गेंद को खेला था खूबसूरती के साथ। शॉट थर्ड मैन फील्डर के बाईं ओर से गेंद को निकालने में सफल लगे। इन द डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक मंसूर के बल्ले से लगता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी यहां पर लेजेंड्स पजीर के लिए। और सीरज तैयार मंसूर के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद टॉप एज, मौका और बेहतर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाई रखी और आखिरकार बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपका। कम से कम 7 से 8 कदम दौड़ते हुए और आखिरकार इस बेहतरीन कैच की बदौलत मंसूर का विकेट गिर चुका। और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर लेजेंड्स पजीर। और 17 रनों पर तीसरा विकेट खो चुका है। मंसूर डिपार्ट्स एंड नाउ इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಂಟುಗೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈಸೂರು as well as Sultan Montugoli please to be reported here for the toss procedure with organizers. तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और सीरज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर।
तीसरा मैच आज का यहाँ पर प्रगति पर। सीरज अंतिम बार इस ओवर में दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस बार शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, और यहाँ पर रन्स नहीं मिला। तो इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 overs completed, 17 runs on the ball. Still the batsmen of Legends Pajir are now struggling. And now 79 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries with a required run rate of exactly 39.5. Sultan Montugoli are won the toss in the next match against friends Mysore, and what the decision they will take, just we have to wait and see. So 4th over starts in their innings, और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए 79 रनों की दरकार बचे हुए 2 ओवर में, यानी 12 गेंदों में। और फुल टॉस पुल किया लंबा पर और सीधे फील्डर के हाथों में। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। फुल टॉस गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में अपना विकेट खो बैठे लंग ऑफ फील्डर द्वारा लपक लिए गए, और इसी के साथ चौथा विकेट का पतन यहां पर हो चुका है। 79 नाउ still required in remaining just 11 balls. So number 6 batsman is now comes out to the middle. और ये गेंद कट करना चाहा था, अंतिम क्षण में अपने पैर को क्रीज पर रखने में बरकरार रहा, और यहाँ पर इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए। So ball in, 1 more wicket fallen, wicket number 5 down, and now just 17 runs on the board. So one more batsman is now comes out to the middle wearing a number 17 jersey, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए बेहतर तरीके से गेंद को रोका गया। शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग 20 गज के दायरे के अंदर वाइड का इशारा। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लॉस्ट इट, एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस। 6 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ उछाला था लंग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स नाउ। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। इज्जू गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार। इस बार बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट चेंज ऑफ पेस, बोल्ड अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लो डिलीवरी दिस सिचुएशन, और गेंद को जज करने में चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से इज्जू, ये गेंद बल्ले का भीतरी किनारा, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर रन नहीं मिलेंगे। 4 overs completed, and after 4 overs now it looks like just a formality is now remaining in this match. 25 for the loss of 4 wicket, and
67 required in remaining last over. Absolutely impossible task in front of the batsmen of Legends Pajir. Thirty-three. So bowler starts the fresh proceedings and the last over starts in Legends positioning. 67 needed from last over. और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. जलाल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और सिर्फ औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गई है. और पहली गेंद पैरों पर गेंद टकराई. एक रन इस बीच मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 26 रनों पर. 26 now for the loss of 4 wicket in the over number 5th and the last started just short while ago. 5 balls remaining, 66 to get. Bowled him, gone for a big one and lost his wicket. One more wicket fallen. Wicket number 5 down. It's 26 for 5. So 26 for the loss of 5 wicket. Just 4 balls remaining in the innings. और 4 गेंदें सिर्फ बाकी. 66 रनों के दरकार. 66 needed in remaining 4 deliveries. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. जलाल ड्राइव किया खूबसूरती के साथ. लॉन्ग ऑन पर not more than a single. 27 now for the loss of 5 wickets. 3 balls remaining, 65 runs to get. ऑन साइड पर खेला 1 रन के लिए. 28 for the loss of 5 wickets and 64 to get from 2 balls. Driven square of the wicket, perfectly struck down to deep cover point. सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर. So the last ball and that's it. Comprehensive victory for United Patur. So United Patur have won the match by 62 runs. Comprehensive victory for them, defeating Legends Pajir. And with that 62 runs comprehensive victory against Legends Pajir, they back the complete points. So match number 3 of the day is now ended just short while ago. और मैच नंबर 4 की शुरुआत यहाँ पर होगी. फ्रेंड्स मैसूर और सुल्तान मोंटुगोली के बीच में. सुल्तान मोंटुगोली ने टॉस जीता है. देखते हैं वो क्या निर्धार यहाँ पर लेता है. एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. धन्यवाद. थैंक यू.
So thank you very much, Gopi, and welcome back for the match number 4 of the day number 2 of this prestigious Sultan Premier League 2024. The man of the match, which is goes to for the previous match, one who played entertainment innings and one of the best innings of this prestigious Sultan Premier League, which is played by Altaf, scored 43 runs and taken one stunner catch down at deep long off, so that is just as a man of the match for his outstanding performance. May I request Altaf please come and collect your man of the match award from our chief guest. So after toss which is on by captain of Sultan Montugoli and Irshad Montugoli, the captain of I request Irshad Montugoli to please present this man of the match award to Altaf. Altaf ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ಮುಂಟಗೋಲಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So opening batters that came into middle, it's Arshad Bajal and Rafiq and Arshad Bajal. And Siddiq will go into start the proceedings. And Arshad drives that one powerfully down to deep long on region. Not more than a single. So Arshad starts well. With the first delivery itself, he played that one down to deep long on region. And he got his first run from the bat. Arshad misses his first match when they played against United Patur. And now, inclusive of Arshad Bajal, definitely will going to strengthen both the batting and bowling department of team friends Mysore. So Sultan Montugoli, they played their first match against fighters Arkhana. They won the match, and friends Mysore, they lost the match in the morning against United Patur. Again, the ball is going to be a wide. That ball just missing the direction as they tried to bring the ball around the legs, and nothing much to do with the delivery. Batsman left the ball, and there is no chance at all for any run. Again, the same line and length, so same reaction coming from umpire as well. Signal it is a wide, so it's 2 wides there from Siddiq. Scoreboard numbers on to 3 on the board. So Rafiq is on strike. Power play is on. One fielder down at deep long off and one fielder at deep mid wicket. The 2 fielders outside the circle, saving the boundaries. And altogether 4 men in the offside and 5 men in the on. Looking for the sweep shot, ball hitting the legs of the batter, so that leg by call by umpire. One more addition to total, addition of that single scoreboard Namuzan to 4 on the board without loss of any wicket in the over number, the first in progress. That brings Arshad Bajal into strike. For Arshad Bajal, there is a man at deep square, like behind the square, one at deep long on. There's a what a shot. This is a signature stroke of Arshad Bajal. So as far as the under-arm cricket is concerned, he is one of the most destructive batter at any format of a games, who loves to kill the ball, and that's why he's called as a killer of the ball with the nickname. And what a great shot. That was a lofted drive towards a deep long off for a maximum. Scoreboard jumps into 10 on the board. This time, this is absolutely fantastic helicopter shot played there by Arshad. How easily he did that one. Absolutely. I want to see it in a replay. The way that he's flicks that one of his legs. Absolutely unbelievable. One of the stroke we can enjoy very when we are having a mic in our hand. This has been one of his favorite shot as well. The great shot coming from the bat of great batter Arshad Bajal. The playing for in his home condition and dispatching 2 consecutive sixes, and scoreboard jumps into 16 on the board already. Siddiq is getting a punishment. Siddiq, right arm around the wicket to Arshad. This time opportunity and it's gone. Change of pace, good thinking from the bowler's point of view. Siddiq bowled the slower one,
And Arshad Bajal couldn't manage to read that slowness of the delivery early into the stroke, got a top edge, and the short fine leg fielder not really missing this golden opportunity. He knows that this is going to be a big fish in the net. One ball remaining in this over. This is really going to be a vital breakthrough here for team Sultan Montugoli. They got a huge wicket of Arshad Bajal after that. 2 sixes. Looks like he will going to get more runs from his bat, but Siddiq strongly back in the game by picking up the wicket of Arshad Bajal. Jersey number 06, maybe the Rolf is a batter, he came into middle. Siddiq. This time again the quicker and faster one, but missing the direction. They're going for the extra run as well. Absolutely good running to the wicket. A couple of runs has been added to total because of that wide, 2 wides. And with that extra score, but Namuzan to 18 on the board for the loss of Arshad Bajal's wicket. Siddiq. Right arm over the wicket, bowls. This time a lovely delivery. That ball is just misses the bat in last moment. By call by umpire, wicketkeeper misses it. So with that extra scoreboard now moves on to 19. So big over from the point of view of team Friends Mysore. They got runs in that over, but unfortunately they lost the wicket of Arshad Bajal after hitting 2 sixes. It's 19 for the loss of 1 wicket. For the latecomers, you are watching match number 4 of the day number 2 of this prestigious Sultan Premier League 2023, and the host team Sultan Montugoli. They're celebrating their 11th anniversary, and in association with the Mudipu Cricket Association. This tournament is organized in this most beautiful Panchayat Cricket Stadium here in Mudipu, Kairangala. Huge ground, the big ground. So it's bowling change here. The bowler Ali brought into attack to bowl the second over of the innings. Ali to Ali to bowl left arm over the wicket. Starts with the delivery, which is round the wicket in fact, and that was a fair delivery because ball just moving a little bit from the middle stump and well within the reach of the batter. Again, there is no chance at all for any run. Ali again bowling left arm round the wicket. Again the chance of run out in a non-cycle and the batsman is finding able to land his bat in the right time, even though he lost his grip over the handle, but after landing his bat into the crease, then he's lost his bat. That's why umpire rightly says it's not out. So quick run, risky run taken, and one more run added to total with the addition of that single scoreboard. Now moves on to 20 on the board for the loss of Bajal's wicket. Arshad Bajal, after hitting 2 sixes, scoring 13 runs, is out for unlucky figure. Sometime it's happening in cricket. You can see that 13 will become for some players. It's going to be an unlucky number. Rauf is on strike now. Will go into face next delivery of Ali. Left arm bowls. Went for the sweep shot. They're going for the quick single. With that single scoreboard, Namuzan to 21 on the board. Ali so far trying for some tight overs here after that expensive first over, and he succeeded so far, and he bowling again left arm.
going to be a big white and going for the extra run as well. This is the one area, the most of the teams we can see that they're considering a lot of extras in the form of whites. Once again, that's a bonus run here for team Friends Mysore. They're getting some runs in the form of extras and scoreboard moves on to 23 on the board. In the over number second in progress, Ali back to his bowling mark. Left arm bounce. Again a wrong line to ball. The batsman quite nicely flicks it off his legs. Protection is there in the deep square leg fielder will going to run towards square in behind the square, and before that ample time for the before the throw which is came from that fielder, ample time for the both the batter to complete that two valuable runs. With that two valuable runs, scoreboard numbers under 25, quarter century. The quick quarter century coming here for team of Mysore Friends Mysore. Ali again. Rough wanted to play the reverse sweep, missed it completely, but umpire not missing the opportunity to signal the wide. One more extra scoreboard moves on to 26 now. 26 for the loss of one wicket in the over number second in progress. Ali pitching the ball several times before he delivers the ball. Again that quicker one, short pitch little bit and batter fails to make a contact with the bat. Leg by call by umpire. One more addition. 27 over number 2 in progress. 2 completed in fact. After completion of over number 2, and Friends Mysore are still looking in good position. Scored 27 runs in 2 overs. They're going exactly 13.5 runs per over. 3 overs remaining in their innings of Friends Mysore, and wait and see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. After that cool weather condition in the morning, slowly we are just experiencing some hot condition, but still it's a mixing. Sometimes it's a very cool weather, cool wind which is passing, but sun which is going brighter and brighter, and because of that even the weather condition are so little bit going hotter and hotter. So both the batters are in the middle, Rafiq and Rauf. They wanted to get some partnership and wanted to get some runs in the remaining 3 overs. After that Friends Mysore, they lost their first match. They knows that it is very important for them to open the account in the points table. Even Sultan, the Montugoli, the host team, they won their first match in their league stage. They wanted to continue their winning runs in this particular league stage matches of this prestigious Sultan Premier League 2024. Lovely delivery to start with, but ball just missing the direction outside the line of off stump, and a white call by umpire. With that extra scoreboard moves on to 28 on the board. 27 on the board, correction again. They're going for the quick single, chance of run out there, and they completed a quick single. So with that single, scoreboard moves on to 28 now on the board. Ali is in action from the road end. This time catch it is a call, and the ball will going to land it safely, and a very good stop by the fielder, and especially the Siddiq, I think so, the batting down a deep long off region. He quickly realizing that very difficult to take the catch, just putting his body behind the ball and stopping certain boundary for his team, and a couple of runs has been scored in between. With that couple of runs, scoreboard moves on to 30 on the board for the loss of 1 wicket. Ali bounce. This time again wicket keeper fumbled, so that they managed to complete the single in the form of bye. With that extra scoreboard moves on to 31 on the board. Slight a bit of frustration for the bowler when the bowler defeats the bat of the batter. Wicket keeper fails to collect the ball. That might be a little bit hurting for the bowler. So that brings her off into strike now, facing Ali. Again just forcing that one. Almost drags the ball from outside the line of off stump to drive the ball towards a deep long on. And Siddiq, the fielder down at deep long on, fields the ball, retains the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 32 on the board
for the loss of 1 wicket. Coming down the track, using his feet, wicketkeeper misses it. Absolutely sloppy. Really, I think both the wicketkeeper and the short fine leg fielder not really up to the mark, isn't it? Really. And what could be a certain dotted delivery that might into the boundary for 4 runs by signal. Skobar Namuzan to 36 now. 36 for the loss of 1 wicket. Coming down the track, beautifully driven that one into the square of the wicket, down to deep backward point region. The cover fielder from gully region to run quickly to that direction of the ball, down at deep backward point region. Couple of runs which is scored, a warning which has been given to the batter Rafiq that is running in the pitch. With that couple of runs, Skobar Namuzan to 38 on the board. Coming down the track, lofted that one and clearing the man down at deep long on. Absolutely fantastic use of the feet in the negation that from the batter. Great shot. It's not so easy when you are coming down the track against the pacer, and you use that very well, and connection is one outstanding in the negation from Rafiq to get the 6 down to deep wideish long on. With that 6, Skobar jumps into 44 after completion of over number 3. The great going here for team Friends Mysore, even though they lost the wicket of Arshad Bajal, but he laid the foundation in the first over itself. 44 44 3 over ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. The hero of the previous match, one who bowled excellent last over. They came into attack. Khalil, who bowled very well in the previous match, 2 runs and 2 wickets in the last over when they played against Fighters Arkhana. Now Rauf in front of Khalil. Left arm bowler. Left arm down the wicket. Again a nicely bowled wicket keeper. Wicket keeper never looks like he's a wicket keeping, like just like a swimming. So searching of the ball. Ball is still going away from the wicket keeper. And one more single has been completed, then 45 on the board. Khalil bowling left arm, full toss delivery, went for the free, made it, switch it, missed it, completed. So Khalil once again doing a great job. You know exactly they need to bowl 1 good over here after that 3 expensive over. They need to get 1 good over here badly. So slight a bit of change in field then. The long off fielder coming inside the ring. The cow point fielder coming a little bit squarer in front of the wicket down at deep extra cover. A very interesting field set. Khalil again. Left arm. Round the wicket. Coming down the track, using his feet quite nicely. Oh, well fielded there by the fielder. And they completed a couple of runs. Well fielded in the sense, because it's not so easy here for the outfielder. We can see that some up and downs, some stones are out there in the extra cover region. So Nasir is one of the good fielder in the side. Fields the ball very well. Just judging that the movement of the ball very well. And a couple of runs which is taken in between. Skobar Namuzan to 47 on the board for the loss of 1 wicket. Good partnership is progressing here. This time again, good placement, plays it a little bit down to cow point region boundary for 4 runs. Lovely shot, good placement. The very good placement here from again Rafiq. He's a very good user of the feet, isn't it? I'm watching him whenever he's coming down the track. He's very confident, and this time he's just adjusting the stroke very well. You know exactly the fielder is in the cover point coming towards extra cover, so quite deliberately chip that one by using his feet in the gap, and he got the boundary. 50 comes up. 51 now for team Friends Mysore. Khalil, left arm. Full toss, lofted, but that will going to clear the man.
Nasir, just a spectator, watching the ball going over his head. Again that full toss delivery, the batsman Rafiq played that one with the direction of the wind and he got the distance. And scoreboard jumps into 57 now. After that, a good start from Khalil. He couldn't manage to keep it quiet. The batsman is getting boundary and a 6. The important runs coming here for team Mysore, friends Mysore. Khalil, final time in this over. Left arm to Rafiq. Again using his feet. Lofted that one. It's going to be a one more 6. Consecutive 2 sixes and Rafiq is on fire. And scoreboard jumps into 63 now. Over number 4 completed. And really expensive over. All we can see, all the bowlers are becoming expensive. 17 runs came from that over. The only 1 over, which is the second over, might be the quiet over. But all we can see that all the overs, the ball by the bowlers of Sultan, Montugoli are becoming expensive. 63 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈಸೂರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಂಟಗೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. High scoring game today. The 92, which is the highest run which is scored by the United Patur against Legend Pajir. The highest individual score, which is a 43 runs, which is scored by Altaf of United Patur. Yesterday some good batting performance, 38-37, which is scored in the yesterday's match. But today, absolutely, the condition here is turning out to be a batting paradise. The last over will going to start from the far end. Nauzal will going to bowl that last over from the road end. And Rauf is a batter, will going to take the strike. Again going for the expansive try, chance of run out and throw, slight a bit of difficult for the wicket keeper to gather. So quick run taken by both the batters with that quick single scored numbers on to 64 for the loss of 1 wicket. The partnership which is building up after loss of Arshad Bajal, who starts well, and but after that these two batters played really good game of cricket. Again coming down the track using his feet, wicket keeper misses it. They're going for the single, slight a bit of bat involved of Rafiq when he is using his feet. The wicket number run out taken place. Correction, run out taken place. Rauf is out for Rauf is out after scoring some runs for his team in the form of run out. The new batter in is jersey number 33, Samsir. Samsir is a new batter in. He will go to face Nauzal. Again they're going for the quick single, chance of run out, and Nauzal this time misses the stumps. Both the batters are completed a single. With that single, score moves on to 65. Last over is in progress. Nauzal knows that's very important to bowl the one good over here. After that, ball expensive over. One day Ali, who bowled the second over, is a little bit economical. Otherwise, all we can see that runs conceded. Coming down the track, using his feet nicely down to deep long off region. They're looking for the second. In comes a throw from the fielder, but the throw is not good enough. And a couple of runs which is taken by these two batter. Good running between the wicket. With that couple of runs, Koba numbers on to 67 on the board for the loss of 2 wickets. Slight a bit of overcast condition, cloudy weather. Nauzal bowls. Rafiq once again played that, reverse it quite well, and the fielder behind the ball. One of the fielder will go in to cut it off just inside the boundary line, but ample time for the batter Rafiq to complete that couple of runs. With that couple of runs, Koba numbers on to 69.
for the loss of 2 wickets. So last time in this over. Final time, final delivery of the innings of Friends Mysore. Rafiq coming down the track. Wicketkeeper completes the formalities of making stump out, and umpire says it's a wide. The wide in the sense, 1 extra run, and scoreboard now moves on to 70. But very good innings which comes to an end here for Rafiq. Excellent. He played a responsible innings after the fall of wickets of Arshad Bajal. Being the opening batter, Rafiq played a good innings. He scored a 32 valuable runs. Well played innings there from Rafiq. So last ball remaining. New batter. Just number 5. Ansar will going to take the strike. So far it's a good over from Nauzal. Last delivery, cotton ball opportunity there. And the wicket bowler wanted to take the catch ball, just having a fingertips. Ball went into the umpire's body, and just a single. Good bowling there from Nauzal. Compared to the previous match, he is very expensive, but in this particular match he bowled a very good last over for his team. So 5 overs completed, but still team legends, team Friends Mysore, they got a very good run. 73 they scored, and they set a target of 74 to win the match for Sultan Montugoli. One more high scoring game. 72, which is the total score, correction, 73, which is a target for Sultan Montugoli. And we will see how Sultan Montugoli is going to get this big total. We'll take a short break here, and after the short break, my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 73 रनों का लंबा सा लक्ष्य इस वक्त,
सुल्तान मोंटुगोली के सामने फ्रेंड्स मैसूर ने रखा है और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई 14.60 रन्स पर ओवर। दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री विद द हेल्प ऑफ 10 विकेट्स। द प्रेजेंट इक्वेशन शोस फॉर सुल्तान मोंटुगोली। और देखते हैं क्या सुल्तान मोंटुगोली के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। अरशद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार सादिक, जबकि अली नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद। पहली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट, पैरों पर गेंद टकराई। गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट गली पर, जब तक गेंद को वहां पर फीड किया जाता। 1 रन का इजाफा लेग बाय का इशारा पार का और लेग बाय के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के। और अब अली जो कि सामना करने के लिए तैयार, जबकि अरशद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए कुछ हद तक फील्डिंग में जमावटों करते हुए। लॉन्ग ऑन फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात तक किया गया है। कोई लॉन्ग ऑफ नहीं, मिड ऑफ पर एक फील्डर मौजूद 20 गज के दायरे के अंदर। और अरशद इस बार गेंद को उछाला इनटू द गैप और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर, जब तक काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्ड की जाए। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, स्कूप किया था खूबसूरती के साथ फील्ड क्लियर करते हुए और 2 रन इस बीच अली प्राप्त करने में सफल। और इन 2 रनों के साथ उनका खाता जो कि खुल चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार अरशद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद रिवर्स शॉट, धीमी गति की गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर। 2 गेंदें सिर्फ 2 सही गेंदें उनकी पारी में फेंके जा चुके हैं। अरशद फिर से एक बार तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद फिर से कुछ हद तक धीमी गति से आई थी, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद उनके पैरों पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गई और वहां विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद आउट, दिस इज एन एब्सोल्यूट आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, एक्स्ट्रा क्विकर कंपेयरिंग टू द प्रीवियस वन फ्रॉम अरशद। और एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और आखिरकार इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। एक बार फिर से अरशद की गेंद, धीमी गति की गेंद को इस वक्त खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस, स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और इस ओवर में अंतिम बार अरशद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। फिर से एक बार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए और सादिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ एनफील्ड क्लियर करते हुए और गेंद कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ द बैक फुट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट और गेंद कवर पॉइंट और बैकवर्ड थर्ड मैन के दरमियान इस वक्त होते हुए सीधे सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सादिक के बल्ले से लगता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। थोड़ा सा विड्थ था और इस विड्थ को कबूल न करते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनफील्ड क्लियर करते हुए बल्लेबाज ने और 4 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए बैकवर्ड थर्ड बैट सीमा रेखा से बाहर गेंद जा चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति 9 रन बन चुके बिना किसी नुकसान के। इस वक्त सुल्तान मोंटुगोली फ्रेंड्स मैसूर के खिलाफ और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी और गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए हमसे दूर वाले छोर से यानी रोड एंड की ओर से अंसार और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज अली। फील्डिंग इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलती हुई और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अंसार जो कि अरशद के छोटे भाई हैं इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त अली और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे बल्लेबाज द्वारा, थोड़ा सा मिस जजमेंट और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार अंसार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर। अरशद ने गेंद को डाइविंग लगाकर गेंद को रोका, थ्रो पहुंचा और इस बार खतरा हो सकता है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। वाइड का भी इशारा हो चुका है। जोखिम भरा रन चुराना चाहता
बल्लेबाज अली ने भुगतान उन्हें करना पड़ा इससे पहले कि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे। सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट कीपर अरशद का गेंदबाज उनके छोटे भाई अंसार के हाथों में, और अंसार ने थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट यहां पर चटका दिया। तो पहला विकेट गिर चुका है, मोहम्मद अली की पारी समाप्त और 10 रनों पर पहला विकेट खो चुका है। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नए बल्लेबाज शाफी इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए वो इस वक्त साथ निभाएंगे सादिक का। तो शाफी इस वक्त नॉन स्ट्राइकर की ओर कदम बढ़ाते हुए और सादिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अंसार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सादिक के लिए अगली गेंद। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, चूंकि गेंद को ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जहां तक एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप का सवाल है, इस वक्त एक साझेदारी की उन्हें सख्त जरूरत और गेंदबाज वाइड का इशारा अब हो चुका है। तो कुछ हद तक सोच विचार करने के बाद वाइड इस वक्त घोषित किया अंपायर ने और 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बीच कुछ बातचीत वहां पर जारी है अंपायर से खिलाड़ी इस वक्त कुछ कहते हुए फ्रेंड्स मैसूर के खासकर अरशद और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। तो नो वाइड और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। वाइड को रद्द कर दिया गया है और इस बीच गेंदबाज अंसार तैयार इस वक्त सादिक के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा इस बार और अपने दिशा को तराशते हुए इस वक्त गेंदबाज अंसार 2 वाइड इस ओवर में अब तक वो फेंक चुके हैं और इस वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अंसार फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई वाइड एक बार फिर से। तो लगातार वाइड यहां पर फेंकते हुए गेंदबाज अपनी सही लेंथ और लाइन को यहां पर तराशते हुए 1 रन और जुड़ेगा उनके खाते में। 12 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, एक लंबा ओवर यहां पर प्रगति पर अंसार का। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार रहा, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लंगोफ पर मौका हो सकता है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। सादिक ने गेंद को उछाला था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और लंगोफ फील्डर को थोड़ा सा दौड़ जरूर लगाना पड़ा अपने दाईं ओर, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ सीमा रेखा के अंदर लपक लिया लंगोफ पर और इस कैच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है। सादिक का दूसरा विकेट खो चुका है जबकि स्कोर है उनका 12 रन। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नौजल नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है। अंसार की गेंदों का वो सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा और वाइड नंबर 4 इस ओवर में फेंकते हुए गेंदबाज अंसार। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अंसार की गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर, क्लीन कलेक्शन सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और इस वक्त सामना करते हुए शाफी और अंसार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए
कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा। वाइड नंबर 5 इस ओवर में फेंक चुके हैं अंसार और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चुके और गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर। 1 रन का इजाफा और वाइड का इशारा अंपायर का। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर। एक लंबा ओवर इस वक्त प्रगति पर अंसार का। तो विकेट कीपर अरशद जो है इस वक्त कुछ समझाते हुए अपने छोटे भाई अंसार को कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करनी चाहिए और इस वक्त गेंदबाज अंसार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौजल के लिए यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा just connected that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style over long off fence for a huge one। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक लगता हुआ इस वक्त नौजल के बल्ले से। नो बॉल का इशारा इस वक्त हो चुका है तो 1 रन और मिलेगा नो बॉल के रूप में। तो 7 रन यहां पर जुड़ेंगे इस गेंद पर। 6+1 7 रन एडेड टू द टोटल। 2 balls left in this over और 24 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ। और गेंदबाज अंसार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। अंतिम गेंद लेकर अंसार इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शाफी सामना करने के लिए तैयार। अंसार लेग स्टंप से बाहर, एक और वाइड। 26 18 रन ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर सो फार। 18 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं और एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी है और अंसार इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर और शाफी ने गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची तेज रफ्तार के साथ बल्लेबाज को वंचित करते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर नंबर 2 के समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। It's 26 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs. 73 the target. That means 47 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs with a required run rate of just under 16 runs per over. That means in exactly calculation, it's going to be 15.66 runs per over. तो गेंदबाज इस छोर से कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त सुल्तान मोंटेगोली की बारी में और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार गेंदबाज बल्लेबाज नौजल। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज शमशीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 18 गेंदें बाकी और 47 रन और चाहिए विजय के लिए। 47 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। शमशीर लेग स्पिन गेंदबाजी, पहली गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड गेट। फॉलो थ्रू में अपने बाईं ओर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करें गेंदबाज शमशीर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3rd इन प्रोग्रेस। और शमशीर इस बार शाफी के लिए
दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बाउल्ड आउट, और इसी के साथ शाफी का विकेट यहां पर गिर चुका है। He just wanted to play that one with a reverse shot, not succeeded. और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे सीधे जा टकराए लेग स्टंप पर, और इसी के साथ शाफी का विकेट का पतन यहां पर हो चुका। तीसरा विकेट गिर चुका है 27 रनों के ऊपर। इट्स 27 for 3। तो अली नंबर 2 यानी इस बार हैदर अली का आगमन यहां पर हो चुका है सुल्तान मोंटुगोली की ओर से, और देखते हैं हैदर अली यहां पर किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। तो इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शमशीर दाहिने हाथों पर द विकेट लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज हैदर अली के लिए, और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा इस बीच, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। 29 द स्कोर नाउ, 3 विकेट्स डाउन, और फिर से एक बार गेंदबाज शमशीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हैदर अली के लिए फुल टॉस, लेकिन ठीक तरह से इसका फायदा उठाने में असफल। 1 रन मात्र मिलेगा, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 30 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 30 for the loss of 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। शमशीर फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद शमशीर की ड्राइव किया मिड ऑफ पर, रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए वापस खींचते हुए सुरक्षित रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शमशीर फुल टॉस टॉप एज, लेकिन इस बीच मिस जजमेंट, और बल्लेबाज यहां पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और यशस्वीतम दूसरा रन प्राप्त करते हुए। गेंद टिप्पा खाने के बाद स्पिन होती हुई अपने दिशा को बदलते हुए, और जब तक इनको अपने पीछे की ओर जाकर फील्डर दूसरे प्रयत्न में फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहां पर प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 for the loss of 3 विकेट्स। शमशीर अंतिम बार इस ओवर में ढीली गेंद, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल, लेकिन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। तो 2 गेंदें इस ओवर में बाकी है, और शमशीर इस बार वाइड अगेन। 34 नाउ, काफी रन वाइड के रूप में, एक्स्ट्रास के रूप में यहां पर प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज फ्रेंड्स मैसूर के, और इस बीच शमशीर एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार बेहतर गेंद थी, दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल एट दिस सिचुएशन। 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, ऑन साइड पर मोड़ने के प्रयास में चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज शमशीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। लास्ट टाइम इन दिस ओवर शमशीर कम्स। Still the last ball remaining. First ball single, second ball out. So still 1 ball left. और
It's okay. Over has been completed. 3 overs gone, and after 3 overs, it's 34 for the loss of 3 wickets, and still 41 more runs now they have to score for victory in remaining 12 balls. That means in remaining 2 overs. Just talking about the next match, Fighters Arcana will take over Legends Pajir in the next match, and because of that, I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss procedure. Fighters Arcana ಹಾಗೂ Legends Pajir ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So fourth over starts. Tanzeeb, the bowler starts the fresh proceedings from the road end, और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के लंबे कद के बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त अली हैदर अली इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 12 गेंदे 41 रन और चाहिए विजय के लिए. First ball comes. Just gone for a loft at the last moment, not succeeded. गेंद पहुंची इस वक्त फाइन लेग पर. जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में हो चुका है, और लेग बाय किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 35 रनों पर. निस्संदेह जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त चौके और छक्के यहां पर सुल्तान मोंटुगोली को इस मैच में वापस ला सकते हैं. अभी भी 40 रनों की और दरकार. 11 गेंदें बाकी. 40 रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 11 बॉल्स. और इस बीच गेंदबाज तंजील ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद इस वक्त. मिस जजमेंट इस वक्त बल्लेबाज द्वारा गेंद को छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही गेंद घोषित इस वक्त अंपायर द्वारा, और अगली गेंद के लिए तैयार. इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर टकराई, घुटने के बल बैठते हुए गेंद कौन साइड पर पुल करना चाहता चूके, और स्विंग करना चाहता चूके, और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में. रन नहीं मिलेगा. 3 बेहतर गेंद इस ओवर में तंजील फेंक चुके हैं. इस बार एक बार फिर से बेहतर गेंद, पैरों पर टकराई, स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके. थ्रो जब तक विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे. लेग बाय के रूप में 1 रन दोनों बल्लेबाज पूरा कर चुके थे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज तंजील एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं. 1 रन मिलेगा जब तक गेंदबाज तंजील अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे. दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे. 37 रन 37. 5 बेहतर गेंदे इस ओवर में तंजील फेंक चुके. इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौजल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. इस बार चूके, और इसी के साथ बेहतरीन ओवर के समाप्ति. सो फैंटास्टिक ओवर केम टू एन फ्रॉम तंजील हु कंसीडर जस्ट 3 runs in this over. After 4 overs, Sultan Montugoli are now still struggling. 37 for the loss of 3 wicket, and in last over 6 sixes required in the last 6 deliveries. 6 छक्कों की जरूरत अंतिम 6 गेंदों पर, यानी 36 रन चाहिए. 36 runs needed from last over. और अंतिम अवकाश, the last chance in front of the batsmen of Sultan Montugoli. और यहाँ पर गेंदबाजी पर उतरते हुए गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से हारिस गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. 6 sixes required in the last 6 deliveries. 36 to get from last over. First ball comes. हैदर अली सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद. ये गेंद चूंकि आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा था, और गेंद को फील्ड कर लिया गया.
शॉट तो फाइन लेग पर 5 गेंदे 36 रन और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंड्स मैसूर की विजय निश्चित है अगर गेंदबाज इन 5 गेंदों में कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है और देखते हैं इन 5 गेंदों में क्या होता है। लेग स्टंप से बाहर, नो बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है अब 38 रनों पर। 38 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ड्रिवन मिड ऑफ की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। 39 नाउ, 4 balls remaining and 34 runs required from 4 deliveries. फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली करते हुए विकेट कीपर अरशद और गेंदबाज हैरिस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। इस बार डॉट के वाइड का इशारा, इस बीच 1 रन का इजाफा। 39 ಫೈಟರ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। इस बार गेंद को उछाला लंगॉन फील्डर के हाथों में, विकेट गिर चुका है। 39 for 4 now। ದಯವಿಟ್ಟು ಫೈಟರ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ। ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಟರ್ ಸರ್ಕಾಣ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ। So 3 balls left in overall calculation in their innings और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। Aris lofted and this time it's gone over the fence. I think it could be gone over the fence. Just we have to wait for the umpire signal. So umpire, what is the decision? No 4. In fact, only a couple run added to the total. It stopped very well inside the fence. This time turns it away और again इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर फील्ड कर ली गई है। 1 रन का इजाफा। 42 for the loss of 4 wickets. This time turns it away and no run scored. That's it. 30 runs exactly victory. 30 runs comprehensive victory for Friends Mysore against Sultan Montugoli, the host team, and with that 30 runs comprehensive victory, Friends Mysore back the complete points. So match number 4 of this tournament has been came to an end, and the man of the match of this match award goes to the batsman, the player who batted very well. Rafiq scored 32 runs, and because of his fantastic batting knock of 32 runs, Rafiq enjoyed the man of the match. I request Mr. Rafiq, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. So match number 4 ended and match number 5 is now going to start. Fighters Arcana will takes over Legends Pajir और मैच की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेकर छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब अगले मैच यानी मैच नंबर 5 की शुरुआत होगी आज के दौरान। धन्यवाद, थैंक यू।
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಆಸಿಫ್ ಪತಿಂಜಾರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. Heartily welcome to Mr. Asif, Sports Planet, the proprietor of Sports Planet. Mr. Asif, heartily welcome to you, sir. Thank you. Dhanyavad. Welcome back, and everything is ready for the match number 5. Fighters Arkhana takes on Legend Pajir, and here is Legend Pajir bowling first, and the first ball of the match. The bowler will go into ball first ball, right arm around the wicket. Again going for the drive. They're going for a quick single, chance of run out. Oh my goodness, a throw which is not really up to the mark. All we can see that both the batters are in one side when the fielder fields the ball, but he returns the ball in the wrong end. Instead of returning the ball to the striker's end, he tried to return the ball on the non-striker's end, so that batter survived. Ishaq got his first run. Right arm around the wicket. Again the lovely delivery, just angling outside the line of off-time calling round the wicket, and the batsman completely missed that delivery. Rizwan from his bat, the wicketkeeper behind the stump did the rest. Right arm round the wicket. Again very good delivery right on the block hold, and the batter Rizwan managed to get the single for that. With that single scored Namuzan to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Oh, lovely delivery, beautifully bowled, perfect one, and right on the block hold. Again the great start by the bowler. Bowler name please. Shine. Shaikh balls, and again going to be a wide, one more extra. With that extra scored Namuzan to 3 on the board. Great shot there from a young man, Shaikh. Again that ball is going to be a one more dotted delivery. Batter wanted to get that one into the third man region by playing a switch it. Missed it completely. Great start from young man. Just 3 runs so far in this over. Tidy bowling performance, and for Legends Pajir, they lost the match, first match, and they are playing their second match. Again that ball is going to be a wide signal by umpire. One more addition. With that extra score, Namuzan to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Right arm from the wicket. This time he lofted, but I don't think he'll go and get the distance, but fielder will go and get the ball. And nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement there from the batter. Ishaq is back into pavilion. Went for the big shot, a good connection, but we played against the direction of the wind. After completion of over number first, it's 4 on the board for the loss of 1 wicket.
Team Arkhana has got a slow start. Both the teams have lost their first match in the league stages, so that it's very important for both the teams to get one victory here so that they can open the accounts in points table. And previous match hero, one who played a good innings for his team, is coming to the middle, Sharif. Bowler will go into ball the second over. Imran. From the road end, right arm round the wicket. After that fielding restriction which is over, we can see that fielder down at mid wicket, long on, long off, and deep cow point. And the first ball, it's going to be a warm up delivery of the afternoon. Wide call by umpire. One more addition. Scoreboard numbers on to 5 for the loss of 1 wicket. Again, the went for the drive. Good connection towards the mid-wicket region, but not more than a single. Protection is there in the deep mid-wicket. Kiran, the fielder there in the mid-wicket, fields the ball, returns the ball quickly to the hands of wicket-keeper. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 6 on the board. Imran to Sharif. Again, that ball is well within the reach of the batter. Misjudgment there from the batter Sharif. He left the ball. The wicket-keeper kept the ball back to bowler. Much required dotted delivery from Imran. Right above over the wicket. One more single. With that single, scored Namuzan. Dotted delivery. And again, Sharif couldn't manage to judge the line of the ball. And a very quick delivery came from the hands of Imran. And so far it's going to be a good start there from the bowlers of Legends. Pajir has got some good start here. Far above side and above stump. This time punishable from the umpire. Wide call by umpire. One more addition. Addition of that single, scored numbers on to 7 on the board in the over number 2 in progress. Imran. This time again Sharif wanted to play across the line, misses the line completely, and it's turning out to be a great over. 2 deliveries remaining still in this over of Imran. The ball 2 wide deliveries. Sharif back on strike, and Imran. Looks like he's got a slight bit of problem with his wrist while he's delivering the ball. Imran. Balls again. The misjudgment by Sharif again and again. In this particular over, Sharif couldn't manage to judge the line of the ball, especially when the ball is outside the line of off stump. And bowler again having a slight bit of pain in his shoulder. Right arm round the wicket. This time Sharif, this time he got a connection, but protection is there in the deep long off, deep cow point region. Just a single, and good over there from Imran. After completion of over number 2, searching for the right track, team fighters Arkhana are 8 on the board. They're going exactly 4 runs per over. And that was a 2 very good overs ball by the 2 opening bowlers. And now Imran looks like he wanted to get some treatment. He wanted to get a rest there after that over. The substitute is coming to the ground, just number 1, replacing Imran. The problem with this bowling arm, right arm. Zakaria will go into bowl the 3rd over of the innings of team fighters Arkhana.
It's a overcast condition, cloudy weather condition, no that much of sunshine in this particular cricket ground. Panchayat Cricket Stadium here in Mudipu. And Zakaria will go into ball round the wicket to the right-hander batter. Sharif is on strike. Zakaria. Right arm round the wicket, places that one down to long off region. The fielder is so quick, a fumble and a completed couple. What could be that long off fielder is in action, but extra cover fielder just running across and couldn't manage to collect that one neatly, so that Sharif completed a couple of runs. With that couple of runs, scored was 16 on the board. Again this time misfield by the fielder, and because of that boundary comes up here. Welcome boundary for team of fighters Arkhana. The much required with the run which is dried up. With that boundary, scored Namuzan to 14 on the board. For the loss of 1 wicket. Over number 3 in progress. Zakaria already conceded 6 in 2. Sharif started to open up a little bit in this particular over. Just getting some runs in this particular over. Zakaria just watching the field set and then back to his body mark. Pass the umpire. Right arm round the wicket. Again plays it down to short cover point region for a easy single by Sharif. With that single, scored Namuzan to 15 in the over number 3 in progress. That brings Rizwan into strike now. Rizwan came as opener for the side, didn't got enough strike. Again drives that one off the back foot, down to deep extra cover region. This time they're looking for the second, and quick recovery there from the fielder. Once he is fumbled, but again ball which is not too far from the fielder. Only a single. With that single, scored Namuzan to 16 on the board. Zakaria. A lovely sweep shot down to deep square leg region, and only the single there. Oh, that was a really comedy of error there from the fielder. Instead of returning the ball to the hands of wicketkeeper, and the fielder hitting the back of the square leg umpire, and umpire all in sudden is surprised to see that something is hitting his back. 18 on the board. Zakaria went for the reverse sweep. They're going for the quick single then, and with that single, scored Namuzan to 19 on the board. Over number 3, which is comes to an end. So 3 gone after completion of 3 overs. So searching for the right track. Team the friends Arkhana are managed to score. Fighters Arkhana are 19 on the board. 3 overs completed. Good over there from 3 bowlers. But this is one slightly expensive over, and 11 runs came from that over of Zakaria. You are watching match number 5 of day number 2 of this prestigious Sultan Premier League 2023, which is proudly organized by Sultan friends Montugoli in association with the Mudipu Cricket Association, as they are celebrating their 11th anniversary. And so far tournament which is progressing very successfully. After the very successful day number 1, we are witnessing some good performance in this day number 2 of this prestigious cricket tournament. Kiran will go into bowl 4th over of the innings of team fighters Arkhana. Short third man, short fine leg, short backward point, deep cover point, deep extra cover.
There is a fielder at wideish long on. Starts with the wide. One more extra then with that extra score, but Namuzan to 20 on the board for the loss of 1 wicket. Kiran. Balls again. That ball is slide a bit of outside and on black stamp, and but well within the reach of the batter. The wicket keeper behind the stump, making the stump out. So wicket gone here of Sharif, and again the team fighter Sarkhana losing their wicket. Big wicket of Sharif. And at last Kiran managed to find his line and land and got a wicket in the form of stump out. It's 20 on the board for the loss of 2 wickets. Slow progressing here for team fighter Sarkhana. And the new batter in is hero of the previous match, Numan. Played a very good innings in the previous match against team Sultan Montugoli. Now he came into strike with some responsibility of getting some acceleration in the run rate as Kiran again continues. The beautifully ball, perfect one there from Kiran. Very good line to ball to the fresh leg, and Numan wanted to get the ball into the deep long on because he's a very good striker of the ball in front of wicket. And here is again drives that one beautifully down to mid wicket region, but there is a protection in the deep. They're looking for the second. In comes a throw, wide throw coming from the fielder, and couple of runs which is completed by Numan. With that couple of runs, Skobar moves on to 22 on the board. 22 for the loss of 2 wickets in the over number 4 in progress. Kiran again. Balls right arm over the wicket to Numan. Numan this time right to the hands of cover vision. The intention of Numan to get that one over the cover fielder, but couldn't manage to get the elevation right, timing right, mistimed cricketing stroke, lofty stroke, and Kiran gets one more wicket here. And Kiran in this particular match is looking different bowler, and already got his very good line and length, and getting some wicket for his team. Wicket number 3 gone of team of friends. Little correction for fighter Sarkhana. The jersey number 12 is a new batter in. There's some drives that run down to mid-wicket region. Lovely placement. There's a 2 fielders, but still ball is getting the placement right between wideish long on and a mid-wicket for 4 runs. Welcome boundary comes up here for the batter, and scoreboard moves on to 26 now. Kiran continues. Again inside edge of the bat, ball will go into travel towards a short fine leg region. One more addition total, 1 more over completed. Over number 4 gone after completion of over number 4. Team fighters Arkhana are still struggling to get these runs, 27 and 4 overs completed. So last over remaining.
So new batter Dawood has got one boundary in the previous over. The last over going to start from the commentary box end. The last opportunity for team fighters Arcana to get some acceleration in the run rate. The spinner, as per as rules and regulation of this cricket tournament is concerned, they need to bring one spin bowlers, leg spin bowlers. So a last opportunity as well for the batters to get some good score. 27 so far runs. Razi got a ball inside. So looks like Imran will going to come in after he got some treatment for his shoulder. He was just again joining their teammates, standing at mid-on region. Drazi will going to continue from the commentary box end. First ball of the over number 5. Dawood is on strike. First ball. This time, short pitch delivery and no ball called by umpire. No ball called by umpire, and reason the 6 fielders in the onside region, and so everything seems to be ready here to bowl this next ball. Right arm over the wicket, Razi bowls. Tried to make a room to play the shot, but he played that one back to bowler so that he easily, the bowler on his follow through makes the run out, and that's the end of innings of Rizwan. He came as an opener for the side, but is back into pavilion, not really getting that much of runs from his team. He's not getting that much of strikes as well. So he's back into pavilion. Dawood back on strike. 5 balls remaining in the innings of team fighters Arcana. The next match number 6, will be played between United Patur versus Sultan Montugoli. So that I request all the players, please complete the signatures as soon as possible. Sachin is the new batter in, came into middle in the non-strikers end. 5 balls remaining. Dawood back on strike. Drives that one powerfully down to deep long on region, but not more than a single. Good collection from the fielder in the deep. Fortunate things have happened here for fielding team. Dawood wants a second, and even that was a wide throw which is hitting the umpire, but ball straight to the hands of the bowler. That time Dawood is out of the crease. One more wicket is back into pavilion. .30 for the loss of 3 wickets, 4 wickets in fact, is back into pavilion. So jersey number 17 is a new batter in. This time driven that one up easily just over the head of the cow point fielder, but defects the cow fielder will going to cut it off, but here is ample time for the batter to complete a couple of runs. The Sadiq is a new batter in, but here is a Sachin getting important couple of runs for his team, and scoreboard moves on to 32 on the board for the loss of 5 wickets.
Razi. Last three deliveries remaining in the innings of fighters are Khana. Coming down the track, using his feet, not quite getting that one from the middle of the bat. Mistimed stroke there from Sachin. One more single. With that single, score numbers on to 33. Last two deliveries remaining. Sadiq. Sadiq is on strike. Razi balls, short pitch, but couldn't manage to take the advantage of the delivery. Just a single for Sadiq and for his team. And with that single, score numbers on to 34. Last delivery of the innings of team fighters Arkhana will going to start from the commentary box, and the final delivery Razi coming down the track using his feet. The fielder will going to get there, and after one bounce both the batters have completed two valuable runs. So Ivan is looking for the third run out taken place. Sadiq is the man is back into pavilion. So completion of over number 5. Total score 37 in fact. 37 target for team Legends Pajir. Fighters Arkhana managed to score 36 runs in the stipulated 5 overs, and they set a target of 37 for Legend Pajir to win this match. And wait and see how well Legend Pajir will going to get this total, because the bowler did a great job bowling very tidy overs, and now all up to the batters of Pajir to get that moderate total of 37 to win the match. And wait and see how fighters Arkhana will going to fight back from their bowling when they're going to defend this total. We can take a short break here, and after the short break my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So 37 the target. The target for Legend Pajir, set by Fighters Arkhana. नौजल पहली गेंद इस बार गेंद को खेल दिया, और गेंद जब तक फील्ड ऑफ पॉइंट पर एक रन से बल्लेबाज को इस बीच नहीं मिला. एक रन मिल चुका है शायद, तो एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के, और 37 रन इस वक्त बनाने
लेजेंड पजीर को। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, जबकि सामना करते हुए इस वक्त इमरान। रमेश का खाता पिछले गेंद पर यहाँ पर खुल चुका है। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, लेकिन यहाँ पर अपील करते हुए, लेकिन देखने वाली बात है कि शायद गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है या नहीं। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 1 रन बिना किसी नुकसान के, 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। निस्संदेह बेहतरीन गेंद थी इस वक्त, गेंद को खेलने में पूरी तरह चूके, भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकरा। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑन पर, रन से नहीं मिलेंगे। बेहतर गेंदबाजी, बेहतर फील्डिंग वहां पर। और स्कोर यहां पर रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद को इस वक्त उछाला, इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद पहुंचे बैकवर्ड थर्ड मैन पर। 1 रन इस बीच मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत, अगर लेजेंड पजीर को 37 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 5 ओवर में। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर लेजेंड पजीर। और पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और एक बेहतर ओवर इस वक्त प्रगति पर गेंदबाज द्वारा। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से गेंद बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त खेलते हुए और खासकर एनफील्ड क्लियर करने में सफल। वाइड स्लॉन्गों पर जो फील्डर थे उन्होंने काफी दौड़ जरूर लगाए, लेकिन गेंद को जिस तरीके से उछाला था निस्संदेह काबिल तारीफ। और गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा को पार कर चुकी है, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज रमेश द्वारा। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन जोड़ चुका है इस वक्त लेजेंड्स पजीर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस स्कोर्ड बाय लेजेंड्स पजीर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। 37 the target, that means exactly 30 runs more now they have to score for victory in remaining 4 overs. That means in remaining 24 deliveries and still they got all 10 wickets kept intact. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए नया ओवर प्रारंभ होता हुआ उनकी पारी में। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, जबकि सामना करते हुए इस वक्त इमरान। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। रिजवान गेंदबाजी शुरू करते हुए और गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त इमरान के बल्ले से लगता हुआ, गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट किया और खूबसूरती के साथ गेंद को उछाल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर। 13 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और रिजवान गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इमरान के लिए
दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर, और 24 और रन चाहिए विजय के लिए। स्टिल 24 runs they have to score for victory, more in fact, in remaining 3+ overs. रिजवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों राउंड द विकेट, ये गेंद ढीली गेंद है लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल, और नो बॉल का इशारा अंपायर का, क्योंकि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकली थी, लाइन के बाहर गुजरी थी, और इस बीच नो बॉल का इशारा यहां पर होता और नो बॉल के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और रिजवान इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार टॉप एज, विकेट कीपर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, 15 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर आरंभिक साझेदारी यहां पर जमती हुई लेजेंड्स पजीर के लिए, और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो 22 रन और चाहिए इस वक्त विजय के लिए, और रिजवान ये गेंद अच्छी गेंद, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, गेंद की उछाल को पहचानते हुए अंतिम अक्षर में स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ। 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं, 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस, और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद उछाला लंबा सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। छक्का नंबर 2 इमरान के बल्ले से लगता हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा, he just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style hard and high, and the ball went many a miles from the fence for a huge one. That is an absolutely massive 6 came from the bat of Imran, और इस छक्के के साथ 22 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस टॉप एज, लेकिन फील्डर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, डीप एक्स्ट्रा कवर पर थोड़े से पीछे तैनात फील्डर, और जब तक एक टिप्पा खाने के बाद आफ्टर फर्स्ट पॉइंट गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो सेकंड ओवर हैज बीन came to an end. 16 runs came from this over from Rizwan, and after two overs Legends Pajir are now looking in a commanding situation. It's 23 without loss after completion of 2 overs. Just 14 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 balls, and at this situation the equation seems to be much easier for them. So third over starts in the rings, or just talking about the next match, United Patur will take over Sultan Montugoli in the next match, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure with organizers. So back to this game, third over starts in the innings. शरीफ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, रिवर्स शॉट प्लेड, and this time it just picked the gap firmly. Boundary results, it's 27 now. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಂಟುಗೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So perfectly struck came from the bat of इमरान. रिवर्स शॉट इस वक्त खेला था खूबसूरती के साथ, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, डीप बैक थर्ड मैन पर, और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और अगली गेंद लेकर शरीफ इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट एक बार मिसफील्ड गली फील्डर के हाथों से, काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद उनकी ओर आई थी, लेकिन गेंद को ठीक तरह से वो फील्ड नहीं कर पाए। इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 28 now for the loss of no wicket. Fantastic opening partnership is now building up here for Legend Pajir, और
शरीफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, जस्ट वांट टू प्ले रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, नजदीकी मामला और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। Unnecessary single costing one of them back into the pavilion. So Ramesh, the man dismissed, and at last Legend Pajir are now lose their first wicket. Is out, run out, and it's 28 for 1. So समीर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और इस बार ये गेंद काफी ऊंचा उछाला है गेंद को और लपक लिया गया है सीमा रेखा के अंदर। इमरान का स्ट्रोक इस बार सीमा रेखा को पार करने में पर्याप्त नहीं और गेंद को वहां पर लपक लिया गया। तो एक बेहतरीन पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है इमरान का और उन्होंने बनाए कुल मिलाकर 20 रन। He scored 20 runs into his credit, including 2 sixes and 1 boundary. After being playing a fantastic knock off their side, he is backing to pavilion. So second wicket fallen, and the score is now 28 for the loss of 2 wickets. Just 9 runs now they have to score for victory. And 2 overs to go after this one. New batsman is now comes out to the middle. नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है क्रीज पर, सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज शरीफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट ड्राइव किया, गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद निकले इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन का इजाफा, बेहतर फील्डिंग वहां पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स and this is the third over in progress in their innings. 1 ball left in this over. Lefty batsman is now going to face और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ का गेंदबाज शरीफ की गेंदों का, और शरीफ दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। Lofted, and this time I think it's crossed over the fence for a boundary. Perfect struck from the newcomer, and the side total is now moving up to 33 for the loss of 2 wickets. 3 overs completed, 33 on the board. They are looking in a commanding situation. Just 4 runs more now they have to score for victory for Legends Pajir, and still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in the innings. 2 over का खेल बाकी सिर्फ 4 रन चाहिए विजय के लिए। Legends Pajir ऐसा कहना पड़ेगा अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज छोटे कद के खिलाड़ी जो कि इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज समीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। Here he comes. First ball. Off stump से बाहर, wide, 1+1, 2 runs added. And that couple runs brings Legend Pajir more nearer to the victory. And now it's 35, just 2 runs to get from 12 balls now. और इस बीच गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। Swept down to a third man, half stop. He completed a single, and that single brings the equality. Scores are now leveled. Just 1 run required for Legend Pajir for victory. और कुल मिलाकर 10 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी है। 1 required in remaining 10 deliveries. और गेंदबाज तैयार,
driven. That's it. 8 wickets comprehensive victory for Legends Pajir against Fighters Arcana, and with that 8 wickets victory with more than 1 over to spare. In exactly calculation, it's going to be 9 deliveries to spare. They reached the target for losing just 2 wickets, and they won the match by 8 wickets. By Legend Pajir against Fighters Arcana, and with that victory, Legends Pajir back the complete points. So match number 5 of today, the day number 2 of this prestigious cricket tournament, Sultan Premier League 2024 has been came to an end, and now the number 6 match is now going to play between United Patur versus Sultan Montugoli, and because of that I request both teams players to please start the match immediately. And we'll be back right after the short break with myself Gopi when the match will going to resume right after the short break. Thank you. Dhanyavad. सो सिक्स मैच स्टार्ट, छठा मैच इस वक्त शुरू होता हुआ। यूनाइटेड पातूर का मुकाबला हो रहा है सुल्तान मोंटुगोली के साथ, और सुल्तान मोंटुगोली ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग यानी बल्लेबाजी करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है। दोनों आरंभिक बल्लेबाज उनके इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए नासिर और सादिक का दोनों आरंभिक बल्लेबाज और गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए गेंदबाज। तो इंतजार है इस वक्त तो मैच इस वक्त शुरू होता हुआ।
इस वक्त मैच नंबर 6 शुरू होने जा रहा है आज इस दूसरे दिन का। तो इससे पहले कि मैच की शुरुआत हो आगे का आपको देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। ये सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much and welcome back. The match number 6 and Sultan Montugoli batting first. First ball, right over the wicket, going for the drive and Nasir misses the line completely. Then wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Altaf, a very good all-rounder for the side of United Patur. United Patur has got a very good track record in this particular tournament, especially they won 2 matches of their league stages. And again that ball just deflected from the leg of Nasir. There is no possibility of any run. Score remains, of course, they yet to open the account. Nasir bowled 2 very good delivery. Altaf bowled a very good 2 deliveries to Nasir. Third time in this over. Right time over the wicket balls. This time tries, lovely shot, beautifully driven and slight a bit of misfield there by the cover point fielder and a good backup by the extra cover fielder. And ample time for the batter Nasir to complete that couple of runs. Nice looking drive there from Nasir, just leaning into the drive, and with his offered there by Altaf, a batsman immediately taking advantage of that delivery. It's a couple of runs here for Nasir and for his team, 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. Altaf, right arm over the wicket, bounce to Nasir. Nasir this time a wicket keeper behind the stump, a quick walk. Absolutely a very good walk done by the wicket keeper behind the stump. Just in a fraction of a second he completes the job. No time for Nasir to survive from that stumping. It's a 2 for the loss of 1 wicket. So new batter in is Ali as a number 3 batter for the side of Sultan Montugoli, the host team. So one fielder is sending back to deep long off region for Ali, one at wideish long on, almost in the mid wicket and long on. And here is next delivery. Ali wanted to reverse sweep that one, and good backup by the fielder, quickly moving to his back, denying this couple of runs here for Ali there. Just a single for Ali in that occasion. With that single scored, now moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Altaf, so far he bowled a very tidy over. In the power play over, it's not so easy to come and bowl when you are not having a one limited option to keep your 2 fielders outside the circle. Right arm over the wicket balls. Lovely delivery indeed there from Altaf. A great over after completion of over number first. Searching for the right track. Sultan Montugoli has got a slow start. There 3 for the loss of 1 wicket in the over number first, which is completed. Sultan, they won their first match against Fighters Arkhana, and afterwards they lost the match against Friends Mysore in their second match, and they're playing there the third match, so that out of 2 they won 1, lost 1, and coming back to the team United Patur, they won their first match, and again they won their second match against Legends Pajir, and they're playing their third match, and they start well with
wicket taking over of Altaf. So second over going to start from the far end, that is the road end. Bowler name please. Tausif, the bowler, will go into ball second over, right arm round the wicket. To Ali, lovely work there from wicket keeper behind the stump. Once again, quick work. And very good safe pair of hands there from the wicket keeper behind the stump. Again, one more very good delivery indeed. One more great piece of bowling there from the bowler. Again, that dotted delivery there from Tausif. And again, now right arm around the wicket. Bowls. Drives that one down to deep long on region. Not more than a single there for Ali. With that single scoreboard moving very slowly. 4 on the board for the loss of 1 wicket. So far, tidy bowling performance here from United Patur. The opening bowlers did a great job so far. Altaf and now bowler Tausif. Oh, different line. Absolutely good line indeed. And again, Aziz behind the stump has been outstanding and not really missing a single opportunity whenever the ball which is defeats the bat. Drives that one down to short mid-off region. Before that, cow point fielder will go to run across this to right. Mustafa the fielder there. One deep, one single there. With that single scoreboard numbers on to 5 on the board in the over number second in progress. So far it's a quiet over. One more quiet over. Last delivery of the over number 2 will go into commence. Ali will go into face next delivery of Tausif. Long on, long off and a deep extra cover. Wow, what a walk. What a fantastic wicket keeping here from Azhar. Absolutely fantastic, I want to say. Just a look at that. Just in a blink of eyes, the wicketkeeper behind the stump did the job. One more good over which is constant, and after completion of over number 2, Sultan Montugoli, the host team, really struggling against the bowling of a disciplined bowling performance, I want to say, from United Patur. 2 bowlers, Tausif and Altaf, bowled a very quiet over. So first over 3, second over also 3. That means a 6. First over 4, second over 2, and altogether 6 on the board. 5, little correction. 5, 3 and 2. It's a 5. Sultan Montugoli have to get some acceleration in the run rate. They got 9 wickets in hand. Nothing much worried about the wickets in hand. But they certainly worried about that run rate, what they got, just 2.5 runs per over. It's definitely going to be not good enough against the formidable batting department of United Patur. So young bowler brought into attack from the commentary box end, just number 7. Ijo will be the bowler to bowl the third over of the innings of Sultan Montugoli. This I want to see the field set for the right-hander batsman. One fielder at short fine leg and one fielder at leg slip. I want to say one is a leg slip and one at short fine leg. One fielder down at deep mid wicket. Long on, long off is that. There's a deep backward point, short cover point. Short third man, deep third man. This time going to be a spectra wide. Absolutely spectra wide. Starts with the wide Iju. And with that wide scoreboard numbers on to 6 on the board for the loss of 1 wicket in the over number third is in progress. Quiet cricket is going on here. The lazy afternoon. And even the weather condition also becomes very cool and calm. This time going for the lofty drive. Ball is in there and catch is completed by the long off fielder. The wicket number 2 which is back into pavilion. Short pitch delivery. The batsman slight a bit of early into the stroke. And Sadiq is the man dismissed. Quite
is unfortunate in the occasion, not quite able to get that one from the middle of the bat. 6 for the loss of 2 wicket. Iju got a wicket. New batter in is Nauzal. One more very good all-rounder for the side of Sultan Montugoli. With some responsibility is walking towards the middle. Not only they wanted one partnership, but at the same time with the partnership they need to get some acceleration of run rate. Iju bowling with a short runner. Pass umpire Naushad. Right arm over the wicket balls. Again drives that one, but lack of placement. Slight bit of fumble from the fielder Mustafa, but no question of run there. With that dotted delivery, score remains on 6 on the board. Over number 3 in progress. Iju. Third time in this over. Right arm over the wicket. This time again going for the expansive drive. Again the ball which is not really coming to the bat. Again mistimed that one inside edge of the bat, and short fine leg fielder fields the ball. No question of any run. 6 for the loss of 2 wickets. Sultan Montugoli. Iju so far bowled a very tidy line, 1 wide in this over. This time he lofted, but this time fielder is there in the long off, and Altaf down at deep long off is the safest pair of hands. No question of dropping that one, and nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement of Nauzal there, because no other option at all. They need to get a big shot. By doing that, they're throwing the wickets. So wicket number 3 is back into pavilion. It's 6 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Iju picked up his 2nd wicket in this over. Young man is showing his excellency in that particular over. New batter in Siddiq, one more experienced campaigner for the side of Sultan Montugoli. Looking for the sweep shot, not really able to defeat that short fine leg fielder who was stationed at short fine leg region. So far it's a quiet over, and only 1 run in the form of wide. 2 wickets last time in this over. To Siddiq. Again punishable from umpire. So 2nd wide of this over. With that extra scoreboard Namuzan to 7. Scoreboard is moving after a long time. From 6 to 7. 7, which is a jersey number of the bowler Iju. The total score is also 7 of Sultan Montugoli. Siddiq is on strike. Again, quicker one, faster one, beaten by the pace. Ball looks like it's deflected from the leg. Leg by call by umpire. Quite over, great over. And 3 runs came from that over. 2 wides and 1 leg by. No run which is scored from the bat. So after completion of over number 3, Sultan Montugoli are really struggling in the middle. It's 7 for the loss of 3 wicket. 8 for the loss of 3 wicket. Last 2 overs remaining in their innings, and this is really going to be a testing time for the batters of Sultan Montugoli. How to get some acceleration. So far there is no boundary, no sixes. Condition slight a bit of encouragement for the bowlers because of cloudy weather condition. There's no wind at all in the ground, and that's why it's a really difficult time for the batters to get big stroke. But you need to appreciate the effort of the bowlers of United Patur, the way that bowled that 3 overs. Again swept that one very nicely down to deep square leg region. Protection is there in the deep, so safest pair of hands, and Iju, the fielder down at deep square leg, fields the ball, and ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard numbers on to 9. Bowler name please. Siraj. Right arm over the wicket. Again the ball deflected from the leg. Chance of run out there, and umpire says it's not out.
Siddiq in last moment he managed to complete that run. It's a very risky run indeed in the occasion. The with that single scoreboard moves on to 10 on the board. For the next match, the match number 7 will go into play between Friends Mysore versus Fighters Arkhana. So that I request both the teams players please complete the signatures as soon as possible. And if you are not mentioned your jersey number, please mention your jersey number in front of your name, so that it's going to be very easy for us to identify the name. One more great delivery there from the bowler Siraj. Right arm over the wicket. Again, the very good collection. Have a look at the wicket keeper behind the stump. Absolutely. He got of course, maybe he's having a Fevicol in his hand. The ball always stuck to his hand. Now the first time I'm saying that. After I'm saying that it's a Fevicol in his hand and he just missed the first delivery from his hand, because that ball is far outside the leg stump and white call by umpire. And the scoreboard is now moves on to 12 on the board. 12 for the loss of 3 wicket. Siraj. Right arm over the wicket. Bounce, lovely slog shape shot down to deep square leg region. And again Iju, the very quick fielder in the deep. No question of that ball getting past that fielder. Just a single off for Ali. With that single scoreboard moves on to 13 on the board for the loss of 4 wickets. 3 wickets in fact. Again, lovely delivery right on the block hold. The batsman has got no room at all to play that one. Got an inside edge of the bat. This is the last delivery remaining in that particular over. So very hard to combine the runs against excellent bowling performance. 13 for the loss of 3 wickets. This time Siddiq gets a single. They switch it, but is not connected that one properly. Only a single. Good over. Tidy over. After completion of over number 4, Sultan Montugoli struggling in the middle. It's 14 on the board. And the last over remaining in their innings. Last opportunity for the batters of Sultan Montugoli to get some acceleration. At least 15 to 20 runs. They needed if you wanted to get a fighting total. Otherwise, it's going to be not a score. It is going to be a dependent, especially when you're playing against one of the favorite of winning this tournament, Team United Patur. And everybody knows that capability of these teams, batting department, bowling and fielding. Now last over will going to start, and Siddiq and Ali are the 2 batters. Will definitely going to look for a big shot. Aziz, little correction. The wicket keeper will go into ball from the commentary box end. So lot of changes in the field now. Protection is given in the offside region. More protection in the offside region. This time at last, what we are talking about. Siddiq breaking the shackle in the last over. That was absolutely perfect struck coming from the blade of Siddiq. They needed that kind of brave and gutsy batting. And Aziz gets a punishment in the first ball itself, and scoreboard jumps into 20 on the board. This time a catch is a call. Oh, what a catch! One of the best catch, I want to say, taken by that fielder. The jersey number 2, absolutely. It's never looks like going to be a catch for the fielder, but the way that he's running back, Siraj, and he's kept the eye on the ball till the last moment. Have a look at that one in a replay. The way that the fielder is running back, it's unbelievable catch, I want to say. It's so easy when you're taking a catch while you're running in front of, but while going back, have a look at that one. Have a look. The ball is almost spinning and changing the direction, and along with that, even Siraj also turning around and taken absolutely a stunner. Outside the run of off temp, and again opportunity of run out. Aziz will going to do the run out. No, yes, he's gone.
The batsman is back into pavilion here. Jersey number 17. Shafi is the batter, is back into pavilion in the form of run out. No other option at all. They have to look for the run. "20" on the board. Last 3 deliveries left in their innings. The new batter in, Arif. Oh, beautifully bowled there by Aziz. Absolutely good comeback here by the bowler point of view. Aziz, they're going for the second. Ali wants a strike back, and his partner need to sacrifice his wicket, Arif. And out. Bowled out. Run out which is taken place in the strikers and no runs scored. One run, okay. 1 run to be added to total, 21 on the board. Ali is back into pavilion, 21. Last over is in progress. Last 2 delivery remaining. Again misses the line completely. Wide call by umpire. Stump out. Wide call. One more addition to the total, 22. Khalil is a new batter in, the experienced campaigner for Sultan Montugoli. 2 deliveries remaining in the innings of Sultan. The left-hand batter will go into face Aziz. Wanted to go for the big shot, misses it completely. One more run out will go into take on place in the non-striker's end. So last ball remaining, Arif the batter will going to be out in the non-striker's end. And the last delivery remaining, and Khalil wanted to take this last delivery. One more Ali walking towards the middle. The last delivery will going to start. Again, lovely delivery and going to be a run out. So that's it. And they completed their 5 overs quota. Sultan Montugoli managed to get 22 in 5 overs, and they set a target of 23 to win the match for United Patur. And absolutely fantastic bowling performance from United Patur. And Sultan Montugoli now they need to defend a small total, and wait and see how well they will going to defend this total, and they need to bowl some miracle bowlings if they wanted to win the match. And wait and see how well Sultan Montugoli will going to defend this total, and wait and see how quickly United Pathur will going to get this total. For the next match, I request friends Mysore as well as fighters Arcana kindly request you to complete the formalities of signatures. Thank you. It's time in change in time commentary box as well. It's over to Gopi. Thank you.
शुक्रिया सतीश। तो यहाँ पर 23 रनों का लक्ष्य सिर्फ यूनाइटेड पातुर के सामने रखा है इस वक्त सुल्तान मोंटुगोली ने, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज और एक रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। लेग बाई का इशारा और लेग बाई किस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के, निस्संदेह एक कसी हुई गेंदबाजी की इस वक्त सख्त जरूरत है। टाइडी बॉलिंग परफॉर्मेंस जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, अगर 22 ओवर के अंदर नियंत्रित करना है यूनाइटेड पातुर के बलाढ्य बैटिंग लाइनअप को, यह गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है एक रन बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाज अली गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ गली फील्डर एंड दैट इज द विकेट नंबर 1। अल्ताफ ने गेंद को उछाला जरूर लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं, और पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे, पॉइंट और गली के दरमियान कहना पड़ेगा, जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे पहुंचे उनके हाथों में, और सॉफ्ट डिसमिसल इस वक्त अल्ताफ का, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर खो चुका है यूनाइटेड पातुर एक रन के योग पर। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। Meantime, friends, Mysore will take over Fighters Arcana in the next match, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss. Procedure. वसीम का आगमन यहाँ पर होता हुआ, राली इस वक्त गेंद आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, इस बार स्वीप करना चाहता गेंद को, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका इस वक्त एक रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अली गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद स्टंप से बाहर, शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक बार 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है, और यहां पर विकेट गिरने से शायद बच चुका है, तो 2-3 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि थ्रो इस वक्त पहुंच चुका है शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर का सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और आखिरकार दोनों बल्लेबाज सुरक्षित, और स्कोर 1 रनों पर रुक चुका है एक विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर ओवर अली का अब तक का साबित हो चुका है, और तैयार अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त, और सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज वसीम, और अली आखिरी बार इस ओवर में बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि बेहतरीन ओवर के समाप्ति, फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एन एंड फ्रॉम अली, 1 over no maiden, he conceded just a single and captured the wicket of Altaf, and first over completed, and after first over mixed start for United Patur. It's 1-1-1, 1 for the loss of 1 wicket after completion of 1 over. The scoreboard shows, और 4 ओवर का खेल जो कि अभी भी बाकी है, और 4 ओवर में जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, एक घातक गेंदबाजी ही इस वक्त सुल्तान को इस मैच में विजय दिला सकती है। जो पहले ओवर में अली ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, उसी तरीके की गेंदबाजी की जरूरत है बच्चे हुए 4 ओवर में, अगर उन्हें यूनाइटेड पातुर के बलाढ्य बैटिंग लाइनअप पर नियंत्रण प्राप्त करना है। तो हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए रोड एंड की ओर से नौजल, और इस बीच सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुस्ताफा, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए बिल्कुल बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, नीला आकाश को घने बादल इस वक्त ढक चुके हैं, वर्षा की संभावनीयता हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं जब तक आज के मैचेस न समाप्त हो वर्षा ना आए। और तो इस बीच फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, और नौजल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, एक फील्डर को इस वक्त पीछे भेजा जा रहा है डीप मिड विकेट पर, लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद, थोड़ा सा वाइडर लॉन्ग ऑफ, थोड़ा सा स्ट्राइटर, डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास एक फील्डर तैनात स्क्वायरली दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुस्ताफा के लिए। और नौजल ओवर की पहली गेंद लेकर
इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए मुस्ताफा के लिए पहली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी और गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ने के प्रयास में, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। डॉट गेंद के साथ बेहतर शुरुआत इस वक्त गेंदबाज इस वक्त नौजल कर चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर नहीं, लेग स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच अगली गेंद, ये गेंद इस बार ड्राइव किया मिड ऑन की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े। जब तक गेंद को लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, 2nd ओवर इन प्रोग्रेस, 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। कुछ हद तक रनों के लिए संघर्ष करते हुए इस वक्त यूनाइटेड पातुर के गेंद बल्लेबाज और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, बेहतर फील्डिंग, वहां पर जो फील्डर खड़े हुए थे सिद्दीक जिन्होंने की है इस वक्त, और एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस उन्होंने लौटाया गेंद को काफी तेजी के साथ गेंदबाज के हाथों में और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। 4 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार नौजल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, विकेट से हटते हुए जगह बनाते हुए गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करके थ्रो करते फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और 5वीं बार फॉर द 5th टाइम इन दिस ओवर गेंदबाज नौजल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यह गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन, जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो नौजल इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद and one more fantastic over came to an end in Sultan's point of view. Just 4 runs came from this over and after 2 overs still the batsmen of United Patu searching for the right track. It's only 5 runs they managed to score after losing 1 wicket and still they are 18 runs far from their victory. 18 रन और चाहिए विजय के लिए, 3 ओवर का खेल बाकी, 18 balls remaining and 18 runs more. Now they have to score for victory. तो 2 बेहतर ओवर यहाँ पर अली और नौजल फेंक चुके हैं। अब देखना है कि तीसरे गेंदबाज के तौर पर कौन से गेंदबाज इस वक्त उतरते हैं। जिस तरीके से 2 ओवर बेहतर रहे सुल्तान के लिए, उसी तरीके की चंद और बेहतर ओवर की जरूरत है अगर उन्हें इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। तो जहां तक यूनाइटेड पातुर का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक सेंसिबल बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, एक साझेदार यानी पार्टनरशिप की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है। और इस बीच गेंदबाजी का जिम्मा कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से संभालते हुए गेंदबाज अली, तो अली नंबर 2 इस वक्त गेंदबाजी संभालते हुए सुल्तान मोंटुगोली की ओर से और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार मुस्ताफा। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 18 balls remaining, 18 runs more, now they have to score for victory। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई अभी भी बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है और दर्शकों की तादाद कुछ सुबह से कुछ ज्यादा इस वक्त नजर आते हुए मैदान के इर्द गिर्द इस वक्त दर्शक काफी मात्रा में नजर आते हुए खामोशी के साथ मैच का मुआयना यहाँ पर करते हुए पहली गेंद इस बार चिप किया, इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर, लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद को रोकने में असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जीतोड़ कोशिश इस वक्त की थी जरूर डीप पर बैकवर्ड थर्ड मैन के फील्डर ने, लेकिन आखिरकार काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद fantastic delivery from the bowler bowler Ali and he's got the rid of the batsman. Second wicket lost.
Mustafa the man departs, and now they are 9 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಫೈಟರ್ಸ್ ಸರ್ಕಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर नए बल्लेबाज नंबर 4 बल्लेबाज इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अली की गेंदों का. तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलते हुए और अली इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद. नवाज नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस वक्त हैदर अली इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. यह गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को खेला रिवर्स शॉट के जरिए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन की तरफ और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज हैदर अली ये गेंद स्वीप किया इस वक्त नॉट क्वाइट मिडलिंग इट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका है एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की सख्त जरूरत इस वक्त बल्लेबाजों को यूनाइटेड पातूर के. और ये गेंद विकेट कीपर चूके शॉट थर्ड मैन फील्डर चूके और गेंद डीप थर्ड मैन इस वक्त सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए. 22 के रूप में ये 4 रन जुड़ चुके हैं और जब आप 22 रनों के स्कोर को डिफेंड कर रहे हैं तो ऐसी फील्डिंग निस्संदेह आपको मैच को फिसलने पर मजबूर कर सकते हैं. और यहां पर 4 रन मिल चुके हैं 15 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है और अली इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 8 रन चाहिए सिर्फ विजय के लिए. ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंटली 1 रन मिलेगा 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट 3 ओवर्स कंप्लीटेड and 7 runs required in remaining 2 overs and the situation the equation seems to be much easier for them. तो इस वक्त जहां तक सवाल है सुल्तान मोंटुगोली का तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक ऐसी गेंदबाजी तो जो तख्ते को उनकी ओर पलट कर रख दे और उस घातक का गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त देखते हैं कौन से गेंदबाज गेंदबाजी पर उतरते हैं. काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई और लंबी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है. सादिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और 7 रन इस वक्त जरूरत है 12 गेंदें बाकी 12 बॉल्स रिमेनिंग 7 रन्स रिक्वायर्ड 11 रन स्कोर्ड फ्रॉम द लास्ट ओवर. और पिछले ओवर की बदौलत यूनाइटेड पातूर काफी हद तक इस मैच में वापस आ चुका है और सादिक पहली गेंद लेकर तैयार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज नवाज और फील्डिंग में अभी भी कुछ हद तक तब्दीली की जा रही है. लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात तक किया गया है. लॉन्ग ऑन कुछ हद तक सीधा डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज सादिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर शॉट थर्ड मैन पर वाइड का इशारा एंड ही जस्ट स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड. स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर. और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेलना चाहा गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर. 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट 5 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 11 बॉल्स. और सादिक फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे. सही गेंद को डॉट गेंद 10 गेंदें बाकी
और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप विकेट से फील्डर दौड़ कर रहा है और इस बीच 1 रन का इजाफा लेग बाई के रूप में हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार शॉर्ट फाइल लेग पर वाइड। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। Still 9 balls left in overall calculation in their innings. Just 3 more runs now they have to score for victory. Or Sadiq, delicate, absolutely delicate, played that one with a twisted bat at the last moment and he got a single for that stroke और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21, 8 balls remaining now, 2 runs just more now they have to score for victory. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार वाइड और ये 1 रनों की संख्या को बराबर इस वक्त कर चुका है। द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड एंड जस्ट अ सिंगल रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 8 डिलीवरीज। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार उछाला लंबा पर, बेहतर कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली टेकन जस्ट इनसाइड द फेंस बाय द फील्डर एट लॉन्ग ऑन। और इस बेहतर कैच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है। अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को उन्होंने लपका बखूबी और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 3 गिर चुका है। 22 for 3 and just 1 ball left to complete the last 4th over. 7 balls remaining, 1 run required. और इस ओवर में अंतिम बार सादिक इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, लेग स्पिन गेंदबाजी, बेहतर गेंद एंड डॉट डिलीवरी टू एंड द ओवर। 4 overs completed, scores are leveled now and now just 1 run required from the last over. 6 balls and 1 run required और 7 विकेट यहां पर सुरक्षित। तो शाफी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, आखिरी ओवर शुरू होता हुआ और लगभग सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लगाई गई है और शाफी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 5th and लास्ट ओवर स्टार्टिंग इन देयर इनिंग्स। 6 balls and 1 run required। पहली गेंद ड्राइव किया, इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला, कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ यूनाइटेड पातुर won the match by 7 wickets with 5 balls left in their innings and with that victory they back the complete points against Sultan Montugoli. So 7 wickets victory for United Patur with 5 balls to spare in their innings against Sultan Montugoli and at last they back the complete points. Next match, friends, Mysore will takes over Fighters Arcana and that match is now coming up live exclusively right in front of you within just short while. Till then we are taking a short break और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने हम उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यहाँ पर मैच नंबर 7 की शुरुआत होगी इस सुल्तान प्रीमियर लीग 2024 श्रृंखला के अंतर्गत। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। धन्यवाद, थैंक यू।
Welcome back for the match number 7 of the day number 2 of this prestigious Sultan Premier League 2023, and we are into the match number 7. Here is a team fighters Arkhana bowling first. The opening batter Arshad Bajal is on strike, and first ball right arm over the wicket balls. This time Arshad Bajal swept that one very nicely down to deep square leg region. Protection is there in the deep. They're coming back for the second. Good running between the wicket. Good start there from Arshad Bajal, and scoreboard is now moving to 2 now. First ball, Arshad Bajal is off the mark, 2 without loss of any wicket. Right arm up of the wicket again. A lovely placement, a very good placement there from Arshad Bajal. Absolutely perfect one, delicately played. Just using the pace of that ball and getting that one down to deep fine leg boundary for 4 runs. Bowler name, please. Bowler name? Asif. This time again driven that one uppishly but quite safely down to deep long on region by Arshad Bajal with that single score Namuzan to
Two consecutive deliveries of Ishaq. Ashad Bazalla is try to get some acceleration and scoreboard now moves on to 34 now. And Ishaq has started to feel the pressure. Again. Lovely delivery indeed. That was a good comeback here by Ishaq. Just yorking that one. Yorks the batsman. Leg by call by umpire. Great comeback here by Ishaq. One more run in the form of leg by. With that leg by scoreboard now moves on to 35. One of them over completed. 3 gone. 2 remaining. Expensive over which comes to an end. 14 runs came from that over of Ishaq. Ashad Bajal we are talking about, the man who hit 6 sixes in overarm cricket in overseas condition, in the sense in Gulf. When he batted, that becomes a viral. When he hits 6 sixes, not in underarm cricket but in overarm cricket, that shows that even our underarm batters so good in overarm cricket as well. So most of the players from underarm cricket has got fantastic records in overarm cricket as well. Especially when the players are performing in Gulf countries while they are going in search of job. They settle there and they are performing in even season ball cricket, hard tennis ball cricket, tape ball cricket, any cricket. Underarm cricketers are really performing very well. This time lovely delivery coming into the batter. This time Ashad Bajal couldn't manage to get that one from the bat. Leg by call by umpire. One more addition. With the addition of that single, scoreboard moves on to 36 on the board. Imran will go into ball. Experienced campaigner for the side of team Fighters Arcana. This wicketkeeper completes formalities of making a stump out, because no idea the batter Naufal where the ball is. So he just out of the crease, and wicketkeeper behind the stump completes the formalities of stump out. And one more wicket gone here of friends Mysore. Scoreboard is 36 on the board. So new batter in is Munzir. With the jersey number 12, just walk towards the middle. Different weather condition. Yesterday it was a very hot, bright sunny afternoon from morning to evening. But here is a overcast condition again. That ball going down the leg far away. Wide call by umpire. One more addition to total with the addition of that single score, but moves on to 37 for the loss of 4 wickets. Again that wide. So after getting a very good start, Imran started to ball some wide deliveries with that wide score, but moves on to 38 in the over number 4 in progress. Imran. Oh my goodness, hat-trick wide. 39 on the board. Runs are coming very cheaply. Their bowler gifting some runs for the opposition. Friends Mysore. Again the 4 consecutive wide deliveries. 40 on the board. Just like batsman hitting a boundary. It's not so easy, but bowler struggling to get his line and length, and bowled 4 consecutive wide deliveries. Fifth wide. This time Ashad Bajal wanted to back on the strike, and 1 + 1, 2 more to the total, 42. 5 consecutive wide deliveries. Highly indisciplined bowling performance there from Imran.
And I'm really surprised when you are bowling to the right-handed batsman, you are bowling round the wicket. That ball definitely will going to go further outside the line of leg stump. Now he will go into ball to Arshad Bajal. Arshad wanted to play the reverse sweep, misses it completely. Then wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Again the wide, the sixth wide. That means he is not bowling where the 6 deliveries over. He is bowling 12 deliveries over. That means almost he is bowling 2 overs. 43. This time Arshad laughed at that one. Have a look at the sound of the bat. Absolutely instrumental sound we can hear when Arshad Bajal has contact with that ball, with this bat. What a great striker of the ball. That was a really great hitting. No wind at all in the ground, but I think Arshad Bajal not really required that help of wind because he's got that much of power and timing in his strokes. And scoreboard jumps into 50. This time going to be a one more. This is Arshad Bajal for you. When he is in a rhythm, no one can stop him. He is unstoppable. One ball remaining in this over. Will Arshad will going to get the hat-trick 6 here. What a great hitting there from Arshad Bajal. He is definitely the killer of the ball. Imran. They wanted to play the reverse sweep. I not really understand why Arshad Bajal, after hitting that orthodox cricketing stroke, is trying for the unorthodox cricketing stroke. And he missed it completely, like by call by umpire. Expensive over, which is comes in the ear of Imran. After completion of over number 4, scoreboard 57 on the board and last over remaining. So Arshad Bajal will going to retain the strike after they got a single in the last ball in the form of leg bye, and he will going to take the last over. 33. Anish will going to ball that last over, and Arshad Bajal will going to take the strike. This time catch it is a call, and catch is completed by the wicketkeeper behind the stump, and Anish strikes in his first ball. Danger man Arshad Bajal departs after he played some enterprising cricketing stroke, and he's just got entertainment for the limited crowds out here in this most beautiful Panchayat Cricket Stadium here in Mudipu. So Arshad Bajal scored 37 runs. Yesterday also some players have scored 37, some 38, but 43, which is the highest individual score so far in this tournament. So Arshad Bajal will going to get a standing ovation in the dressing room. Dugout of Friends Mysore. He played some absolutely good hittings. The new batter in. Shamsher is a new batter in. Oh, that was a beamer, and it's going to be a wide. Anish maybe they wanted to get that delivery, which is we trying for the Yorker. They again lovely delivery indeed, and wicketkeeper fails to collect the ball, so that bicycle by umpire with the addition of that single scoreboard moves on to 59. Last 4 deliveries remaining. Anish.
Again, well within the reach of the bat of the batter. Batter slight a bit of shuffled across the line of delivery Munzir, so he missed it completely from the bat. 3 balls remaining. Drives that one down to deep long on. Will they come back for the second? No, they doesn't. They settle for the single. With that single, Skobarna moves on to 60. Last 2 balls remaining. Lovely delivery. Just moving away from the right-hander batsman. Appeal behind the stump. Umpire says not out. And now last delivery remaining. Samshir is on strike. Coming down the track, using his feet just for a single. Will they come back for the second? Direct it, and I think 2 runs completed in the last delivery. So that after completion of over number 5, team Friends Mysore managed to score 62 they scored, and 63 the target for team Fighters Arkhana. And the Fighters Arkhana need to get fight back in their batting. They wanted to get that huge total of 63 they wanted to get, because they lost their 2 matches in the previous league matches, so that is a must-win match here for team Fighters Arkhana, and wait and see how Fighters will go into fight back against team of Friends Mysore. We'll take a short break here in commentary box. After this short break, my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. शुक्रिया सतीश। तो 63 रनों का विशाल सा लक्ष्य इस वक्त फाइटर्स सरकाना के सामने रखा फ्रेंड्स मैसूर ने, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई 63 द टारगेट इन 5 overs, they have to score for victory with a required run rate of exactly 12.60 runs per over। और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट अरशद की गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और इस बीच वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है फ्रेंड फाइटर्स सरकाना के लिए। 1 रन बिना किसी नुकसान के, 63 द टारगेट, और अरशद गेंदबाजी करते हुए नुमान के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार हाफ माइंडेड स्ट्रोक, लेकिन ये कैच यहाँ पर छूट चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा।
अगर कसकर स्ट्रोक खेलते इस गेंद पर तो शायद चौका उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने स्ट्रोक को रोक लिया था। दुविधा के साथ स्ट्रोक इस वक्त खेला, हाफ पॉइंटेड स्ट्रोक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और भाग्यशाली रहे कि गेंद कवर पॉइंट पर जो फील्डर थे उनके हाथों से छूटती हुई, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। और 1 रन के इजाफे के साथ इस बीच स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और 2 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। चार रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 4 विदाउट लॉस। और अरशद इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लंगोन की दिशा में, और 1 रन, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, और यहां पर खतरा पैदा हो सकता है, हो चुका है, और इसी के साथ विकेट भी गिर चुका है। दूसरा रन पूर्ण करने का प्रयास किया था जो कि काफी जोखिम भरा साबित हुआ यहां पर, और सीधा थ्रो पहुंचता हुआ स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स, और आखिरकार गेंदबाज ने यहां पर कोई गलती नहीं की। थ्रो को रिसीव करते हुए विकेट गेंदबाज अरशद ने चटका दिया, तो पहला विकेट गिर चुका है 5 रनों के ऊपर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जहां तक सवाल है फाइटर्स अरकाना का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक मजबूत शुरुआत, अगर जहां तक 63 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है। और इस वक्त इंतजार है नंबर 3 बल्लेबाज का, और नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए और इशाक इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और अरशद इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद ड्राइव किया, स्ट्राइट पास दी बॉल, और गेंद जाते हुए इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है मैंगलोर मीडिया द्वारा, जनाब कमल अहमद इनके सारथ्य में। और जहां तक का सवाल है इस श्रृंखला का, तो सुल्तान प्रीमियर लीग 2024 ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए दोपहर के वक्त आज इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन का 7वां मैच इस वक्त प्रगति पर। और ये गेंद अरशद के लिए धीमी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, और तेजी के साथ रन पूर्ण कर चुके हैं। 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और स्कोर बढ़कर इस 1 रन के साथ पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। और गेंदबाज बाएं हाथ राउंड द विकेट, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद और स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और वाइड का इशारा, और अपनी पेस को, अपनी गेंद की तेजी को वृद्धि करने का प्रयास किया था अरशद, लेकिन इस प्रयास में गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर फेंक दी। धीमी गेंद, कॉटन बॉल का मौका स्वयं अरशद के लिए, और इस कैच को लपकने में सफल बाखूबी अपनी दाईं ओर जाते हुए गेंद को लपका एक बेहतर जजमेंट के साथ, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, चेजिंग द ह्यूज टारगेट ऑफ 63 in 5 overs. Fighters Arcana made a mixed start. In fact, they managed to score 9 runs on the board, following 1 wicket after completion of first over. And let's straight away coming back to the equation. 63 minus 9, that means 54 runs more now they have to score for victory. 54 रन और चाहिए बचे हुए 4 ओवर में, और रिक्वायर्ड रन रेट जो है 13.5 रन प्रति ओवर, एक्जैक्टली 13.5 runs per over, the required run rate for them at this situation. रिजवान, the number 4 batsman, is now comes out to the middle, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अंसार, और जहां तक का सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए इशाक का, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, और अंसार अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार। दूसरा ओवर शुरू होता हुआ फाइटर्स
अरकाना की पारी में। और पहली गेंद लेकर तैयार दाहिना तो बढ़ता विकेट बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, not quite connected that one properly at the last moment but he got a single for that stroke और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद bowled out, absolutely fantastic delivery, extra quicker from the bowler and the batsman's middle stump has been uprooted. This is an absolutely unplayable delivery. गेंद जितनी तेज रफ्तार के साथ अपने पेस को वृद्धि करते आई कि बल्लेबाज को इस गेंद पर कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिडल स्टंप को उखाड़ कर ले गए। बेहतरीन गेंद के जरिए विकेट प्राप्त कर चुके हैं, एक्स्ट्रा पेस गेंद के जरिए विकेट प्राप्त कर चुके हैं अंसार और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है फ्रेंड्स फाइटर्स अरकाना का 10 रनों के ऊपर। दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ, 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दाऊद नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, इस वक्त सामना करते हैं, बॉल्ड आउट, 1 मोर विकेट फॉलन, कंसेक्यूटिव विकेट्स फॉर अंसार और यहां पर विकेट नंबर 4 गिर चुका है। बिल्कुल तेजी के साथ 2 गेंद उन्होंने फेंकी और तेजी के साथ 2 विकेट बोल्ड आउट के रूप में प्राप्त करने में सफल। तो 4 विकेटें यहां पर गिर चुके हैं, 10 रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दिखाई देता हुआ और निस्संदेह यहां पर मुश्किलों के बादल इस वक्त साफ मंडराते हुए फाइटर्स अरकाना के ऊपर। So the bowler Ansar, he is on a hat trick और नए बल्लेबाज इस वक्त गेंदबाजी अंसार करते हुए नए बल्लेबाज के लिए हैट्रिक गेंद लेकर तैयार। दिस टाइम बाउल्ड टू फॉर आउटसाइड लेग स्टंप, नो बॉल कॉल्ड बाय अंपायर, द बॉल वेंट आउटसाइड द लेग स्टंप लाइन और 1 रन का इजाफा। इमरान नए बल्लेबाज और इस बीच अंसार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद स्वीप करना चाहा, अंतिम क्षण में विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, सिर्फ बाई का इशारा अंपायर का और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 12 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। फिर से एक बार अंसार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद को कलेक्ट करने में असफल विकेट कीपर अरशद और गेंद को जब तक बैकअप किया जाता है शॉर्ट फाइन लेग पर 22 के रूप में 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। रन ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और चाहिए चौके और छक्के इस वक्त इस मैच में वापस आने के लिए फाइटर्स अरकाना के बल्लेबाजों को। ये गेंद लेग स्टंप पर वाइड, 1 more run added to the total, 14 for the loss of 4 wicket. Runs are coming still in singles now for the batsmen of fighters Arcana. Bowled out, 1 more wicket fallen. Extra quicker delivery once again and he just got rid of the batsman. Wicket number 3 in this over for Ansar and now fighters Arcana are now looking deep in trouble. It's 14 for 5, 2 overs completed. 2 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है, 14 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर का खेल बाकी और 3 ओवर में इस वक्त चाहिए 49 रन और विजय के लिए, 49 to get in remaining 3 overs, that means in remaining 18 deliveries with the required run rate of exactly 16.33 runs per over. Still they got 5 wickets kept intact, 5 wickets they got in their hand और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से। हारिस गेंदबाज जो कि नया ओवर प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रहा। इसाक इस वक्त सामना करते हुए, निसार नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और हारिस ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। टॉप एज लेकिन फील्डर काफी पीछे लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर
5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ड्रिवन परफेक्टली बट कट्स इट ऑफ इनसाइड द 20-yard सर्कल बाय द फील्डर एट मिड ऑन। और सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को इस वक्त हासिल होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, टर्निंग अ लॉट एट द लास्ट मोमेंट। काफी ज्यादा टर्न लेती हुई, घुमाव लेती हुई गेंद इस वक्त बल्लेबाज को वंचित करती हुई पहुंचे सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी गेंदबाज एरिस की। अगली गेंद लेकर एरिस तैयार। यह गेंद उछाला लंगोन पर सीधे फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। प्लेसमेंट गलत और भुगतान इस वक्त बल्लेबाज को करना पड़ा। 6th विकेट गॉन एंड नाउ इट्स 16 for 6। आसिफ इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में एरिस की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और एरिस इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और इसे 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एरिस दाहिने हाथों पर द विकेट ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा मिड ऑन पर, रनआउट का खतरा और इसी के साथ अंपायर ने कहा कि जी नहीं, यहां पर ओवर की समाप्ति। 3 overs completed, 18 runs on the board in fact and 6 wicket lost and 2 overs remaining, 45 runs more. Now they have to score for victory with the required run rate of exactly 22.5 runs per over. I request the next match captains, legend Pajir will take over Sultan Montugoli, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. Legends Pajir ಹಾಗೂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಂಟುಗೋಲಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಂಟುಗೋಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 2 overs remaining, 45 runs to get और गेंदबाज चौथा ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाज नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए तंसीफ गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लॉस्ट इट एंड दिस टाइम विकेट नंबर 7 डाउन। नो मिस्टेक मेड बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर और 7वां विकेट इस वक्त गिर चुका है 18 रनों के ऊपर। दे आर लुकिंग deep in trouble now. It's 18 for the loss of 7 wickets. This is the match number 7 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. Sultan Premier League 2024 is now progressing here, which proudly organized by Sultan Friends Montugoli in the celebration of their 11th year in association with the Mudipu Cricket Association in this beautiful, huge, big Panchayat ground Mudipu. And this tournament is now progressing along nicely. और जहाँ तक बल्लेबाज का सवाल है, नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद अनीस और इस बीच तंजीफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त स्टीयर कर दिया अंतिम क्षण में खूबसूरती के साथ मिसफील्ड वहां पर और बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 20 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। 20 for the loss of 7 wickets in the over number 4 in progress. Reverse shot finds the gap as well. बाउंड्री रिजल्ट्स इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। बेहतरीन तरीके से क्योंकि इस वक्त विद रिवर्स शॉट खेल दिया था खूबसूरती के साथ। शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर की दाईं ओर से गेंद निकलती हुई डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार करके 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक अनीश के बल्ले से लगता हुआ और तंसीफ एक बार फिर से तैयार। बेहतर एक्स्ट्रा क्विकर लेकिन
so far outside the off stump, missing 2 for outside the off stump. एक रन मिलेगा, 25 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। तंजीफ एक बार फिर से तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। तंजीफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को इस वक्त नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 25 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। For the last time in this over, तंसीफ comes, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके ठीक तरह से खेल नहीं पाए और रन्स ओवर थ्रो के रूप में यहां पर मिल चुका है एक। 26 for the loss of 7 wickets, 4 overs completed, and now they have to score 37 runs for victory from last over. 6 sixes required, not for victory but for tie in the last over for the batsmen of Fighters Arcana. So in the next match, Sultan, Montugoli after won the toss, they elected to field first against Legend Pajir, and that match is now coming up right after this match. नौफल मैच का अंतिम ओवर यहां पर शुरू करते हुए 37 रन चाहिए, 6 छक्कों की जरूरत है मैच को टाई करने के लिए अंतिम ओवर में, यानी बचे हुए 6 गेंदों में। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर गेंद को बेहतर फील्डिंग के जरिए जब तक रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर और 36 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी। 36 needed in remaining 5 balls. नौफल फिर से एक बार तैयार, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा। 28 now for the loss of 7 wickets, 35 required, 4 balls now remaining in the overall calculation in their innings. Swings and got the boundary. In fact, it's gone all the way. और फ्लैटर वर्जन पर खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला था इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 34 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आसिफ के बल्ले से लगता हुआ, इस बार चूंकि आक्रामक स्ट्रोक खेलने के प्रयास में 1 रन मिलेगा, and with that single the scoreboard is now moving up to 35 now. 2 balls now left, 28 runs required, absolutely impossible task. Leg spin गेंदबाजी wide, 36, 2 balls still left. Again a wide, 37. Wide number 3 in this over. 1 plus 1, 2 runs added. 39 now. इस बार खेल दिया डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 40. The last ball of the match is now coming up. 23 required of last ball. Lofted and taken comfortably at deep extra cover. That's it. 22 runs comprehensive victory. 22 runs comprehensive victory for friends Mysore against Fighters Arcana, and with that 22 runs comprehensive victory, they back the complete points.
So man of the match of this match, undoubtedly, the man batted brilliantly, scored 37 runs into his credit, playing a responsible knock. Arshad of Friends Mysore adjudged the man of the match because of his fantastic knock of 37 runs he scored. Quick firing knock of 37 runs scored by Arshad. I request Arshad of Friends Mysore, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. So match number 8 has been came to an end, and we just moving on to the match number 7 has been came to an end. We just moving on to the match number 8. Legends Pajir will take over सुल्तान मोंटुगोली और मैच नंबर 8 की शुरुआत यहाँ पर होगी। सुल्तान मोंटुगोली ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब मैच नंबर 8 की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So welcome back, thank you Gopi, and welcome back for the match number 8 between legend Pajir versus Sultan Montugoli, and legend Pajir will go into bat first. Kiran is in non-strikers end, strikers end. Batter name please. Batsman name. Imran, thank you. So Imran will go in to take the strike. The first ball, left arm bowler, and round the wicket. Wanted to sweep the ball. Ball definitely defeats the bat of the batter, and there is no chance at all for any run. A good start there from the bowler, left arm bowler. Bowled around midland leg stump, and Imran wanted to get that 1-1 to fine leg region, but misses the ball completely. There is no chance at all for any run. Sultan Montugoli, after 3 matches, they won 1, they lost 2. Far outside the line of off time, going to be a wide. One more first run comes up here for team Pajir Legends. They got the first run in the form of extra. Here is again the bowler Ali. Going to be a second run in the form of extra. Wide call by umpire, 2 without loss of any wicket. Friends Pajir coming to their match. They played their first match against United Patur. They lost the match, and after that they won the match in the next match. Again going to be a third wide, 3 consecutive wide deliveries there from Ali. After he got a start with the dotted delivery, then he bowled 3 consecutive wide deliveries. A bonus run for team legend Pajir.
So this particular day number 2, we are witness so many extras in the form of wide deliveries. This is the one area each and every team need to be very, very disciplined. They wanted to maintain as far as conceding the runs in the form of extras. Not only they concede extra runs, but they need to ball extra deliveries after that. Again, lovely delivery indeed. And Imran wanted to get that one to mid-wicket region, misses the line completely. Leg by call by umpire. With that extra scored Namuzan to 4 on the board. 4 without loss of any wicket. That brings Kiran into strike now. This time reverse sweep, played that one just right off that fielder. And before that fielder to run back and field the ball, ample time for the batter to complete the single. With that single scored Namuzan to 5 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Match number 8 of the day number 2 of this prestigious Sultan Premier League 2023 is in progress. Ali bows this time again. He wanted to sweep the ball. They're going for the quick single chance of not in the no-seconds end, but the throw is not really having that much of power enough. Leg by call by umpire, and both the batters are taking a risk of getting that quick single, and Kiran is the one who running towards the danger end, completes the quick single, scored Namuzan to 6 on the board in the over number first is in progress. Now slight a bit of left arm. Ali bowls to Kiran. Again, they're going to be a 4th wide of this over. They're really Ali struggling to get his line and length. One more addition, scoreboard Namuzan to 7 on the board. Left arm. Bowls a slower one there from Ali there. Absolutely perfect one. Kiran couldn't manage to read the slowness of the delivery, wanted to swing that on the onside region, misses the line completely. There is no chance at all for any run. Score remains on 7 in the over number first in progress. This time too much across the line. Kiran shuffled across the line after delivery, exposing his stumps, and Ali bowled around the legs and got the wicket here. Over number first which is completed. After completion of over number first, team Legends Fajir the 7 for the loss of 1 wicket. Kiran departs. So new batter in is Ramesh, came to middle, experienced campaigner for the side of Legend Pajir. They came into middle. So Sultan Montugoli, what we are talking about, the very important for them to win the match here. Nauzar brought into attack. Nauzal is a young talented player for the side of Sultan Montugoli. Legends Pajir, we are talking about their first match. They lost against United Patur. Then they won the match against the Fighters Arkhana. That means out of 2 matches, they won 1, they lost 1. And Sultan Montugoli, they won their first match and they lost the second match against Friends Mysore. Then again they lost against United Patur, and they're playing the 4th match. Out of 4 matches, out of 3 matches, they won 1, lost 2. Drives that one down to wideish, long on almost in the mid-wicket region. Just a single there for the batter Imran. With that single scored Namuzan to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Naufal. Lid correction. Nauzar. Right arm over the wicket. Oh, that was a quicker one and a faster one, and no time to react here for Ramesh to see the line of the ball slide around the legs of the batter. Wicket keeper, absolutely perfect collection behind the stump,
and there is no chance at all for any run for the batters. Score remains on 8. Nauzal. Beautifully balled, perfect one. Balled him, Ramesh. No clue whatsoever that particular delivery. While he was going for the drive, ball misses his bat, and Nauzal hits the stump. Wicket number 2, which is back into pavilion of Legends Pajir. They are looking in trouble. 8 for the loss of 2 wicket. So new batter in is Shamir. Nauzal getting some extra pace in his bowling, getting some wickets for his team. Sultan Montugoli knows that is a very important for them to win this match. Even Fazir, Legends Fazir knows that they also wanted to win this match. So level of competition going to be a very high. Both the teams searching for the victory, and they wanted to give their 100% in this game. They wanted to get the points in this particular match. Second over is in progress. Deep square leg, deep mid wicket, deep long on. 3 fielders outside the circle in the deep, in the onside region. Deep cover point and a deep extra cover that fielders are in the deep in the offside region. Short third man, short extra cover, short fine leg, short mid wicket. This time Samir wanted to get that one into mid wicket region, but fails to make a contact with the bat wicket keeper. Misses it by call by umpire, with the addition of that by Skober Namuzan to 9 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Next match, United Patur takes on Fighters Arkhana. So that I request all the players of both the teams, please request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. Again, driven that one down to deep mid-wicket, deep correction, yes, mid-wicket region for a single. Imran picked up a single. With that single, Skober Namuzan to 10 on the board. 10 for the loss of 1 wicket. So Nauzal, so far so good. Last time in this over. Balls again outside the line of off time. Wide call by umpire, and Nauzal slight a bit of missing his line. Tried to ball outside the line of off time, but ball is moving further away. And with that single, Skober Namuzan to 11 on the board. Over number 2 in progress. Nauzal. Balls again. That ball going outside the line of leg stump. Again consecutive 2 wide deliveries. Nauzal is need to ball 1 delivery in this over, but he's taking his time. 2 wide deliveries, and Skober Namuzan to 12 on the board. And much required runs which is coming here for Legends Pajir in the form of extras. Nauzal. The short on up, bowling to the left-hander batsman. Again, lovely delivery indeed to finish the over. Over number 2 completed. After completion of over number 2, Legend Pajir searching for the right track. They are 12 for the loss of 2 wicket, 2 gone. Going exactly 6 runs per over. And wait and see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. 18 balls remaining, excluding wides and no balls. And wait and see how many runs they will going to score in these 3 overs.
Welcome back, and over number 3 will going to start from the commentary box end. 3 overs remaining, 18 balls excluding wides and no balls. Ali will go into ball that third over of the innings of team Fajir Legends. Imran will be the striker. Went for the reverse sweep, misses the line completely. You miss high hit what Ali is dead here, hitting the stumps. Wicket number back into pavilion, wicket number 3 back into pavilion of Legends Fajir. They are in a trouble now, 12 for the loss of 3 wicket. Match number 9 will be played between United Patur versus Fighters Arkhana. And after that, the 10th match will be played between Friends Mysore versus Legends Fajir. The new batter in is Razik with the jersey number 4, walking towards the middle. Ali bowls. That was a lovely shot down to deep cover point. The fielder drops the catch. We are not having that much of view in this area. One of the safest pair of hands, Nasir, is always a very good fielder in that region. He drops the catch, and scoreboard numbers on to 14 on the board, 13 on the board. Left-hand batter, back on strike. Samir. Ali will go into ball next delivery. Rivasi plays it quite nicely in the gap. Two fielder behind the ball. Will they come back for the second? No, they doesn't. Zai doesn't want to take a single, take a couple. But his partner is wanted to get a couple of runs, Samir. But good piece of fielding there by the fielder, quickly moving to his back, and the fields very well and returns the ball very well. One day a single, and with that single, scoreboard moves on to 14 for the loss of 3 wicket. Ali to Zaid. Again drives that one down to extra cover region. Fielder is charging from the deep extra cover. Khalil is the fielder down at extra cover, quickly moving to his front. Just a single, with that single, scoreboard moves on to 15 on the board for the loss of 3 wicket. Ali. The final time in this over. Right arm bowls. Lovely sweep shot, but protection is given for that sweep shot down at the fine leg region. So that only 1 run for Samir. 3 gone after completion of over number 3. It's 16 on the board. Legends Fajir 16 for the loss of 3 wicket. 2 overs remaining in their innings, and wait and see how many runs they will going to score in these 2 overs. So long discussion is going on here to who will going to ball the 4th over of the innings of team Legends Fajir. Both the teams knows that very important for them to win this match, so that the game plan strategy is so important, and the matches like this, where it could be a must-win match for both the teams. Siddiq, Siddiq, little correction, is a experienced campaigner for the side of Sultan Montugoli. They brought into attack to ball the 4th over of the innings of Legends Fajir. The
fielder down at deep square leg, one at deep fine leg, one at mid wicket and long on. The 5 fielders, 4 fielders outside the ring in the onside region. There is no fielder inside the ring in the onside region. We can see that only fine leg inside the ring and short third man, short backward point and short cover point. Again, wicketkeeper misses it, chance of run out and is gone. One more wicket is back into pavilion side. This time couldn't manage to reach his home, and the throw which is coming quickly from that short third man fielder, short fine leg fielder in fact, and excellent work there by the fielder and the wicket keeper. The wicket number 4 which is back into pavilion of Legends Pajir. Jersey number 77 now came into bat. Razik, very important player for the side of Legends Pajir. To need to get some good score here for this team, he need to bat well. And Siddiq has got good delivery to start with the second time in this over. Lovely delivery, beautifully balled. A quicker one and faster one. Wicket keeper behind the stump. E1 very quicker and gathers the ball in a fraction and returns the ball. So Siddiq again, second time, third time left correction, going to be a wide. Good collection behind the stump, one more extra. With that extra scoreboard is moving to 17 now in the over number 4 in progress. Siddiq. There's some lovely delivery indeed. Appeal for something there, and nothing has happened. Just a single by call by umpire. Wicket keeper misses it. One more single, 18 on the board. Extras which is really helping the team. Legend Fajis to get some runs, but will it going to be good enough? They needed to have some big strokes like boundaries and sixes if they wanted to get some good score here. But so far Sultan, Montugoli, the bowlers bowled a very decent line and length and the tidy overs. Siddiq to continue from the far end. Road hand to Samir, the experienced campaigner. Deversi plays it nicely down to deep cover point region. They're coming back for the second and they managed to complete that second. Even they're looking for the third, but they're going against that third because throw quickly coming from the deep. With that couple of runs, Coburn moves on to 20 on the board for the loss of 4 wicket. The over number 4 in progress. Siddiq back to his bowling mark. 5th time in this over. Down the wicket to Samir. Again quicker and faster. Absolutely fastest delivery I want to say. And very good wicket keeping there from the keeper behind the stump. One more dotted delivery to last time in this over. Right arm over the wicket, going for the big shot, missing the line completely. Good over there from Siddiq, quite over. After completion of over number 4, searching for the right track. Legends Pajir little bit struggling as far as run rate is concerned. 20 on the board, that means they're going exactly 5 runs per over. Last over remaining in their innings. And wait and see how many runs they will going to score in this last over. Still that weather condition is cloudy, overcast weather condition, but perfect condition to play cricket. The cricketers especially, they will going to enjoy this condition. But I think it's going to be a last opportunity for the batters of Nazir. 20 on the board. 4 over ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20. 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ commentary box and experienced campaigner Khalil will go into ball that last over. The left arm bowler
will go into ball round the wicket. So last is over. Khalil will go into ball that last over. Again, a lovely delivery right on the middle stump. Batsman looking for the second. Excellent piece of fielding there by the fielder Siddiq in that occasion. Charging to the ball from the deep long on. Denying the second from this to batter. Just a single. And 21 on the board. 5 balls remaining in the innings. That brings Samir into strike. So Samir had to get some big shot for Legends Pajir if they wanted to get at least 30 plus runs, which is badly required. Khalil. Ball looks like slipped off the hands of Khalil. Then they're going for the extra run as well. Wide 2. And with that wide 2 scoreboard moves on to 23. Sometimes it's happening for the spin bowler. Ball will go into stuck in your fingers when you try to get extra spin, extra turn. And the releasing point while you are trying to release the ball to get some extra spin. That will always going to happen for the spin bowler. So Razik will going to try for big one. So far Sultan Montugoli bowlers have bowled up very good overs, but job which is not yet over, as Khalil will going to continue from the commentary box end. Left arm. Short pitch delivery, hammering it down into the wideish long on boundary for a 6. This is the one problem here of Khalil, that sometime he couldn't manage to bowl properly. If he bowls a short pitch delivery, the batter like Razik will going to wait for the ball to deliver that one out of the boundary line. Scoreboard numbers on to 29. First sixer in the innings of Legends Pajir came in that last over. Khalil again. Bowling. Left arm around the wicket. One more. Better than the previous one. You can't give the short pitch delivery to the batter like Razik. I already mentioned he is the one of the very important player for the side of Legends Pajir, who got ability of capitalizing that short pitch delivery. 35, Muatta Aidu. All in sudden, there is no run. There is a little runs on the board. I already mentioned if they wanted to get a fighting total, at least 30 plus runs required. But to 2 sixes, which has brought them into the good position now. Another 3 balls remaining. If you're able to get another 2 in this set, then it's going to be a good score to depend. Khalil. Left arm around the wicket. Again a top edge, but ball will going to land it safely between bowler and long off. And but certainly Razik will going to get a couple of runs for that. With that couple of runs, scoreboard moves on to 37. Then 2 balls remaining in the innings. 17 runs already came from this over of Khalil. Still 2 more balls left. Razik playing a very important knock for Legends Pajir. Oh, that may be the one more 6. And Razik just wanted to hit the ball down to deep long on. Because of that slower one there from Khalil, he couldn't manage to make it most of the bat. Just a little bit inside edge of the bat. One more single. 38. A last delivery of their innings which is coming up. Samir will be the striker of that last ball of Khalil, the left arm bowler. From the wicket, beautifully bowled. Bowled him, cleaned him up. 18 runs which is came from that over of Khalil after completion of over number 5. And at last Legend Pajir managed to get the score. We can call that it's going to be a fighting total on the board. Not a huge total, but fighting total. 39 they managed to score, and they set a target of 40 to win the
38, which is the total score. Little bit correction. 39 will be the target for Sultan Montugoli to win this match. And wait and see how Sultan Montugoli will go and get this score. The bowlers did a great job. And unless it's the last over, which is expensive, otherwise all the bowlers of Sultan Montugoli are bowled well. And now they need to bat well if they wanted to win the match. As coming to the winnings perspective of team Legends Pajir is concerned, they need to bowl well because they are not depending a big total. They are depending a 39, which is can depend. It can depend if bowls well, the fields well. It's going to be a good match. In the meantime, change in commentary box. We'll take a short break. After that short break, my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. शुक्रिया सतीश। तो 39 रनों का लक्ष्य इस वक्त सुल्तान मोंटेगोली के सामने रखा है लेजेंड्स पजीर ने। 39 the target in 5 overs for Sultan Montugoli set by Legends Pajir and their innings starts। पहली गेंद इस वक्त काफी आगे निकल चुके थे बल्लेबाज, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और यहाँ पर रन नहीं मिला। सादिक ने गेंद को मोड़ा था। इस वक्त नासिर नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज है जो कि काफी आगे निकला है, लेकिन ऐन मौके पर क्रीज पर सुरक्षित वापस और इस वजह से कोई क्षति नहीं। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार था, इनात राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, मिसिंग जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर उखाड़े, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। तो चाही इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑर्थोडॉक्स गेंद को खेल दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ। वाइड स्लॉग आउट पर गेंद जाती हुई, क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 1 रन पर। जस्ट 1 रन ऑन द बोर्ड। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज चाही इस वक्त फेंक चुके हैं और नासिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद टॉप एज, मौका इस वक्त फील्डर गेंद को लपकने में असफल रहे अंतिम क्षण में। शायद वहां पर मौका था, बल्ले का टॉप एज पर गेंद टकराया था जरूर, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर थोड़े से पीछे था। जीतोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की गेंद को लपकने के लिए, लेकिन नाकामयाब और गेंद को इस वक्त छोड़ते हुए बल्लेबाज यहाँ पर बच चुके हैं इस गेंद पर। चाहिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बाउल्ड आउट, जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट इज ऑफ स्टंप। तो पहला विकेट गिर चुका है। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता, उछालना चाहता, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और आखिरकार उनका ऑफ स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है।
नासिर की पारी समाप्त, 1 रन पर पहला विकेट खोल चुका है यहाँ पर सुल्तान मोंटुगोली। शाफी नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और 5 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं। चाहिए अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। शाफी इस वक्त सामना करते हुए और फील्डिंग में इस वक्त विकेट कीपर कुछ हद तक जमावट करते हुए और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। चाहिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए। 1 रन मिला इस वक्त। बाई का इशारा, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी थी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। तो एक बेहतरीन ओवर चाहिए का समाप्त हो चुका है। 2 रन न सिर्फ उन्होंने प्रदान किए हैं, सिर्फ 1 रन बल्ले से, 1 रन बाई के रूप में। और एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए चाहिए अपने टीम को दे चुके। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 39 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक धीमा शुरुआत यहाँ पर कर चुका है। स्लो स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। सुल्तान मोंटुगोली 2 रन जोड़ चुका है, सिर्फ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के मुकम्मिल यानी समाप्ति के बाद। 37 रन चाहिए, 24 गेंदें बाकी, 24 बॉल्स रिमेनिंग, 37 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। आज सुबह से बदली भरा वातावरण, क्लाउडी एटमॉस्फेयर मैदान पर छा चुका है। नीला आकाश घने बादलों से इस वक्त ढक चुका है और इस क्लाउडी एटमॉस्फेयर बदली भरे वातावरण तले यहाँ पर इस श्रृंखला का दूसरे दिन का 8वां मैच इस वक्त प्रगति पर। एक प्रेस्टिजियस क्रिकेट श्रृंखला, प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सुल्तान प्रीमियर लीग 2024, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है सुल्तान फ्रेंड्स मोंटुगोली ने अपने 11वें वर्षगांठ पर इन एसोसिएशन विद मुड़ीपू क्रिकेट एसोसिएशन। इस सुंदर से विशाल से पंचायत ग्राउंड मुड़ीपू पर और ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई आज इस श्रृंखला का दूसरा दिन, कल तीसरा और अंतिम दिन के मैचेस खेले जाएंगे और कल शाम को भव्य इनाम वितरण समारोह यहाँ पर होगा गण्यातीत गण्य अतिथियों के सम्मुख में। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। किरण गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, ये गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडले गेट, फील्डर काफी पीछे तैनात। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा। थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ, दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट। रन से अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज सुल्तान मोंटुगोली के और गेंदबाज किरण। अगली गेंद पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर। 1 रन का इजाफा, बाई का इशारा और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में किरण यहाँ पर फेंक चुके। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, हवे में फील्डर के लिए मौका और इसी के साथ यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। गेंद को इस वक्त स्कूप किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को जमीन पर रखने में असफल और एक बेहतर कैच अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए इस वक्त फील्डर ने लपका पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहाँ पर गिर चुका है। 5 रनों के ऊपर इस वक्त सुल्तान मोंटुगोली कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता है। जो अंतिम ओवर में 18 रन जो गेंदबाज ने प्रदान किए थे, वही 18 रन इस वक्त उनके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं और यहाँ पर देखना है कि बचे हुए ओवर्स में एक बेहतर साझेदारी के जरिए किस तरह इन मुश्किलों को पार कर पाते हैं बल्लेबाज सुल्तान मोंटुगोली के। नए बल्लेबाज नौजल इस वक्त सामना करते हुए किरण की गेंदों का। किरण, यह गेंद लेग स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार किरण दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद उछाला, दिस वन इज क्लीन इट, आई थिंक आई मस्ट श्योर इट्स गॉन ओवर द फेंस many a miles।
ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट पिक दैट वन फ्रॉम द राइट स्पॉट। और गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ वाइड स्लॉग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ नौजल के बल्ले से जरूरतमंद छक्का लग चुका है उनके बल्ले से। स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है इस छक्के के साथ 12 रनों पर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन चाहिए। 27 runs more now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries, and the required run rate is now for them is exactly 9 runs per over. तो गेंदबाज इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए, शाफी बल्लेबाज जो कि सामना करने के लिए तैयार। जाकी गेंदबाज इस वक्त नया ओवर शुरू करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त शाफी जो कि सामना करने के लिए तैयार। 18 गेंदों में 27 रन और चाहिए विजय के लिए। 27 more runs now they have to score in remaining 18 deliveries. और ओवर की पहली गेंद जाकी, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद पैरों पर गेंद टकराई, गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहता, ठीक तरह से गेंद को मोड़ नहीं पाए, पैरों पर गेंद टकराई थी। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी बल्लेबाजों को सुल्तान मोंटुगोली के, और दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर वापस लौटते हुए। तो जाकी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार। नौजल फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। जाकी दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार पैरों पर टकराए, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आते हुए गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहते थे चूंकि, और गेंद को विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद कलेक्ट कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और फिर से एक बार जाकी इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। Lofted, this time he cleared the fence. Yes it does. 6 number 2 for नौजल। और इस छक्के के साथ अब इक्वेशन यानी समीकरण कुछ हद तक आसान होता हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, 15 गेंदें बाकी, और रन से चाहिए इस वक्त 20। 20 runs required in remaining 15 balls now। और 2 छक्के निस्संदेह यहाँ पर सुल्तान मोंटुगोली को काफी हद तक वापस ला चुके हैं। और इस बीच गेंदबाज कुछ हद तक दबाव में इस वक्त नजर आते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन को ड्रॉप्ड एट गली। और इस बीच दोबारा जब तक पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इम्प्रोवाइजेशन के जरिए गेंद को रिवर्स शॉट खेला था, लेकिन गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ गली पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों में पहुंची, लेकिन इस कैच को वो लपक नहीं पाए और गेंद उनके हाथों से छूटी। जब तक खुद अपने पीछे की ओर दौड़कर जाकर गेंद को वो फील्ड करे सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। जाकी अगली गेंद लॉफ्टेड, दिस टाइम एट 6 रन्स। और इस छक्के के साथ आई मस्ट से Sultan Montugoli are now strongly back in the match. तो इस वक्त छक्का नंबर 3 झड़ चुके हैं नौजल, and the scoreboard is now jumping up to 27 with that 6. अब straight away the bowler is now under pressure. और जाकी तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि 1 रन बल्ले का भीतरी किनारा। स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 28 नाउ। 16 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर। 16 रन इस ओवर में बने, और इस ओवर की बदौलत यहां पर अब ऐसा कहना पड़ेगा सुल्तान मोंटुगोली इस मैच में वापस आ चुका है। 2 overs remaining, 11 runs required, 11 to get from 12 balls. Ali
ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಅರ್ಷದ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಷದ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಅರ್ಷದ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಮಜೀದ್ ಮೊಂಟುಗೋಳಿ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅರ್ಷದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಅರ್ಷದ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಯುತ ಮಜೀದ್ ಮೊಂಟುಗೋಳಿ ಇವರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ 12 balls remaining, 11 runs required. The tide is now completely turned. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज इमरान और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार नौजल, दो के 3 छक्का वो अब तक झड़ चुके हैं. He is batting on 18 including 3 massive sixes और पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. 11 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी. पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर. स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर. नो बॉल. 29 द स्कोर, 10 रिक्वायर्ड. 12 balls remaining. और पहली गेंद नो बॉल फेंकने के बाद इस वक्त शायद गेंदबाजी से हटते हुए और यहाँ पर खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. शायद कुछ हद तक दर्द यहाँ पर महसूस करते हुए और कुछ क्षणों के लिए मैच यहाँ पर रुक चुका है. For the next match, I'd like to invite the captains of United Patur as well as Fighters Arcana, please to be reported here for the toss procedure. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ಹಾಗೂ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅರ್ಕಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೂ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. To 12 balls remaining, 10 runs required. The equation seems to be much easier now for Sultan Montugoli. और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज समीर और इमरान एक गेंद फेंकने के बाद अपने आप को गेंदबाजी से हटा लिया है. शायद उनके हाथों में कुछ हद तक दर्द वो महसूस करते हुए. पहली गेंद नो बॉल उन्होंने फेंकी थी लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर. और 2 गेंदों में अगर 2 छक्का लगातार बल्लेबाज लगाते हैं तो नौजल को 2000 रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर घोषित किया गया है. तो इस बीच गेंदबाज तैयार समीर
दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नौजल के लिए 10 रिक्वायर्ड, 12 बॉल्स रिमाइनिंग। समीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, टॉप एज, चांस फॉर द डीप मिड विकेट फील्डर एंड ही टुक द कैच सक्सेसफुली। नौजल छक्का नंबर 4 लगाने के प्रयत्न में अपना विकेट यहां पर खो बैठे। फुल टॉस गेंद पर मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने में असफल, टॉप एज पर गेंद टकराई और डीप मिड विकेट के फील्डर ने एक बेहतर जजमेंट के साथ आगे की ओर आकर इस कैच को लपका। तो यहां पर नौजल का विकेट गिर चुका, 3 छक्के उन्होंने लगाए और एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए। और यहाँ पर अब 11 गेंदें बाकी हैं और 10 रन चाहिए विजय के लिए। 10 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 11 balls and a fine innings came to an end from Naujal of 18 runs. He is backing to pavilion, including 3 massive sixes. 19 runs, in fact, he scored, including 3 massive sixes. New batsman is now comes out to the middle. Samir, left arm round the wicket. अली नए बल्लेबाज के रूप में 10 नीडेड इन रिमेनिंग 11 बॉल्स। और इस बीच समीर बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा मिसफील्ड। इस बीच बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पर स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा और इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास समय था कि दूसरा रन प्राप्त कर सके। अगर नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो करते तो शायद कुछ बात वहां पर बन सकती थी, लेकिन थ्रो किया था स्ट्राइक रन पर, तो इस वजह से बल्लेबाज 2 रन यशस्वीतम पूर्ण करने में सफल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, इन 2 रनों के साथ 31 रनों पर 31 for 3। लेग स्टंप से बाहर, स्ट्रेट अवे, द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर। 32 नाउ, 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद स्वीप किया, फाइन, दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप, दिस इज गॉन ऑल द वे, दिस इज गॉन ओवर द फेंस इन फैक्ट। तो 4 रन यहां पर प्राप्त कर चुके बल्लेबाज। स्वीप किया था खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर और जीतोड़ दौड़ लगाने के बावजूद यहां पर रन्स प्राप्त करने में सफल चौका और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 36 रनों पर। 36, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज की गेंद बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, exposing the stumps, just trying to loft that one on the onside area, not succeeded. Extra wicket delivery, and at last after beating the batsman's bat, it stuck to the midland of stump, midland leg stump in fact. 4th wicket fallen and now it's 36 for 4. So 8 balls remaining, 3 runs required. और समीर इस वक्त तैयार, रिवर्स शॉट delicately played into the gap. He gets at least a single, looking for the second, and they come back for the second. और इन 2 रनों के साथ the scores are now leveled. Just 1 run required of 7 balls. रनों की बराबर यहां पर हो चुकी है। और समीर की गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा था, खेलने में चूके जरूर, लेकिन 1 रन नहीं, वाइड का इशारा। इसी के साथ यह मैच सुल्तान मोंटुगोली ने जीत लिया है 6 विकेटों से, 6 गेंदें बाकी रखते हुए। लेजेंड पजीर के खिलाफ और इस 6 विकेटों के विजय के साथ, इस 6 विकेट के विजय के साथ परिपूर्ण अंक सुल्तान मोंटुगोली प्राप्त कर चुका है। Naujal adjudged the man of the match because of his 3 massive sixes he hit, and because of that fantastic batting knock, he adjudged the man of the match. I request Naujal of Sultan Montugoli, please come on to the stage and receive the man of the match award from Mr. Ansar Montugoli. And I request Mr. Ansar Montugoli, please distribute the award to Naujal of Sultan Montugoli for his fantastic batting performance of 19 runs, including 3 massive sixes. So match number 8 has been came to an end. 8वां मैच यहां पर समाप्त हो चुका, 9वां मैच यहां पर शुरू होता हुआ यूनाइटेड पातूर और फाइटर्स अरकाना के बीच में, और वो मैच यहां पर शुरू होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहां पर मैच नंबर 9 की यहां पर शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। धन्यवाद, थैंक यू।
So we're into the match number 9, United Pathur versus Fighters Arkhana. So I request the teams please make it fast. Don't waste the time. We need to play another matches. So we are going here into the match number 9 as the Fighters Arkhana. After winning toss, they elected to field first, and United Pathur won the toss, elected to field first. Here is the first ball. Right arm over the wicket, ball is going to be a wide. Starts with a wide. Oh, that ball going to miss the wicket keeper and the fine leg fielder, and that will going to be a boundary. 5 runs gifted by the bowler and the fielder. So Fighters Arkhana, they have to open the accounts in the points table, but United Pathur, they wanted to continue their winning runs in this particular league stage matches. Played 3 matches so far. They won 3. They're playing their 4th match. Altaf, right arm over the wicket balls. Again, it's going to be our delivery, which is called as a wide. So without conceding any delivery in this over, without bowling a single delivery, he conceded 6. Again deflected from the leg of the batter, ball running down to square leg region behind the square, and leg by call by umpire. With that leg by scoreboard now moves on to 7 on the board. Harris is in non-strikers end. Numan wanted to get that one down to third man, but not quite able to defeat that third man fielder. One more single added to total. With that single, scoreboard moves on to 8 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Again the bowler Altaf, right arm over the wicket, delivers. Swept that one but missed it completely from the bat, and ball hitting his leg, and on his follow through Altaf fields the ball back to his body mark. Already 8 on the board in just 3 deliveries in this over, as Fighters Arkhana wanted to get their first victory in this league stage matches. Again lovely delivery, faster and quicker one, and this time Ishaq Harris wanted a single, but his partner is not interested for that, and there is no chance at all for any run. Good comeback for the bowler's point of view. After that he bowled some wide deliveries. He is back in the this time chance here for the fielder to take the catch, and he completes the catch very well. So first wicket back into pavilion of team Fighters Arkhana. And Harris is the batter, is back into pavilion, tried to get that one over that fielder at back point region, but ball which is really travelled straight to the hands of the fielder. Arkhana have lost their first wicket. Altaf again will going to continue. Right arm over the wicket. Wanted to sweep the ball and misses it completely. Then wicket keeper behind the stump did the rest. Over number first completed. Good comeback here by Altaf after completion of over number first. And team Fighters Arkhana managed to get 8. But all we can see that in that 8 runs, the 7 extras. Shafi is the new batter in, just came into middle. Both the batters has got a same jersey number, that is 33. Bowler 30. Very interesting numbers here, because strikers has got a jersey number 33, non-striker also jersey number 33, and even bowler also is wearing a jersey number 33. This is really the 333s are in action. Tanvi this time driven that one off stop by the fielder Mustafa down at short extra cover. There is opportunities created for the catch. Slight a bit of attempt there from Mustafa, but not good enough to take the catch. One more run
With the addition of that single, scored numbers on to 9. And Numan got his first run from the bat. Lovely delivery. Bowled him, cleaned him up. Shafi tried to play across the line, and where the ball definitely going to be in the middle stump. He need to play that one in. No ball called by umpire. Batsman is safe. So batsman is safe, a no ball called by umpire. Scoreboard is 10 on the board. A very lucky escape here for Shafi. Tanvi. Scoreboard is 10 on the board. This is a highly disappointment for the batter. He got a life in the no ball, but he didn't manage to capitalize. The very next ball is also got out in the form of bowled, but he's just seeing the umpire. Will it going to be another no ball? But umpire says it is not a no ball. This is a fair delivery. The batsman have to walk towards the pavilion. Sometime it's happening in cricket. Luck will going to come to your way, and you need to grab this luck. But a batter, even though he got a luck, but couldn't manage to capitalize that luck. Very next ball is back into pavilion. The new batter in is coming down in the order, just in number 7. Ishaq again going for the drive, misses the line completely. Good bowling performance here from Tanvi so far. Drives that one, bowler's back drive down to deep long off region. Only single there for the batter. Altaf, the fieldsman, there in the deep long off, fields the balls with that single, scored Namuzan to 11 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. Drives that one, driven firmly. Oh, that was extra bounce, and negotiated very well by that fielder at mid wicket, just jumping and stopping runs for his team. Just a single there for Numan, and scored Namuzan to 12 on the board. Again, that ball is going to be a wide signal umpire, wicket keeper behind the stump, and in a fraction completes his job, but not really getting the result in his favor, as umpire says batsman is safe. One more extra, scored Namuzan to 13 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. Latecomers, you are watching match number 9 of the day number 2. Altogether, this is a 19th match. This is the 19th match in this 2 days of cricket, after this one match which is remaining. Driven nicely down to deep long on for a walkable single by Numan. With that single, scored Namuzan to 14 on the board for the loss of 2 wicket. 2 overs completed. They're going exactly 7 runs per over. 3 overs remaining in the innings of team fighters Arcana. A little bit disappointment here for Arcana fighters, because they need to open the account in the points table. They need to bat well, and because they're playing against unbeaten team in this league stages, that is Friends United Patur. So far, out of 3 matches, they won all 3 matches. They're playing their 4th match, and they wanted to continue their winning track in this league stage matches. And at the same time, team of fighters Arcana wanted to break their losing track in this particular match. They wanted to win this match desperately. Ishaq is on strike. Young bowler Aziz will go into bowl. Right arm over the wicket. This time lofted that one just over the infield, and Cow Point fielder will going to run back to field the ball, and ample time for the batter to complete the couple of runs. With that couple of runs, scored Namuzan to
16 on the board. 16 for the loss of 2 wicket. This time lovely shot, no need to run for that. Ball running down to deep square leg boundary for 4 runs. Lovely pick here from Ishaq. Ball just tripping down outside the line of leg stump, and it's that one down to deep square leg boundary for 4 runs. Iju, right arm over the wicket to Ishaq. Oh, lovely comeback here by the young man. Just learning from the mistake that you cannot bowl that line which is outside the line of leg stump. And wicket keeper did the rest and back to bowler. Iju balls. Ishaq lofted that one, but straight to the hands of Altaf down at deep long on division, and one more wicket is back into pavilion. Fighters Arkhana lost their 3rd wicket. Ishaq wanted to get the big shot, but not quite able to get the distance right. It's 20 on the board for the loss of 3 wicket. Rizwan is a new batter in, is coming down in the order. Lot of surgeries in the batting order of Arkhana. Fighters Arkhana. Again, lovely delivery indeed. A shot which one chance of run out in the non-cycle. Correction, cycles and wicketkeeper fails to gather the throw from that field. They quickly return that one. And one more single been added total. With that single scored numbers on to 21 on the board. Iju, 5th time this over to Numan. That will going to be a spectra wide, and one more addition to total with an extra 22 over number 3 in progress. Iju balls. Right arm over the wicket. This time lofted that one straight to the hands of Altaf. Second catch in this particular over. And Iju got wicket number 2 in this over. Over number 3 comes to an end. The 3 completed after completion of over number 3. Searching for the right track. Team Fighters Arkhana are 22 for the loss of 3 wicket in fact. Now 4 wickets. So 2 overs remaining in that innings of team Arkhana Fighters. Nisar will going to bowl that 4th over of the innings of team Arkhana Fighters. Right arm over the wicket, bounce, going for the cut shot, got it outside edge of the bat, ball running down to 3rd man region. Good piece of fielding there by the fielder, chance of run out in the strikers, and but wide throw coming from that fielder, so that both the batters completed that quick couple of runs quickly, and with that couple of runs scored numbers on to 24 on the board for the loss of 4 wicket. Nisar to Rizwan, over the wicket delivers. Again, nice placement off the back foot, beautifully plays it down deep backward point region. The fielder from deep cover point need to run to his left to field the ball. Ample time for Rizwan to complete the single. With that single, quarter century, 25 comes up here for Arkhana Fighters for the loss of 4 wicket. Lovely delivery. Oh, that might be the opportunity for the wicketkeeper behind the stump, but a slight bit of fumble, so that
the one more wicket which is back into pavilion. It was automatically done, so the batter had to walk towards the pavilion. Stumped out. New batter walking towards the middle. The new batter is Imran, came into middle, and he taken a single there. With that single, scored Namuzan to 26 on the board. Ali balls. Again, lovely delivery. Wanted to play the reverse sweep. Missed it complete. Then wicket keeper behind the stump. Very quick and very accurate. And he gathers the ball. Back to bowler. What a shot. Magnificently played. That will go into be a 6. one of the best reverse stroke of the day. Number 2 played by Rizwan. And scored Namuzan to 32 on the board. 32. Over number 4 completed. A lovely switch it. Neatly played that one out from the middle of the bat. Aziz will be the bowler. Imran is on strike. Rizwan in a non-strikers end. 32, which is the total score. The last over will going to start from the committee box end. Aziz. Leg spinner. Bowls starts with the wide. One more extra. 33. Important runs coming in this last over as well for the team. This time Imran will go into run for a single in the form of leg bye. With that leg bye, scored Namuzan to 34 on the board. Last over is in progress. Last 5 deliveries remaining. Long on, mid wicket. Long off. Deep cow point. Short cow point. Short third man. Short fine leg. Short mid on. Again, that ball going to be a wide. The second wide of this over. One more extra. 35. 2 wide deliveries so far in this over by Aziz. He bowled only 1 fair delivery. This time driven that one beautifully down to deep square leg region. Good piece of fielding there by the fielder in the deep. Good return as well, just over the stumps. And scored Namuzan to 36 now. 4 deliveries remaining. Imran is on strike. This time bowled him. Clean him up with the beauty. The leg spinner which is coming around the legs of the batter. Batsman going for the expansive drive. Misses the line completely. Then Imran back into pavilion. The wicket number 5 is gone. In fact, it's a 6th wicket who is back into pavilion. Then match number 9 in progress here. Again, that ball is it's the legs of the batter. One more single. With that single, scored Namuzan to 37 on the board. Last 2 deliveries left in this over, and about the new batter. Again, the wide outside the line of off stump. 3rd wide of this over. 38 on the board. Rizwan.
Wanted to go for the big shot. Wicketkeeper misses it. Shot fine leg fielder will go into collect. They coming back for the second mix up. But they managed to complete that couple of runs. 2 runs in the form of bye. And with that couple of runs, Kubarna moves on to 40. Round the wicket, Aziz bows. This time drives that one right in the gap towards the mid wicket, but fielder is there in the long on. He'll going to cut it off. Good throw coming from the fielder, and only a single run out taken place. So 41 the total of team fighters. Arkhana at last to manage to get a good total and set a target of 42 to win the match for team United Patur. And first time we are seeing that fighters Arkhana, the batters, managed to get some good score here, and wait and see how well the bowler will go into justify the effort of the batters, and wait and see how United Patur will go into continue their winning track in this league stage match. We'll take a short break here, and after that short break my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone. Thank you. शुक्रिया सतीश। तो 42 रनों का लक्ष्य इस वक्त यूनाइटेड पातूर के सामने रखा है इस वक्त फाइटर्स अरकाना ने, और 42 रन बनाए। 42 द टारगेट फॉर देम इन 5 ओवर्स एंड देयर इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट। पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो ऊपर था विकेट, गेंद को खेला सीधे कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। मुस्तफा की पारी समाप्त। गेंद को जमीन पर नहीं रख पाए और ज्यादा उछाल भी नहीं पाए, और गेंद सीधे पहुंची कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में। रन्स इस बीच पहला विकेट गिर चुका है। 0 रन 1 विकेट। इट्स नॉट फॉर 1 इन द फर्स्ट ओवर एंड मुस्तफा डिपार्ट्स नाउ फॉर गोल्डन डक। तो इस वक्त नए बल्लेबाज नवाज क्रीज पर मौजूद। आसिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद को रोकने में असफल, और गेंद सीमा लेकर से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए स्ट्रोक को खेला था रिवर्स शॉट के जरिए नवाज ने। शॉट थर्ड मैन फील्डर के दाईं ओर से गेंद निकली और डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर। वाइड +4, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था, तो ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद थी, और 5 रन यहां पर वाइड के रूप में मिल चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, इस बार इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ अब इक्वेशन सीम्स टू बी इजियर अ लिटिल बिट फॉर यूनाइटेड पातूर। 9 रन बच चुके हैं, और पहली गेंद पर विकेट जब मुस्तफा का गिरा था तब ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज दबाव में पड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों में कुछ हद तक नक्शा यहां पर बदलता हुआ वाइड के रूप में 5 रन बने, और उसके बाद नवाज ने इस गेंद पर रिवर्स शॉट के जरिए चौका लगाया, और 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच गेंदबाज आसिफ तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला शॉट थर्ड मैन पर, एक बार फिर से मिसफील्ड, और गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 4 रनों के लिए।
शॉट तो फाइन लेग पर कहना पड़ेगा, इस वक्त फील्डर मौजूद थे, लेकिन इस बार गेंद को रोकने का मौका जरूर था उस फील्डर को, लेकिन आखिरकार अंतिम एक्शन में गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और दूसरे फील्डर लंबी दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली गुड स्टार्ट फॉर यूनाइटेड पातुर। और आसिफ फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग और गेंद को अपनी दाईं ओर जाते हुए झुकते हुए ठीक तरीके से 20 गज के दायरे के बाहर रोकने में सफल फील्डर रहा और निश्चित रूप से लगातार तीसरा चौका यह हो सकता था। 1 रन बल्लेबाज को प्राप्त होता हुआ 14 रन बन चुके हैं और आसिफ एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और गेंद अपनी रफ्तार को खोने के बाद पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस फील्ड की जाए, 2 टिप्पों के बाद आफ्टर 2 बाउंसर्स बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ बाउंसर्स फील्डेड बाय द फील्डर इनसाइड द फेंस और 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रन, 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज इस वक्त तैयार, आसिफ इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और सामना इस वक्त करते हुए अल्ताफ, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ into the gap as well, once again he gets a couple, maybe it's a boundary, yes it does, it's crossed over the fence for a boundary and now 20 runs scored in the first over, except they lost their first wicket in the very first delivery of their innings. They managed to score 20 runs on the board and this is an absolutely fantastic start for them. यूनाइटेड पातुर 20 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोने के बावजूद एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर करने में सफल हो चुका है यूनाइटेड पातुर और सिर्फ 22 रन अब चाहिए बचे हुए 4 ओवर में और रिकॉर्ड रन रेट सीधा उतरकर इस वक्त आ चुका है 5.50 रन प्रति ओवर। तो गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए नया ओवर प्रारंभ होता हुआ इस वक्त और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज नवाज इस वक्त सामना करते हुए जो कि 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 2 चौकों की मदद से ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज नवाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट तक इनको खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर, 20 for the loss of 1 wicket. अगली गेंद reverse shot, this time he finds the gap and brilliantly stopped inside the fence, just push the ball inside the fence and he's got a couple run for that stroke और बेहतरीन फील्डिंग डी थर्ड मैन फील्डर द्वारा और 2 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त करने में सफल। 22 now for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद रिवर्स स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, घुटनों के बल बैठते हुए थोड़ी सी मिस फील्ड लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 23 रन बन चुके हैं, 23 for the loss of 1 wicket and this is the just a second over in progress and this is an absolutely fantastic progressing here now for United Patur। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद और कवर पॉइंट फील्डर के इस वक्त पीछे भेज दिया जा रहा है डीप कवर पॉइंट पर और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद क्विकर सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, हल्के से रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला मिड ऑफ पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदलने में सफल हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। 4 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, वाइड का इशारा
और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर, और 17 रन और चाहिए विजय के लिए। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में, रन से फिर से नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। द स्कोरबोर्ड स्टेज एट 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लास्ट टाइम इन दिस ओवर द बॉलर कम्स राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार एक बार फिर से गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, लेकिन इस बार वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए, और एक रन का इजाफा हो चुका है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज रिवर्स शॉट खेलना चाहा एक बार फिर से, चूंकि सही गेंद कोशिश। 2 overs completed and after 2 overs they are looking in a commanding situation now. 26 for 1, 6 runs came from the last over and just 16 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 balls, and the equation seems to be a much easier now for United Patur. So welcome back once again. Match number 9 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. The Sultan Premier League 2024 is now progressing here. And a fantastic live coverage we are just watching on YouTube from Mangalore Media under the great leadership of Mr. Kamal Ahmed. और जहाँ तक इस मैच का सवाल है तो सिर्फ रन से चाहिए 16। तो यहाँ पर तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त तैयार, हल्के से गेंद को इस वक्त स्टीयर कर दिया गली क्षेत्र पर। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, गेंदें ज्यादा बाकी है, रन से कम बनाने हैं। 17 गेंदें बाकी, 15 रन बनाने हैं और 9 विकेट सुरक्षित और एक बेहतरीन साझेदारी यानी पार्टनरशिप इस वक्त बनती हुई अल्ताफ और नवाज के बीच में। और इस बीच गेंदबाज इसाक गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, इनटू द हैंड्स ऑफ कवर पॉइंट फील्डर, स्लाइड बिट ऑफ मिसफील्ड। बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। दोबारा तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए फील्डर, और इस बीच 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 28 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस बीच इसाक फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, इस बार गेंद पहुंच चुकी है स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, 1 रन का इजाफा और थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहता, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाया लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 42 द टारगेट इन 5 ओवर्स एंड दिस इज द 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार पैरों पर गेंद टकराई, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके 1 रन का इजाफा, and with that single the scoreboard moving up to 3-0, that means 30 for the loss of 1 wicket। और 4 बेहतर गेंद इस ओवर में इसाक फेंक चुके हैं, 4 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं पहले 4 गेंदों में। अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, 31 for the loss of 1 wicket, 2 balls still left in this over, just 11 more runs now they have to score for victory। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार रक्षात्मक, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, पूरी तरह अपने वजन को बैकफुट पर लाने के बाद गेंद को हल्के से इस वक्त पुश कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ। और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं, 32 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी पर इस वक्त आते हुए इसाक, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। इस बार चूंकि ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी गेंद, 6 रन बने, 6 रन केम फ्रॉम दिस ओवर, 32 फॉर द लॉस ऑफ
1 wicket after completion of 3 overs, and now 10 required of 12 balls. That means in remaining 2 overs. Next match will be the last match of the day, 10th and the last match of the day. Will be played between Friends Mysore versus Legend Pajir, and in this match Friends Mysore are won the toss, and what the decision they will take, just we have to wait and see. शाम के 5:15 यहाँ पर बज चुके हैं और मैदान पर रोशनी काफी हद तक कम हो चुकी है। सुबह से बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। घने बादल जो कि नीला आकाश को इस वक्त ढक चुके हैं और इस बदली भरे वातावरण तले अंडर दिस क्लाउडी सर्कमस्टेंसेस मैच नंबर 9 का द्वितीय सत्र द्वितीयार्ध यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, छोटे कद के खिलाड़ी फारिश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। 10 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी। ओवर की पहली गेंद लेकर फारिश तैयार। अल्ताफ जो कि सामना करते हुए, पहली गेंद ड्राइव्स खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। 33 रन बन चुके हैं। निस्संदेह अगर कमबैक करना है इस वक्त फाइटर्स अरकाना के गेंदबाजों को, तो इस वक्त लगातार डॉट गेंदें यहां पर उन्हें फेंकने होंगे और विकेट भी यहां पर उखाड़ने होंगे। फिलहाल इक्वेशन कुछ हद तक आसान होता हुआ इस वक्त यूनाइटेड पातुर के लिए। ये गेंद रिवर्स शॉट, डिलिकेटली रिवर्स स्वेप्ट, जस्ट अ सिंगल। Score moving up to 34 now for the loss of 1 wicket. 34 runs already added now for the second wicket so far, after being they are lost their first wicket in the very first ball of their innings in the face of Mustafa. These two batsmen, Altaf and Nawaz, are playing very well, getting a partnership of 34 runs still here. और इस बार स्वीप किया गेंद को इस वक्त कुछ हद तक सफल होते हुए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। फारिश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार लेग स्टंप से बाहर और शॉट स्क्वायर लेग फील्डर के कंधों पर गेंद टकराए। अंतिम क्षण में गेंद वहां पर कुछ पत्थर पर टकराने के बाद वहां पर बाउंस होती हुई, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। वाइड ऑल्सो कॉल्ड बाय अंपायर, 3 वाइड्स एडेड टू द टोटल, और इन 3 वाइड की बदौलत स्कोर बोर्ड अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर। 38, जस्ट 4 रन्स मोर, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। फारिश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। डिलिकेट, एब्सोल्युटली डिलिकेट इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन के लिए। 39-39, फैंटास्टिक पार्टनरशिप इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर फॉर यूनाइटेड पातुर बिटवीन अल्ताफ एंड नवाज, और कुल मिलाकर इस ओवर में 2 गेंदें बाकी, 8 गेंदें बाकी है, और सिर्फ 3 रन चाहिए विजय के लिए। लेग स्टंप से बाहर, वाइड 40 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 8 बॉल्स लेफ्ट, 2 रन रिक्वायर्ड, और फिर से एक बार फारिश अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, lofted down to long on, but there is a fielder, not more than a single, and with that single the scoreboard moving up to 41 run now, and that single brings the equality. Now the scores are level, just a 1 run they have to score for victory. और फारिश अपनी अगली गेंद लेकर तैयार रहा। ये गेंद चिप किया, हल्के से गेंद को इस वक्त पुश किया था, और इसी के साथ कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री फॉर यूनाइटेड पातुर बाय 9 विकेट्स, thanks to the fantastic partnership held between Altaf and Nawaz. 42 runs unbeaten partnership held after being they lost their first wicket in the very first delivery of their innings in the face of Mustafa, and they finally reached the target in exactly 4 overs for losing just 1 wicket, and a 9 wickets comprehensive victory for United Patur against fighters Arcana. So they back the complete point. Next match will be the last match of the day. अंतिम मैच यहाँ का शुरू होगा फ्रेंड्स मैसूर और लेजेंड्स पजीर के बीच में। फ्रेंड्स मैसूर ने इस मैच में टॉस जीता है, देखते हैं क्या निर्धार वो लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम टुडे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब मैच नंबर 10 और अंतिम
मैच की आज की अंतिम मैच की शुरुआत यहां पर होगी। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। Welcome back for the last and final match of the day. Number 2 will be played between Friends Mysore versus Legends Pajir, and Friends Mysore will go into bat first here. The opening batters, dashing opening batter, left-hand batter, the killer of the ball, and we are just talking about Arshad Bajal is in Striker's end, and in the non-striker's end, Rauf, and bowler will go into start proceedings. Sahil. Sahil will go into ball the first over for team Legends Pajir on behalf of Legends Pajir. Here is the first ball. Arshad went for the, luckily that ball didn't carry to the fielder. The ball just landed between the short fine leg and the square leg, and Arshad Bajal wanted to get that one down to deep square leg, in one of his favorite area, but didn't got the proper connection in the irrigation. Got a leading edge. Ball just landed safely between that two fielders. So he's off the mark with the single, one without loss of any wicket in the over number first is in progress. Power play is in progress. And right-hander batsman is on strike now. Rauf, for Rauf there is a fielder down at deep long on, and one fielder down at deep long off. Looking for the sweep shot, misses the line completely, then wicketkeeper behind the stump collects the ball very neatly, and back to bowler. Again Sahil, right arm around the wicket, delivers. This time it's gone, I think so. Ball looks like going to hit the stumps, off stump, and it's gone. Rauf back into pavilion with the excellent delivery, which is bowled by Sahil. It's one for the loss of one wicket, and good start here given by the young bowler for team Pajir Legends. Pajir Legends so far they played their first match against United Patur. They defeated, and then they won their match against the Fighters Arkan in the second match. Then again they faced defeat against the Sultan Montugoli, and then they're playing their last fourth match between against friends Mysore. So coming back to this, friends Mysore, they faced a defeat in their first match. Then afterwards they got into the winning track, and they got 2 victories after that. And now they are looking towards their third victory in this league stage matches.
Outside the line of leg stump, going to be a white, one more extra. With that extra scoreboard, Namuzan to 2 on the board. Tanzif is the batter. The number 3 batter for the side of team Friends Mysore. Again, a quicker and faster delivery in again from the bowler. So batsman little bit late to react to that flick shot of his legs, and wicket keeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Good bowling performance continues here from Sahil. Right arm around the wicket. Drives that on down to deep long on region just for a single, and with the single scoreboard Namuzan to 3 on the board. The over number first is in progress. Umpire just wanted to change the ball. Maybe the batsman's just claiming for better ball after some examination from Arshad Bajal. I will going to continue. Going to face Sahil. So far it's a very good over, quiet over. Right arm round the wicket. This time again swings and missed it. The great piece of bowling performance here from Sahil. First over is a quiet over. Great start here from the young man. So after completion of first over, and the team Friends Mysore are 3 for the loss of 1 wicket. So need to continue that start which is given by the bowler. It's not a good and easy one for any bowler to come and bowl in the power play overs, especially when you are having a destructive batter like Arshad Bajal in front of you. Keeping them quiet is always going to be a big challenge, and the opening bowler did a great job to keep the batter very quiet, and he got a wicket as well. The very good start. Kiran will going to bowl the second over. Tanzif is the batter, is in front of Kiran there. Long on, long off. Deep extra cover. There is a mid wicket. And fielder down at deep square leg in front of square. Starts with the wide. This is what the problem that what Kiran has got sometime. Fails to get his line straight away. And ball outside the line of leg stump. Wide call by umpire. Scoreboard Namuzan to 4 on the board. Kiran bowls system, drives that one down to deep long on region for a walkable single. With that single, scoreboard Namuzan to 5 on the board for the loss of 1 wicket. That brings Arshad back on strike now. And straight away change in field now. Left and right combination. The headache for the opposition team to change the field set every time when strikes are rotated. There is a deep square leg behind the square that is almost between fine leg and square leg. One fielder down at deep square leg and one at a deep mid wicket and long on. So 4 protection in the onside region for the very good striker of the ball, Arshad Bajal. 1 down at long off. So Kiran will go into continue. Right arm over the wicket. Wanted to sweep the ball. Misses the line completely. Wicket keeper misses it. But the short third man fielder quickly fields the ball. And there is no chance at all for any run. Score remains on 4. 5 correction. 5 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Kiran again. Short run up. Right arm. Oh, lovely delivery, extra bounce. Absolutely perfect stuff there from Kiran. Testing the temperament of Arshad Bajal by 2 very good deliveries. Arshad Bajal now, wait and see what he will going to do here for the next ball. Again swings and again missed it. Chance of run out. Good throw coming from the fielder. Excellent work by the fine leg fielder. Arshad Bajal wants a run. His partner is a little bit slow to react that one because there is no run at all in that occasion. Tansif, what unfortunately is back into pavilion in the form of run out. Great piece of bowling continues here from legends Pajir. Kiran really bowled a very strong line.
So one more wicket back into pavilion, replacing Tanzif. Ansar Bajal walking towards the middle. That means two brothers out there in the middle. Always the Thunderum cricket has got some brothers, especially if you see that in legend cricketers, in Reliance cricketers side, they have got 5 brothers in one team, Quresh brothers. So many brothers and one team, and still remember in Jaipur, brothers Jaipur, they got 9 brothers in one team, and that's one of the record number of brothers played in one team. Here again the Kiran bowls, nicely plays it down to deep long on region for a single by Ansar Bajal to give the strike to his brother Arshad Bajal. Left and right combination. The international cricket, if you see that at present international cricket, Krunal Pandya and Hardik Pandya, the two brothers playing for nation. Marcos Tivo is one of the most popular pairs. Here is again Ashad, couldn't manage to read the slowness of the delivery. Absolutely perfect stuff there from Kiran. Bowled a slow over one. Good over completed after completion of over number 2. Still team Friends Mysore in fact are not really got that much of runs on the board. There's 7 on the board. Good start given by the 2 opening bowlers for team Legends Fazir. Talking about some international popular brothers, Finn brothers, some Zimbabwe has got a Handy Flower and Grand Flower. Three brothers in Australia, Greg Chappell, Ian Chappell and Travel Chappell. For Australia, they played the 3 brothers. Then, and in 80s we have Surendra Amarnath and Mohinder Amarnath for India. So left arm bowler Samir starts with the wide, absolutely big wide, with the Texas Cobra Namozan to 8 on the board, 8 for the loss of 2 wickets. Bajal is on strike. Samir bowling left arm round the wicket. This time beautifully bowled. At last the struggled innings comes to an end. Arshad Bajal cleaned him up by the Samir. Absolutely fantastic stuff here from the bowlers of team Pajir. Absolutely, the legends are doing a great job here for the Pajir. The great bowling performance continues here. And danger man Arshad Bajal departs and in this particular match he couldn't manage to get a big score for his team. It's a struggled innings which has come to an end. So new batter in now, coming to the middle. Shamsher. What a delivery. Back to back 2 wickets. Shamsher is on fire. Absolutely fantastic 2 deliveries to dismiss 2 wickets in 2 consecutive deliveries. That means Shamsher is on hat-trick.
Samir led correction. And being the experienced campaigner for the side of legend Pajir is doing a great job. This is all because of two opening bowlers. They laid the foundation by bowling some quiet overs. Then Samir continues. So jersey number 06 is on, came into bat here. Straight away he swept the ball nicely down to deep mid-wicket region for a single with that single scoop, but Namuzan to 9 on the board. This time Napil and is gone. One more wicket back into pavilion, 3 wickets back into pavilion. And looks like team first time the friends Mysore are looking in trouble. The wickets are tumbling like a house of cards. 3 wickets in that over for Shamir. Munzir is a new batter in, now came into middle with some responsibility in his shoulder. Score is just 9 on the board. Again the lovely delivery indeed there from Shamir. What a great over is turning out to be. 3 wickets in that over. Last delivery remaining in this over. Scoreboard is not moving here, only 9 on the board. The over number 3 in progress. Final time in this over. Again that going to be a wide, and with that wide scoreboard Namuzan double figure 10. Again driven that one down to mid-wicket region, and they completed a single. With that single scoreboard Namuzan to 11 on the board. The please ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಎರಡು ತಂಡದ ನಡುವೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು we are going to play the match for the super overs, those who are got equal points in the points table. So 3 overs completed, and still team Mysore, after friends Mysore, is struggling to get runs on the board with a disciplined bowling performance by legends Pajir. Right arm over the wicket again, nicely driven down to deep square leg region. Now they wanted to come back for the second. Just a single. With that single scored Namuzan to 12 on the board. Zakaria with the jersey number 17, the bowler. Rauf will going to be the striker. Zakaria. Right arm over the wicket to Rauf. Oh, lovely delivery. Wicket keeper behind the stump. Excellent collection. Ball just passing between bat and pad. Lovely delivery there from Zakaria. Again the struggle time continues here from the batters of Mysore, friends Mysore. And
And the encouragement here for the bowlers because the condition, slight a bit of overcast condition, cloudy weather. And bowlers really enjoying this condition, bowling some good deliveries. This time lofted, I don't think we're going to get the distance, but the fielder will going to take the catch. And a long off fielder just running across to his right and complete the catch down at long on, straight long on. One more wicket back into pavilion of friends Mysore are looking in a deep trouble. It's 12 for the loss of 6 wicket. Quite unusual scoreboard, we can see that. So very experienced campaigner walking towards the middle with the responsibility in his shoulder. Now fall. So 1 did 12 on the board. Over number 4 is in progress. Zakaria also doing a great job, just like what their bowlers did. 3 bowlers did a great job, and he continues that job in this particular over. Right arm over wicket bounce. He drives that and beautiful looking cover drive, and at least they've wanted to get a couple of runs, but I don't think it's going to be not a good running bit in the wicket. They can come back for the second, but they settled for the single. With that single scoreboard, Namuzan to 13 on the board. 13 on the board for the loss of 6 wicket. Muzir is on strike. Zakaria again place it down to deep wideish long off region for a single. With that single scoreboard, Namuzan to 14 on the board. Very hard to combine the runs against disciplined bowling performance by Pajir Legends so far. The first time I'm watching their bowlers doing a great job. Zakaria to Naufal. It's going to be a wide outside the line of off time. That only because of Naufal a little bit shuffled across the line of the delivery to disturb the concentration of the bowler. And bowler just misses the line completely. One more addition. 15 on the board. Naufal drives that one powerfully. Bowler on his follow through. Tried to stop the ball from his legs, but couldn't manage to do that. So just a single for Naufal. Then one more over completed. After completion of 4 overs, still team friends Mysore are searching for the right track, struggling in the middle. They're going exactly 4 runs per over, 16 wickets. So last over remaining in the innings of friends Mysore. So Zuni will going to bowl that last over. Naufal in front of him. Just a 16 on the board. Last opportunity for the batter to get some acceleration. Nicely driven up his sleeve, but quite safely. After 2 bounds collected, they're looking for the second, and the throw didn't got enough power. Maybe the batsman looks like it's going to be a safe couple of runs, which is completed. Good running between the wickets. 18 on the board. They wanted to take every chances here in this last over to get as much run as possible in this final over. Very good running between the wicket from these two batter. 18 on the board. One more extra fielder added in the cow point region. Kiran coming towards the cow point from the square leg region. Backward point, short cow point and short mid off, and one fielder down at long off and deep extra cover. Drives that one down to deep long on. Protection has been given in the deep. They settle for the single with that single score, but Namuzan to 19. So far it's a tidy line from the bowler Zuni. 4 balls remaining. At least 1 or 2 big shots which is required for team friends Mysore to get some competitive total.
Drives that one powerfully, and the catch has been taken there by the long on fielder. Hoisting it over, and didn't got that much of elevation what he's looking for. Of course, he's got elevation, but the distance what he is looking for, it's not good enough. Have a look at the stroke. Across the line, swings that one, and long on fielder, absolutely good catch, just inside the boundary line, moving to his right, completes a very good running catch. So with that wicket, it's a 7th wicket is back in the pavilion of friends Mysore. Harris is a new batter in with the jersey number 10. Most of the players loves to wear that number, jersey number 10, because that is the jersey number of god of cricket Sachin Tendulkar. Wears that number, and here is Harris will going to face next delivery. Going for the drive, opportunity of run out, and bowler Zuni is trying to hit the stump. Fortunately, ball hits the stumps, otherwise going to be a overthrow. And he's very confident that he can shy the stump. He will shy the stumps. And one more wicket is back into pavilion. 8 wickets back into pavilion. Now Fall departs. So last 2 deliveries remaining in their innings. 2 deliveries remaining. So far it's going really great bowling performance continues here from the bowlers of Legends Pajir. So there is a new batter in, is announced like Gazan. Right arm over the wicket. Coming down the track, lofted, right in the gap. But not more than a single. They come back for the second chance of run out, and looks like batsman safe there. Couple of runs will be added to total. With that couple of runs, Coburn moves on to 21, and the last delivery remaining. Last delivery remaining. 21, which is the total score. The last delivery of the innings of friends Mysore will go into commence now. At least one big shot is required to get some competitive total here. Coming down to attack, missing the line completely. Wicket keeper did the job. And one more wicket is back into pavilion. And 9th wicket which is back into pavilion after the completion of 5 overs. Friends Mysore only managed to score 21 runs, and they set a target of 22 to win this match for Legends Pajir. Absolutely fantastic bowling performance in this in their last match of the league stage. The great bowling performance which is continues. And thanks to all the bowlers who got a great job, but now all up to that the batters of Legends Pajir to justify the efforts of their bowlers, because they are restricting the opposition for just 21, and they got a target of 22 in the stipulated 5 overs. 30 ball, 22 required, and wait and see how well the team Friends Mysore will going to depend, and wait and see how well Legends Pajir will going to get this small total of 22 to win this match. Meanwhile, change in commentary box, and the final time today, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो 22 रनों को लक्ष्य इस वक्त। सो व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय द बॉलर्स ऑफ लेजेंड पजीर। They restricted the strong batting lineup of friends Mysore for just 21 runs in the stipulated 5 overs and also picked up 8 wickets, and this is an absolutely tremendous bowling performance given by the bowlers of Legend Pajir, and now the target is 22 for them। और देखते हैं यहाँ पर Legends Pajir के बल्लेबाज इस 22 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते या नहीं। इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता अरशद गेंदबाज थे और पहली गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए। गेंद पहुंची शॉर्ट फाइट लेग पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। इमरान सामना करते हुए यह गेंद बैकफुट पर गए, कट करना चाहा। 2 बेहतर गेंदें अरशद फेंक चुका। और जहां तक सवाल है इस वक्त फ्रेंड्स मैसूर का, तो 21 रनों के अंदर लेजेंड्स पजीर के बल्लेबाजों को अगर रोक कर रखना है तो निस्संदेह उन्हें राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक घातक गेंदबाजी यहां पर करनी होगी, और उस घातक गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त हर्षद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इमरान के लिए नॉन स्ट्राइक रन पर अंसार मौजूद। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को बिना देखे रन चुराने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई और आखिरकार भुगतान उन्हें करना पड़ा। नो कोई रिस्पॉन्स नहीं नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा, और इस बीच यहां पर यह विकेट गिर चुका है अंसार का, और 0 पर पहला विकेट खो चुका है इस वक्त फ्रेंड्स लेजेंड्स पजीर। तो 0 पर पहला विकेट खो चुका। 3 बेहतर गेंदें इस वक्त हर्षद यहां पर फेंक चुके हैं, और इस बीच उनका स्थान अंसार का स्थान ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए साहिल, जो कि इस वक्त हर्षद की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और अरशद इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ पॉइंट की दिशा में। ओह मिसअंडरस्टैंडिंग, वन मोर मिसअंडरस्टैंडिंग, और इस बार नॉन स्ट्राइक रन पर विकेट गिर चुका है इमरान का। गेंद को बैकफुट पर जाने के बाद स्कोर ऑफ द विकेट खेला था पॉइंट पर, लेकिन इसे बिना देखे इमरान ने रन चुराना चाहा और कोई मौका नहीं यहां पर उन्हें क्रीज पर वापस लौटने का। तो 2 गेंदें 2 विकेट यहां पर गिर चुके हैं, और निस्संदेह यहां पर 0 पर 2 विकेट गिर जाने के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ हद तक दबाव लेजेंड्स पजीर के बल्लेबाजों पर पड़ चुका है। तो 2 विकेटें दोनों आरंभकार 0 पर वापस लौट चुके हैं रनआउट के रूप में मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत, और अब नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए बल्लेबाज रमेश, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद। सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज साहिल, और इस बीच अरशद तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद अंदर की ओर आती हुई शॉर्ट थर्ड पर इस बार रन पूरा कर चुके हैं, और यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर से अरशद जो गेंदबाज थे उन्होंने कहा कि आप यहां पर आपने थ्रो क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पर रनआउट का मौका जरूर था नॉन स्ट्राइक रेट पर, और इस बीच शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर ने थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा। तो 1 रन मिल चुका है, और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है इस वक्त पजीर के लिए। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद इस वक्त जा चुकी है फाइन लेग की दिशा में, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर गेंद को रोकने में सफल। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इस सब पहले की थ्रो पहुंचा बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। लेग बाय का इशारा, पैर से लगकर पैर से टकराने के बाद गेंद निकली थी इस वक्त, और 3 रन बन चुके हैं, और एक बेहतर ओवर अरशद का यहां पर समाप्त हो चुका है। 3 रन उन्होंने प्रदान किए और 2 विकेट गिरे रनआउट के रूप में, और पहले ओवर के मुकम्मिल यानी समाप्ति के बाद 22 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 5 ओवर में पहले ओवर की समाप्ति के बाद मिक्स स्टार्ट जिस अंग्रेजी में कहते हैं मिश्रण भरी शुरुआत यहां पर कर चुका है लेजेंड्स पजीर। 3 रन जोड़ चुका 2 विकेट के नुकसान पर। 3 रन स्कोर्ड बाय लेजेंड्स पजीर फॉर लूजिंग 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। स्कोर बुक पर 1-2-3 का सीक्वल इस वक्त दिखाई देता हुआ। 1 ओवर के बाद 3 रन बच चुके हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं, और जहां तक का सवाल है दूसरे ओवर का, तो हमसे दूर वाले छोर से रोड एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज रफीक का, और सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाम के लगभग 6 यहां पर बचते हुए, और 5:55 यहां पर बच चुके हैं। धीरे धीरे मैदान पर रोशनी कम होते हुए अंधेरा सा छाता हुआ, और इस बीच गेंदबाज रफीक इस बार रिवर्स शॉट, गेंद टॉप एज पहुंची इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर।
एक रन का इजाफा हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए और इस बीच मिसफील्ड लेकिन बल्लेबाज को दूसरा रन यहाँ पर नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब यहाँ पर पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। 17 रन और चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज रफीक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, हवा में रनआउट का खतरा लेकिन इन दोनों मौकों में बल्लेबाज यहां पर बचते हुए 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। तो क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज शाहिल और रमेश पारी की भागदौड़ को यहां पर संभाले हुए अपनी टीम को सही मंजिल की ओर बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हुए ड्राइव कर दिया इस वक्त पूरी तरह स्ट्रोक पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए वरिष्य लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 7 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर दिस टाइम गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस, गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहता ऑफसाइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज रफीक इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में गेंद इस वक्त पहुंची लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर। रन्स आर हार्ड टू कम बाय इस अंतिम मैच में इस वक्त रनों के लिए संघर्ष करते हुए यहाँ पर दोनों टीमों के बल्लेबाज पहले संघर्ष किया था यहाँ पर फ्रेंड्स मैसूर के बल्लेबाज, अब संघर्ष जारी है यहाँ पर रनों के लिए लेजेंड्स पजीर के बल्लेबाजों द्वारा। हवा बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान से। अले हिंदिन पंद्यದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ತಂಡದ ನವಾಜ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ತಂಡದ ನವಾಜ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ತಂಡದ ನವಾಜ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। So 2 overs completed and 8 runs on the board, 14 needed, 3 overs remaining, that means 18 balls left, 14 runs required। सेंसिबल बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत और आरिस गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद चेप किया खूबसूरती के साथ लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और यहां पर गेंद को जब तक फील्ड करने के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को वो फील्ड करे और थ्रो करे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। गेंद इस वक्त डीप बैक थर्ड मैन फील्डर के आगे टिप्पा खाते हुए और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त। ये भागते हुए के फील्डर जो कवर पॉइंट पर है थोड़ी से पीछे तैनात और तेजी के साथ 1 रन चुरा चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर एरिस एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया इस बार कवर पॉइंट पर मिसफील्ड, मिसअंडरस्टैंडिंग और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। स्ट्रोक से खेलते सीधे दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक रन पर जो बल्लेबाज थे वहीं पर खड़े रहे, कोई रिस्पांस नहीं उनके द्वारा और यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत यह विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 3 गिर चुका है, तीसरा विकेट रनआउट के रूप में गिर चुका है और आउट होने वाले बल्लेबाज इस वक्त शाहिल और 10 रनों पर तीसरा विकेट यहां पर खो चुका है लेजेंड्स पजीर। तो अब कुछ हद तक धूप मैदान पर प्रकट हो चुकी है। सूरज जब मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन इस वक्त करता हुआ लगभग समंदर की ओर अपना सफर इस वक्त तय कर चुका है और मैदान पर रोशनी काफी हद तक इस वक्त कम हो चुकी है।
ನಾಜೀಮ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಜೀಮ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. और न्यू बैट्समैन शमीर is now comes out to the middle, lefty batsman, off stump to Bahar, wide, single run added, and with that single run the scoreboard moving up to 11 now for the loss of 3 wickets. अगली गेंद again the drive किया इस वक्त long on के दिशा में, clean pick up, not more than a single, 12 for the loss of 3 wicket, 10 required, and now in overall calculation it's 14 balls remaining in their innings. और आरिस इस वक्त गेंदबाजी करेंगे रमेश के लिए. मैदान पर रोशनी काफी हद तक इस वक्त कम हो चुकी है, लगभग अंधेरा सा छाता हुआ, और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को इस वक्त पुल कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए. रमेश के बल्ले से यह छक्का लग चुका है और यह छक्का समीकरण को बिल्कुल आसान कर चुका है यहाँ पर लेजेंड्स पजीर के लिए. तो अब 13 गेंदें बाकी और रन से चाहिए सिर्फ 4. 4 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 13 डिलीवरीज. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त रमेश के बल्ले से लगता हुआ. अगली गेंद, ये गेंद सेंसिबल, इस बार शॉर्ट थर्ड बैट पर फील्डर के हाथों में गेंद, लेकिन 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं. रमेश कीप्स द स्ट्राइक. रमेश स्ट्राइक को खुद अपने पास रख चुके हैं. 3 ओवर के समाप्ति के बाद एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ लेजेंड्स पजीर इस वक्त जोड़ चुका है. 19 for the loss of 3 wickets after completion of 3 overs. 3 required in remaining 2 overs. 11 runs came from the last over, and a good over in Legends Pajji's point of view came to an end. So 4th over starts in their innings. चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ. सद्दाम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और रमेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल. 1 रन निशाना, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर. 20 now for the loss of 3 wickets. Just 2 required in remaining 11 deliveries. So 2 runs required in 11 balls. इस बार चिप किया और गेंद पहुंचे लॉन्ग ऑन पर. अजीब और गरीब ढंग से इस बार चिप किया था. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा और इसी के साथ लेजेंड्स पजीर आर won the match by 7 wickets. और they won the match by 7 wickets and back the complete points. I request the captains of Friends Mysore as well as Legends Pajir, please report to the stage immediately to contact the organizers. ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತೋರಿ 12 ಓಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಹಸೈನಾರ್ ಮೋಟು ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ರಮೇಶ್. ಸೊ ಆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೇ ನಂಬರ್ 2 of this prestigious cricket tournament, Sultan Premier League 2024 will back on tomorrow morning exactly at 8:30 a.m. with in the first match. Till then we are saying you goodbye right from here. Myself Gopi in Hindi and my dearest friend Mr. Satish Salian in English. We will see you tomorrow morning 8:30. Till then we are saying you goodbye right from our commentator box. Thank you. धन्यवाद. ಉಮೇಶ್ ಕೊರ್ರೆ ಮೊಂಟುಗೋಲಿ ಅವು ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊಬ್ಬೈತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊಬ್ಬೈಗೆ ಎಂಡ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್
ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ತಂಡದ ಇಮ್ರಾನ್ ರಾವ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. And now it's going to be a super over, in fact, between Legend Fajir versus Sultan Montugoli. The first super over of the competition is now going to play between Legends Fajir versus Sultan Montugoli. ಅಲ್ಲೇ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಫಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೋಂಟುಗೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುವುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು. So Sultan Montugoli, after won the toss, they elected to field first against Legends Fajir in the super over match. And I request both teams players to please start the match immediately, because it's now getting darkness in this ground. अंधेरा इस वक्त मैदान पर छाता हुआ, तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को तुरंत यहां पर शुरू करें. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So super over match is now going to start and Sultan Montugoli, after won the toss, they elected to field first in the super over match. And openers Imran and Ramesh are the crease for Legends Fajir. और देखते हैं इस सुपर ओवर मैच में लेजेंड्स फजीर के बल्लेबाज और यहाँ पर सुपर ओवर में कितने रन बना पाते हैं. So super over match is now going to start, and Imran and Ramesh the openers. Meantime, the bowler is who now starts the fresh proceedings from that side, and that means from the road end. नौजल और सुपर ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज नौजल तैयार, जबकि स्ट्राइकर इस वक्त इमरान. और पहली गेंद, फर्स्ट बॉल ऑफ द सुपर ओवर मैच कम्स.
So it's going to be very interesting. In fact, just we have to wait and see who will be qualify for the next round of this competition in this super over. If the match ended in a tie in super over, and it's going to be winners will be decided by toss. First ball of super over comes. नौजल पहली गेंद लेकर तैयार है। इमरान सामना करते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप किया। इस वक्त इमरान ने खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, फील्डर वहां पर मौजूद है और जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और इस एक रन के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है लेजेंड्स फजीर के लिए। एक रन बिना किसी नुकसान के और इस बीच नौजल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव किया, कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन फील्डर ने गेंद को रोका अपने पैर के जरिए, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। तो दो गेंदे दो रन यहां पर बन चुके। 2 balls and 2 runs स्कोर्ड बाय द ओपनर्स ऑफ लेजेंड्स फजीर। और तीसरी गेंद लेकर इस वक्त नौजल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इमरान बैक ऑन स्ट्राइक। जस्ट वांटेड टू प्ले रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड। बेहतर गेंदबाजी बिल्कुल जमीन के सहारे अलोंग द ग्राउंड गेंद को उन्होंने फेंकी थी और आखिरकार रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके डॉट गेंद। अब 2 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 3 balls रिमेनिंग इन सुपर ओवर। और नौजल फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार इमरान के लिए। ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट इनसाइड इट आउट टू द स्टंप्स एंड द फर्स्ट विकेट फॉलन फॉर लेजेंड्स फजीर। बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी, गेंद को उछालना चाहा था, लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद सीधे लेग स्टंप पर जाकर गेंद टकराई। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को स्टंप्सों पर खींच लिया था। जस्ट ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स, just dragged down to the stumps और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। इमरान आउट for 1 and the first wicket lost in the total of 2 runs for legend Fajir. Still 2 balls left in super over. 2 गेंदे अभी भी बाकी और पहले 4 गेंदों में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है नौजल ने अब तक। और देखते हैं बचे हुए 2 गेंदों में उस सफलता के सिलसिले को आने वाले बचे हुए 2 गेंदों में क्या नौजल बरकरार रख पाते हैं या नहीं। तो नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल राजिक और वो इस वक्त नौजल की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और नौजल फील्डिंग में इस वक्त कुछ हद तक जमावट करते हुए और राजिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर नौजल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज राजिक के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार चूके विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, रनआउट का मौका इस बीच और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। बेहतरीन गेंदबाजी डॉट गेंद लगभग लेग स्टंप पर गेंद आई थी, गेंद को खेलने में चूके विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची। हालांकि पहले प्रयत्न में गेंद विकेट कीपर के हाथों से जरूर छूटी लेकिन दूसरे प्रयत्न में गेंद को तुरंत वो फील्ड कर बहुत ही जल्द वो फील्ड करते हुए लौटाते हुए गेंदबाज नौजल के हाथों में और गेंदबाज ने थ्रो रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दिया और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है। Two for the loss of 2 wicket and just a last ball now remaining in their innings. जकरिया फिलहाल नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। रमेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त नौजल दाहिने हाथ ओवर द विकेट ओवर की अंतिम गेंद मिसेस वाइड 1 run added and a run out happened. So 3 for the loss of 3 wickets now and now still a last ball remaining. So still 1 ball left और गेंदबाज इस वक्त तैयार। नए बल्लेबाज फिलहाल नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। सामना करते हुए इस वक्त
रमेश और इस बीच नौजल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, अंतिम गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को ड्राइव किया, मिसफील्ड। इस वक्त गेंद जाते हुए इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, मौका जरूर था कैच आउट का, लेकिन मौका गवाते हैं। तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन नहीं मिलेगा, रन आउट होता हुआ। सो द इनिंग्स इज अप एंड दे आर स्टिपुलेटेड, देयर 1 over has been completed and they managed to score 5 runs on the board for losing 4 wickets, and now the target for Sultan Montugoli is 6. They have to score 6 runs out of their 6 stipulated deliveries. And let's see can they reach the target or not. 6 गेंदे 6 रन। देखते हैं सुल्तान मोंटुगोली के बल्लेबाज इन 6 रनों को उनके 1 ओवर में यानी 6 गेंदों में बना पाते हैं नहीं, तो क्या होगा उनकी पारी में। ये इस ओवर के द्वितीय, इस मैच के द्वितीय अर्ध में अब आपको जानकारी देंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. We are into the innings of Sultan Montugoli. The host team will need to get 6 runs if they wanted to qualify for the playoff round of this prestigious Sultan Premier League 2023. The 6 will going to be a target. 2024, let me correction, and Sultan Premier League 2024, and which is proudly organized by Sultan Friends Montugoli in association with the Modifor Cricket Association MCA, and 2 opening batters out there in the middle, Ali and Nauzal, and Ali are the 2 opening batters. Nauzal is on strike, and opening bowler for team Legends, Shahil. He did a great job in the previous match. Shahil bowled a great over. Now we need to continue that over in this particular match if wanted to win the match. But just 6 runs required for the victory. Each and every ball required a single, and more than that it's going to be a bonus for Sultan Montugoli. And wait and see how well these 2 teams will go into fight for the victory. Here is the first ball. Sahil, right arm over the wicket to the right hand batsman Nauzal. Nauzal went for the reverse sweep, plays it in the gap, misdirection, misjudgment by the fielder Shamir. He thought it ball going to his left and ball went towards his right. So a couple of runs. So good start here from Nauzal. Got a 2 runs. Now 4 required from 5 balls. So 4 runs required from 2 balls. 4 runs required from 5 balls. As a bowler will going to continue Sahil from the committee box, and Sahil required a dotted ball, but sensible batting which is required for the team Sultan Montugoli to want it to win this match. Again the bowler starts his run up, right arm from the wicket. This time they wanted to go for the big shot, they're going for the big single. They completed that single in the form of leg bye. Ball just deflected from the leg, 3 on the board. That means 3 required in 4 deliveries. That brings Ali into strike now. 3 required from 4. Sahil desperately wanted to get 1 or 2 dotted deliveries here if they wanted to back in the game. But sensible batting which is required for Sultan Montugoli to win this match. 3 to get for 4. Wanted to stop the ball, and it's going to be a wide and the bonus run. And Skobar moves on to 4 now. Now 2 required in 4 deliveries. Absolutely, it's a bonus run. Under pressure, Sahil couldn't manage to control his line. 2 required from 4. Stop that one. That's it. Winning runs. Ball running down to deep square leg boundary for 4 runs. So Ali finished the match in a style for Sultan Montugoli. They won the match against Legends
Pajir, and through to the next round of this prestigious Sultan Premier League 2024, and host team Sultan Montugoli are into the playoff round of this prestigious cricket tournament. And that's it for the day number 2. And thank you very much each and everyone for your cooperation for the success of day number 2 of this prestigious cricket tournament. And we are saying goodbye from our commentary box. We'll see you tomorrow. And myself, Satesh Salyan in English, Mr. Gopi in Hindi. And of course, the umpires did a great job for the success of day number 2. Thank you very much. Scorer did a great job. And thank you to Mangrove Media and each and everyone, those who are supported for the success of day number 2. We'll see you tomorrow, the final day of this cricket tournament. Until then, we are saying goodbye. Thank you.